मरगला में हर सुबह एक नया नज़ारा पेश करती है और इसी आलम में सेंट्रल पंजाब बनाम सिंध ये बराह रास्त आ रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2022 का मुकाबला। आज दूसरा दिन है इस 4 रोज़ा मैच का और पहले दिन मरगला का सूरज जो है वो सेंट्रल पंजाब पर पूरी तरह से चमका। अब्दुल्ला शफीक की धमक देखने को मिली जिन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। वो नाकाबिल शिकस्त वापस लौटे थे 189 रन पर और उनके सामने विकेटें गिरती रहीं। एक मौके पर 238 पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक एंड को इंटैक्ट रखा और वो मुसलसल रन्स बनाते चले गए। इब्तिदा में उन्होंने बैकफुट पर स्ट्रोक खेलने शुरू किए। ख़ास तौर पर उनके जो बैकफुट पंच थे वो इंतहाई काबिल दीद थे। ड्राइव करने की खातिर खा बिल्कुल कोशिश नहीं की, गेंद के बाउंस से पाला पड़ा। फिर जब ख़राब गेंदें मिली तो उसका फ़ायदा सामने भी उठाने में कामयाब हुए। स्पिनर पर पहले कदमों का इस्तेमाल किया, आखिर में स्लॉग स्वीप करते हुए भी नज़र आए और टेक्स्ट बुक का हर शॉट अब्दुल्ला की जानिब से देखने को मिला। जहाँ तक सिंध के बॉलर्स की कारकर्दगी रही, एक एक विकेट मीर हमजा और मोहम्मद उमर को मिली और जो बाकी मानदा बॉलर्स थे वो खासे महंगे रहे। आसिफ महमूद और जाहिद महमूद। आसिफ का ये पहला फर्स्ट क्लास मैच था, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने 3 विकेटें ज़रूर हासिल की और पहले दिन विकेट खासी सपोर्टिंग थी और आज जो पिच है इसका क्या हाल अहवाल है ये हम जानते हैं अपने साथी शाह फैसल से। Looking at the scoreboard, you may think that the batters had a field day yesterday. But if you take Abdullah Shafiq's innings out of the equation, the bowlers really dominated the day. The wicket offered play, but not many balls bowled in the right areas. Looking ahead to today, what's in store today? Let's have a closer look. If you just look, there's some indentations here, which means that the bowlers bowled plenty of short of length deliveries, which weren't going to threaten the batters. Further fuller would have troubled the batters. Today, once again, it's dry. With the second new ball, there is a chance for Sindh to make a comeback, provided they find the right areas. शाह फैसल ने पिच का हाल पेश किया। सिंध की टीम एक नई सुबह, एक नए आज़म के साथ मैदान में उतर रही है। सऊद शकील की कप्तानी में कल बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल और लंबा दिन था। इसे खासे पापड़ उनको बेलना पड़े और फील्डर्स ने भी अपने बॉलर्स के साथ उस तरह से नहीं निभाया। ये नॉट आउट बैट्समैन हैं अब्दुल्ला शफीक और आमिर यामीन, जिनके दरमियान 120 रन की पार्टनरशिप अटूट है। अब्दुल्ला शफीक से 189 और आमिर यामीन कल शाम के स्कोर 61 नॉट आउट पर अपनी इनिंग्स फिर से शुरू कर रहे हैं और मेरे साथ ये आज फिर से अपनी इनिंग्स शुरू कर रहे हैं अली यूनुस। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बहुत ही शानदार इनिंग कल हमें देखने को मिली अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। एक प्रॉपर जिसे रेड बॉल इनिंग कहते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा स्किल शामिल था। ऑल्दो 1-2 चांसेस ज़रूर मिले, लेकिन उनके बैटिंग का जवाब नहीं। आमिर यामीन ने बहुत शानदार इनिंग खेली, बहुत शानदार साथ निभाया आखिरी सेशन में। स्ट्राइक रेट 92 की रही, बहुत ही अटैकिंग मोड में कल आए थे, क्योंकि पॉइंट्स भी थोड़ा देखना था कि पॉइंट्स भी हासिल किए। उनके साथ अब्दुल्ला शफीक ने तो कमाल की बारी खेली है, 189 पर मौजूद है। स्ट्राइक रेट भी बहुत कमाल कर रहा है, स्पेशली आखिरी सेशन की अगर हम बात करें तो उसमें तो जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया वो बहुत ही लाजवाब था। और हमें देखने को मिला कि कल थोड़ी लेंथ डिसअपॉइंटिंग रही सिंध के फास्ट बॉलर्स की जानिब से। स्पेशली पहले सेशन की अगर बात करें, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था मोहम्मद उमर ने। इकोनॉमी तो अच्छी रही, लेकिन विकेट ज़्यादा हासिल नहीं कर सके, क्योंकि लेंथ जो थी वो अभी शायद वाइड बॉल लेंथ पे ही ज़्यादा बॉल करते रहे ये सिंध के बॉलर्स। जी हाँ, तो सीन सेट है आज दूसरे दिन के लिए। धूप तेज़ हो रही है और इब्तिदा में विकेट हासिल करना बहुत ज़रूरी होगा। अभी ये दूसरी नई गेंद, सिर्फ 10 ओवर इसकी उम्र है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये अच्छी सोच, गेंद को आगे गिराया, रन ज़रूर अब्दुल्ला ने हासिल कर लिया। लेकिन ये मुझे कहने दीजिएगा अली कि कल जो दोनों नई गेंदें थीं
वो सऊद शकील के बॉलर्स ने मौका ज़ाया कर दिया विकेटें लेने का। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लेंथ का बहुत मसला कल हमें देखने को मिला है, उस तरीके से एडजस्ट कर नहीं पाए। और हम देखते हैं कि इस पिच के ऊपर अगर आप ड्राइव वाले लेंथ पे बॉल करते हैं तो उस पर मुश्किलात हो रही हैं बैटर्स को, लेकिन अगर आप खिंचा हुआ बॉल करेंगे, लेंथ बॉलिंग करेंगे, वो आराम से निगोशिएट हो रही है। लेकिन आज ये ध्यान रखना होगा कि ओवर कॉम्पनसेट नहीं करें, तो ज़्यादा आगे बॉल भी नहीं करना है। हाँ, शानदार लेंथ और अच्छी लाइन भी इख्तियार की। ये चौथी पांचवी जो स्टंप है यहाँ पर गेंद करना ज़रूरी है, और जो लेंथ है ये गुड लेंथ पर आपका जो जो 6 मीटर का एज है ये उस तरफ को आपको हिट करना है। ये परफेक्ट लेंथ है। ये हम कल से देख रहे हैं कि इस लेंथ पे जिस भी बॉलर ने बॉलिंग की उसको कामयाबी हासिल हुई है, और जल्दी सीखना होगा क्योंकि रन्स बहुत करवा दिए कल के दिन में, स्पेशली आखिरी सेशन में तो बहुत ही तेजी से रन्स हुए, कैचेस भी थोड़े ड्रॉप किए, तो आज इनको अच्छा कमबैक करना होगा सिंध को। और ये गेंद पीछे गिराई, इसलिए मुंह की खाना पड़ी, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बैकफुट पर जाकर इसको कट से ज्यादा डैब किया आमिर ने। या फिर एक बार हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है लेंथ पे। पहले 2 बॉल अच्छे लेंथ पे किए, लेकिन फिर थोड़ा शॉर्ट साइड पे चले गए और इसे आराम से पंच ही किया, और या डैब जिसे आप कह सकते हैं। और अब आपकी फील्ड ऊपर हो, रेड बॉल क्रिकेट हो, तो ये हमेशा ही 4 रन होंगे। बड़ी अच्छी हालत में है इस वक्त सेंट्रल पंजाब की टीम। इस पिच को देखते हुए खासी सपोर्टिंग है, इसमें फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है, बैट्समैन जो हैं वो अपने स्ट्रोक दिखा सकते हैं। और शानदार ऑफ ड्राइव, ये दिलकश नज़ारा देखने को मिला। आमिर ने बल्ले के पूरे फेस से इसे सऊद शकील के बाएं जानिब से खेल दिया, शानदार चौके के लिए। ये ऐसा लग रहा है आमिर जामीन तो कल से ही क्रीज पे मौजूद हैं, ये घर कभी गए नहीं। जिस तरीके से आगाज किया है, ओवर कॉम्पनसेट करते हुए एक बार फिर आपको कंसिस्टेंट हो रहना होगा लेंथ में। इस बार 2 फुल, और यहाँ पे 2 ही बॉलें रन के लिए गई हैं, जो 2 फुल होते या थोड़ी शॉर्टर साइड पे हुई है। बीच का एरिया ढूंढना होगा कोई। 2 स्लिप्स और 1 गली के साथ आ रहे हैं उमर जी। और ये जो फील्डर हैं या विकेट कीपर, वो उसी वक्त प्ले में आएगा जब ये इन बिटवीन लेंथ को अपनाएंगे। इस ओवर में इन 3 गेंदें ज़रूर गुड लेंथ पर गिराई हैं, ये हम कह सकते हैं कि फुल ऑफ गुड लेंथ। और जो बाकी की गेंदें थी, एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी और एक बिल्कुल बल्ले के पास थी। या कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग ये दोनों बैटर्स कर रहे हैं, ये अपने 5वें पॉइंट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि 100 ओवर में अगर ये 400 रन करते हैं तो 5 बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे। पहला ओवर आज के दिन का महंगा रहा, जिसमें 9 रन दे गए मोहम्मद उमर, 367। मीर हमजा, जिन्होंने कल सिंध के तमाम बॉलर्स में से अच्छी बॉलिंग की, बदकिस्मत भी रहे, बार बार अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने बीट किया। और अगर किस्मत मेहरबान होती तो शायद जो LBW की अपील थी वो भी, वो फैसला इनके हक में आ सकता था। ये रिवायती तर्ज की फील्ड है, जो सुबह के सेशन में यहाँ हम देखते हैं 2 फील्डर स्लिप्स में गली है। लेकिन ये पिच है, इसमें आज भी तरावत है, हल्की हल्की घास है पिच पर, और अच्छी रफ्तार है इस पिंडी की पिच में। जी हाँ, ब्राउन घास जरूर मौजूद है, लेकिन इससे ज़्यादा बॉलर्स को मदद हासिल नहीं हुई। कल हमने देखा कि कुछ बॉल ऐसे थे जो फंसते हुए नजर आए, जो आगे पिच के वो बॉल थे। तो इसलिए इसके घास पे मत जाइए, धोखा मत खाइए। ये अंदर से थोड़ा सॉफ्ट भी है, उस तरीके से हार्ड पिच भी नहीं है, इसलिए अगर आप आगे बॉल पिच करेंगे तो ड्राइव उस तरीके से लगेगा नहीं।
इसलिए अपनी लेंथ एडजस्ट करना इस पिच पे बहुत जरूरी है। अब्दुल्ला शफीक की आज पहली नज़र अपनी डबल सेंचुरी पर होगी। सेकंड 11 के मैचेस में इससे पहले ये एक डबल सेंचुरी बना चुके हैं। इन्होंने एलसीसी ग्राउंड पर सेंट्रल पंजाब के लिए वो डबल सेंचुरी बनाई थी, जिसके बाद सेलेक्टर्स ने इन्हें पहली प्लेइंग 11 में बुलाया कराची, और फिर उसके बाद इन्होंने वापस मुड़कर देखा नहीं है। और ये जल्दी से एक रन और हासिल कर लिया। ये मीर हमजा का मुकाबला अब्दुल्ला से बड़ा दिलचस्प रहा है। इन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर ये वाहिद बॉलर थे जो दिन भर इनको परेशान करते रहे, नई और पुरानी गेंद दोनों पर, लेकिन किस्मत मेहरबान नहीं थी, किनारा नहीं मिला। जी हम कंसिस्टेंट रहे हैं मीर हमजा कल, लेकिन अनलकी जैसे आपने कहा एक दो अपील भी इनके फेवर में जा सकती थी। एक एलबीडब्ल्यू की अपील थी। लेकिन दाद तो देनी होगी अब्दुल्ला शफी की, जिस डिटर्मिनेशन से, जिस स्किल सेट से उन्होंने बैटिंग की है कल के दिन। क्योंकि हम देख रहे थे उनके 7 बैटर्स आउट होते चले जा रहे थे, लेकिन वो तो किसी अलग ही लेवल पे बैटिंग कर रहे थे। बहुत करीब खेले, अपनी बॉडी के करीब खेले, कोई गलत शॉट हमें देखने को नहीं मिला है। ऐसे लग रहा था जैसे वो रन्स के लिए हंगरी हैं, और यही एक ओपनिंग बैटर के लिए ज़रूरी होता है कि उसको रन्स बनाने आने चाहिए, रन्स की भूख होनी चाहिए। और जैसे उनका T20 का इतना अच्छा नहीं गया था नेशनल T20, तो नेचुरली एक इतने अच्छे प्लेयर, इतने टैलेंटेड प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कमबैक करना, और पहले ही मैच में बड़ी सेंचुरी कर लेना, ये बहुत खुशाइन बात है। ये भी खासा है कि आपने नई गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ना है। आमिर यामीन जो है, ये माजी में हमने इनको देखा है वन डाउन आते हुए भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसे ये बैटिंग का जो हाव भाव है, ये जानते हैं कि नई गेंद से अगर आपका पाला पड़ता है तो क्या तरीका होना चाहिए। कल शाम को तो ये पिल पड़े थे मुखालिफ बॉलर्स पर। स्पिनर्स की भी इन्होंने बहुत पिटाई की, जायद महमूद की दोनों ने, खास तौर पर शाम के सेशन में। ये अच्छा ओवर मीर हमजा का, सिर्फ एक रन उन्होंने दिया, 368 पर 6। मोहम्मद साद ये दूसरी स्लिप छोड़कर अब एक्स्ट्रा कवर पर आ गए। और एक और जो सोच की तब्दीली है कि एक फील्डर को ये पॉइंट की तरफ लाया गया, बैट्समैन से तकरीबन 15 गज के फासले पर। ये अच्छी गेंद थी, लेकिन ऊपरी हिस्से पर लगी पैड के। इस पिच में बाउंस है, और जानते हैं इमरान जावेद, ये डेफिनेटली विकेट के ऊपर से जा रहा था बॉल, जहां पे उनको देखिए लेंथ अच्छी थी, सीम भी हुआ बॉल, थोड़ा लेग साइड पे भी जा रहा था, तो अच्छा डिसीजन इमरान जावेद की जानिब से। ये अच्छी पोजीशन हो सकती है जो शॉर्ट पॉइंट इन्होंने रखा है, क्योंकि जब भी आप बैटर ड्राइव के लिए जाएगा तो हमने देखा है कि अपिश लगा है उस एरिया में, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी लेंथ राइट होनी चाहिए। अगर आप पीछे बॉल करते रहेंगे, फील्डर जो बिल्कुल ही सामने स्क्वायर पे खड़ा है, यहाँ पे जो भी आप ड्राइव वाला बॉल होगा, अपिश होगा, वो इनके हाथ में जाएगा। जी हाँ, यहाँ क्योंकि इस पिच में बाउंस है, तो जब आप ड्राइव करते हैं तो गेंद के ज़्यादा स्क्वायर जाने का इम्कान होता है, तो इसलिए ये अच्छा मंसूबा बनाया है सऊद शकील ने अब्दुल्ला शफीक के खिलाफ। और यहाँ पर इस फील्डर को हाई अलर्ट रहना होगा। जी हाँ, क्योंकि बॉल बहुत तेजी से ट्रैवल करेगा। यूजुअली जब भी यहाँ बॉल आएगा तो मिडल ऑफ द बैट से आता है,
तो काफ़ी आपको बेस्ट फील्डर अपना उमैर बिन यूसुफ उनका बेस्ट फील्डर है, इसीलिए उनको खड़ा किया गया इस पॉइंट पे। अब्दुल्ला शफीक जो हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि T20 की फिक्रों से फारिग होकर अब ये अपने असल काम पर आ गए हैं। रेड बॉल क्रिकेट के ये हमेशा से रस्सियां हैं, रन्स बनाने की इनको आदत है, और जब ये एक बार इनकी नज़रें जम जाती हैं तो फिर इनको पिच से उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। जी हाँ, कल तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। और सबसे शानदार जो मुझे इंप्रूवमेंट नजर आई है वो इनकी स्ट्राइक रेट है। सिर्फ 238 बॉलों पे उन्होंने 191 रन बनाए हैं। तो वो जो पॉजिटिव इंटेंट और जो पॉजिटिव क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हम देखना चाहते हैं, वो इसे हम कहेंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर बैटिंग भी की है, आपने टाइम भी स्पेंड किया है, आपने मुश्किल वक्त भी गुजारा है पिच पे, और जब आसान हालात पैदा हुए तो आपने रन्स भी किए। यही एक प्रॉपर जो रेड बॉल क्रिकेटर, एक रेड बॉल बैटर की निशानी होनी चाहिए। और कोई भी यंगस्टर अगर कोई रेड बॉल क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहता है तो इससे बेहतरीन एग्जांपल नहीं हो सकती है। और ये लाखों में एक इसलिए भी हैं कि इस दौर में आपको पुजारा जैसे या अब्दुल्ला शफीक जैसे जो खिलाड़ी हैं, ये शाज़ो नादिर ही आपको नज़र आते हैं। अच्छा, ये वो स्ट्रोक है, ये फॉल्स शॉट जिसके लिए ये फील्डर खड़े किए गए हैं। एक स्क्वायर के एक सामने हैं और दूसरे पीछे हैं। गली पोजीशन पर फवाद आलम थे, गेंद उनसे कुछ फासले पर रह गई। थोड़ा लंबा बॉल था और शायद इसीलिए, जैसे आपने कहा, इसी एग्जैक्टली गलत शॉट के लिए वो फील्डर प्लेस किया गया है। थोड़ी सी किस्मत को साथ देना होगा और बॉल उस तरफ जाएगा, क्योंकि विकेट्स मुश्किल से आई हैं। कल भी हमने देखा कि मुश्किल से विकेट्स हासिल की गई हैं, इसलिए सारे पैंतरे, सारे तजर्बे करने होंगे डिफरेंट फील्ड पोजीशनिंग से, डिफरेंट बॉलिंग चेंजेस से, ताकि बैटर को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया जाए और विकेट हासिल की जाए। क्योंकि जिस तरीके से अब्दुल्ला खेल रहे हैं, आउट होते नजर नहीं आ रहे हैं। और इस बार 4 शियाम, शानदार शॉट अब्दुल्ला शफीक का, मिड ऑफ के सर के ऊपर से 4 रन्स। थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गए थे लेंथ के मामले में, इसलिए अब्दुल्ला ने ये आगे बढ़कर वार किया। या इनएक्सपीरियंस यहाँ पे उम्र की जानिब से, और जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रेडिक्टेबल हो गए थे। वो लेंथ को पहले ही शायद जान चुके थे कि इस लेंथ पे बॉल आएगा। कदमों का शानदार इस्तेमाल किया, पॉजिटिविटी, ये सबसे शानदार बात नजर आई है। 372 पर 6। ये पॉल फ्रैंक अपने नोट्स ले रहे हैं। हुमायूं फरहद उनके हमरा मौजूद हैं। ये अच्छे कोच हैं, बड़ी अच्छी इनकी शोहरत है पॉल फ्रैंक की इंग्लिश क्रिकेट में। दूसरा रन लेना चाहते हैं और इसमें कामयाबी मिल जाएगी आमिर यामीन को। और कल जो सेंट्रल पंजाब के खेलने का जो अंदाज था, उसमें नज़र भी आया वो जो इंग्लिश टच पॉल फ्रैंक की जो मौजूदगी थी, उसका असर हमने देखा कि पहले बॉलर्स को थकाया गया और फिर जो आखिरी सेशन था उसमें जिस तरह से हमला किया सेंट्रल पंजाब की टीम ने और 5.27 के औसत से रन्स बनाए, ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ये ऐसा कम ही पहले हमने देखा है। या इसे आप प्लानिंग और स्ट्रेटजी का हिस्सा कहेंगे, जो शायद हमें पॉल फ्रैंक की जानिब से नजर आई कल, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो बोनस पॉइंट्स है उसका बहुत ख्याल रखा गया। ये शानदार बॉलिंग थी, ये लेंथ और ये लाइन, अगर यहाँ मसलसल बॉलिंग करते रहेंगे तो विकेट्स हासिल होंगी। यार ये वही टीम है, हमें नहीं भूलना चाहिए, सेंट्रल पंजाब, जिसका जो रन रेट था पहले 100 ओवर्स की जो औसत है वो सबसे कम थी इनकी। लेकिन ये हम देख सकते हैं कि ये आज 100 ओवर्स में अपना ये जो अगला पॉइंट है ये भी हासिल ये करने की पोजीशन में है। 4 पॉइंट्स इन्होंने पहले ही हासिल कर लिए हैं।
और ये शानदार डिलीवरी और पहली विकेट मिल गई सिंध को आज के दिन की। मीर हमजा उनकी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गई और सरफराज अहमद ने एक बहुत बड़ा उम्दा डाइविंग कैच लिया। ये पहली बार नहीं है, कल भी बहुत ही शानदार कैच लिया था सरफराज ने और एक बार फिर अपनी दाएं जानिब ड्राइव करते हुए कैच किया। बहुत ही शानदार लेंथ, ये कंसिस्टेंसी जो आप जिसकी हम बात कर रहे थे, एक ही लाइन और एक ही लेंथ पे बार बार बॉल आप करते रहेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और इस बार साथ भी निभाया सरफराज अहमद ने, एक शानदार कैच लेकर एक अच्छी इनिंग, 71 रन बना सके आमिर यामीन। 374 पर 7 सेंट्रल पंजाब। सरफराज अहमद ने बड़ा अच्छा ग्लव वर्क दिखाया इस पूरे मैच में ही। कल भी उन्होंने विकेटों के पीछे कैचेस लिए थे और आज भी उनके लिए ये बड़ी खुशगवार सुबह तुलू हुई है। उसामा मीर आए हैं ऐसे में खेलने के लिए। बैटिंग करना ये जानते हैं, 77 बेहतरीन स्कोर है। ये 4 कैचेस अब तक सरफराज अहमद हासिल कर चुके हैं। रन आउट भी किया था इन्होंने अली शान को। इन स्विंग करने की कोशिश की और इसे में आगे चले गए। स्ट्राइक से हटना चाहते हैं उसामा। यहाँ फिर भी एक बार फिर शानदार लेंथ, और ये जिस तरीके से आमिर यामीन आउट हुए, कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते रहेंगे तो आपको कामयाबियां मिलती रहेंगी। क्योंकि इस लेंथ पे आप डिसाइड नहीं कर पाते एज अ बैटर कि आपने आगे जाना है पीछे जाना है, तो आप डबल माइंडेड से हो जाते हैं, जिस वजह से आप अपनी विकेट गवा बैठते हैं। और इस सरफराज अहमद के लिए शानदार मैच रहा है, बहुत ही कमिटेड नजर आए हैं इस टूर में। हमने नेशनल टी20 में भी देखा, एक डिफरेंट सरफराज नजर आए हमें। मीर हमजा जो सिंध के इस वक्त स्ट्राइक बॉलर हैं और इस वक्त ये अटैक लीडर भी हैं। सुहेल खान, ताबिश खान पहले इनके साथ होता था उनका तजुर्बा, लेकिन अब नौजवान बॉलर्स की मौजूदगी में जिम्मेदारी इनके कंधों पर है और आज अच्छा फाइट बैक किया। एक और उम्दा ओवर मीर हमजा का जिसमें वो विकेट ले गए। 374 पर 7। अब्दुल्ला शफीक 195 रन पर मौजूद हैं क्रीज पर, ज़्यादा साथ नहीं हासिल हुआ उनको। 31 रन कासिम अकरम ने बनाए शानदार तरीके से, और आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी आमिर यामीन 71 रन बना सके।
दूसरे रन के लिए जल्दी करना पड़ेगी। जाहिद की थ्रो बॉलिंग एंड पर आई। शायद अगर सरफराज अहमद की तरफ थ्रो करते तो बेहतर नतीजा मिलता, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने खेलते ही ये दूसरे रन की ठान ली थी। यहाँ ये अच्छी गेम अवेयरनेस है, सॉफ्ट हैंड से खेले थे और थोड़ा लेट रियलाइज किया कि दूसरा रन अवेलेबल है, लेकिन अच्छे तरीके से स्प्रिंट किया। आइडिया ठीक था, लेकिन यहाँ शायद मोहम्मद उमर भी अगर विकेट्स के पीछे होते और थ्रो थोड़ी बेहतर होती। शानदार शॉट, अब्दुल्ला शफीक ने ये दिल का शॉट ड्राइव किया और उन्होंने अपने 200 रन मुकम्मल कर लिए। ऐसा पहली बार हुआ है अब्दुल्ला के करियर में जब उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल किया और पिंडी की एक चैलेंजिंग पिच पर बड़ी आला कारकर्दगी दिखाई इस नौजवान ने। ये इनिंग्स मुद्दतों याद रहेगी देखने वालों को और खुद खेलने वाले को भी। जी हाँ, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये टेक्स्ट बुक बैटिंग की है अब्दुल्ला शफीक ने इस इनिंग में, 200 रन बनाए और एक यंगस्टर के लिए इससे बेहतरीन एग्जांपल नहीं हो सकती है कि रेड बॉल क्रिकेट में कैसी बैटिंग की जाए। आई थिंक उन्होंने सबको दिखाया है कि वो क्यों पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन रेड बॉल ओपनर हैं। बहुत ही शानदार तरीके से बैटिंग की, अपना बारी का इंतज़ार किया, बुरे बॉल का इंतज़ार किया, अच्छे बॉलों को निगोशिएट किया। कल पहला सेशन बहुत मुश्किल था जिसको उन्होंने निगोशिएट किया और फिर जब आखिरी सेशन में ईजी हुए तो रन्स भी हासिल किए। तो ये बहुत ही कमाल की इनिंग है ये। काबिल तारीफ अब्दुल्ला शफीक, सिर्फ 22 साल इनकी उम्र है और ऐसे में ना सिर्फ ये कि टेस्ट क्रिकेट में ये पाकिस्तान टीम का बड़ा मजबूत सुतून बन चुके हैं, बल्कि लंबी लंबी इनिंग्स खेलना जो है वो इस वक्त इनका मकसद नज़र आता है। इतनी कम उम्री में हम बैट्समैन को मैच्योर होते हुए कम देखते हैं और ये हिकमत अमली जो है शायद बॉलिंग के मुतालिक ये सोचा जा रहा है कि बॉलर्स मोहम्मद अली जो हैं इन पर बड़ा इन्हिसार होगा, इनको लंबे स्पेल करना पड़ेंगे। यहाँ अब सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स को सिंध के बॉलर से सीखना होगा कि क्या नहीं करना है, कौन सी लेंथ पे बॉलिंग नहीं करनी है। तो एटलीस्ट उनके सामने एक पूरी इनिंग का एक्सपीरियंस है कि आपको किन लेंथ पे बॉलिंग नहीं करनी है। तो शायद यही डिस्कशन हो रहा है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपने कंसिस्टेंटली बॉलिंग करनी है, कौन सी ड्राइव मील लेंथ है जहाँ पे आपने ज़्यादा बॉलिंग करनी है और आपको कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि गलतियाँ काफ़ी की हैं कल सिंध ने अपनी लेंथ को लेकर, उनको नहीं करना है सेंट्रल पंजाब को। सिंध की टीम जो है वो एक और पॉइंट के मुतालिक भी सोच रही होगी। 100 ओवर से पहले एक विकेट अगर उनको और मिलती है, 8वीं विकेट, तो उनके पॉइंट्स 3 हो जाएंगे। और शायद ये भी हो सकता है तारिक भाई कि आप यहाँ से हमें डिक्लेरेशन का भी शायद देखने को नज़र आ जाए सेंट्रल पंजाब की जानिब से, क्योंकि पॉइंट सिस्टम इतना करीब है, इतना आपको एक एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो शायद हम ये सारे दाव पेच देखने को नज़र आए हमें इसी मैच में, क्योंकि ये बड़ा मैच है, ये सेंट्रल और सिंध का मैच है, ये हमेशा ही बड़ा मैच रहा है। अच्छी गेंद थी, जैसे सोचा था ऑन द अप खेलने से मुतालिक, लेकिन जगह बिल्कुल नहीं थी उसामा मीर के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला अब्दुल्ला शफीक ने, लेकिन अब दोनों एंड से बेहतर बॉलिंग हो रही है सिंध के लिए। 380 पर 7। मीर हमजा कंटिन्यू करेंगे पवेलियन एंड से। अब तक 21 ओवर्स में 2 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। खुला मैदान मिल गया अब्दुल्ला शफीक को।
एक और बड़ा उम्दा शॉट था, 2 रन, और तीसरा भी आसानी के साथ हासिल करेंगे अब्दुल्ला। तो अभी आप जो पॉइंट्स की बात कर रहे थे कि यहाँ सिंध की टीम जो है वो 1 विकेट और हासिल करके अपना तीसरा पॉइंट हासिल कर सकती है। सेंट्रल पंजाब की टीम को एक और बैटिंग पॉइंट मिल सकता है 400 रन 100 ओवर से पहले या 100 ओवर तक मुकम्मल करने पर। तो हो सकता है कि पॉल फ्रैंक जो हैं इसके बारे में भी सोच रहे हूँ कि अगर 1 विकेट और गिरती है तो क्या हमें उस पॉइंट से बचना चाहिए, इनिंग्स को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, या फिर एक ही इनिंग्स खेलने की कोशिश की जाए। और उसामा की इनिंग्स जो है ये ख़त्म हो गई, सऊद के हाथों। ऑन द ऑफ खेलना चाहते थे, इससे पिछले ओवर में भी उन्होंने यही कोशिश की, इस बार कनेक्ट किया लेकिन सीधा हाथों में। जहाँ पॉइंट लेने से रोक तो नहीं सके सिंध को, क्योंकि 8 विकेट्स सिंध ने हासिल कर लिए हैं 100 ओवर्स के अंदर अंदर। तो तीसरा बोनस पॉइंट सिंध ने हासिल कर लिया, और शायद उसी बोनस पॉइंट्स के चक्कर में अब तेज रन्स बनाने थे उसामा मीर ने, ऑन दी अप खेलने चले गए। ये पिच इस तरह के शॉट्स के लिए ज़्यादा करामद नहीं है, आपको वेट करना पड़ता है, लेट खेलना पड़ता है इस पिच पे, और आसान सा कैच सऊद शकील के लिए। तो सिंध ने हासिल किया 1 पॉइंट और 1 विकेट। उसामा मीर बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, 383 पर 8। वकास मकसूद आ पहुंचे हैं खेलने के लिए, जिनसे आज बॉलिंग में सेंट्रल पंजाब को तवक्कुआत होंगी। लेकिन उससे पहले जो अंदाज लगता है सेंट्रल पंजाब का वो यही है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुकने का नहीं सोच रहे, वो रन्स बनाने का सोच रहे हैं। 81 मैचेस हैं, खासा लंबा करियर है वकास मकसूद का, 1161 रन्स, एक ही निस सेंचुरी है। जहाँ बॉलिंग की वजह से इस टीम में शामिल है, लेकिन बैटिंग कर सकते हैं, ये एक एंड पे संभाल सकते हैं, भले रन्स करें ना करें लेकिन संभाल ज़रूर सकते हैं। आपको 2 साल पहले क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल याद होगा, जब हसन अली के साथ आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में बड़े रन्स किए थे। तो एंड संभालना आता है इनको, इनका डिफेंस अच्छा है। ये मैचेस जो हैं वो टाई करने भी इनको आते हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का फाइनल टाई हो गया था इनके शॉट की बदौलत। हसन अली के साथ उस पार्टनरशिप का खात्मा हुआ। यहाँ ये जल्दी पार्टनरशिप का खात्मा हो गया 8वीं विकेट की। उसामा आउट हुए, तेज से रन्स बनाना चाह रहे थे, लेकिन सऊद जो हैं इस वक्त आज खुश होंगे। कल सुबह के सेशन में नई गेंद का जो एडवांटेज था ज़ाया किया गया, दोनों ही नई गेंदें ज़ाया कर दी थी सिंध के बॉलर्स ने। आज लगता है कुछ बेहतर प्लानिंग से आए हैं, बेहतर एरियाज में बॉल हो रहा है, और इसी वजह से उनको 2 विकेट्स भी हासिल हुई हैं। और यही अगर इन्होंने कल पहले सेशन में पहले बेहतर लेंथ पे बॉलिंग की होती तो शायद हालात डिफरेंट होते इस वक्त सेंट्रल पंजाब के। लेकिन पॉइंट्स टेबल जो बोनस पॉइंट्स की बात है तो वो सिंध को तो नहीं रोक सके, लेकिन शायद मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा जल्दी है अभी कि आप दूसरों को रोकें। और ये एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएंगे, लेकिन अंपायर के ख्यालात खास से मुख्तलिफ थे। गेंद क्या लेग स्टंप को मिस कर रही थी। जी हाँ, ऐसे ही नजर आया, एंगल के साथ बॉल पड़ने के बाद एंगल के साथ ही सीधे चला गया, और जी हाँ लेग स्टंप को मिस कर जाएगा ये बॉल। बॉलर की अपील से तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे हर बॉल ही जो पैडों पे लगी है वो आउट है। अच्छा डिसीजन यहाँ पे अंपायर आफरीदी की जानिब से। यहाँ कई बॉलर्स तो ऐसे होते हैं, फास्ट बॉलर, गेंद बल्ले के अलावा कहीं भी लगी हो बैट्समैन को तो उनको आउट ही लगता है। एलबीडब्ल्यू अच्छा डिफेंड किया,
और उतनी उम्दा बॉलिंग भी मीर हमजा की 383 पर 8। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शर्जील खान का सबसे बड़ा स्कोर है 279 रन्स उनने पीटीवी के खिलाफ बनाए थे। ZTPL के लिए खेलते हुए राहुल द्रविड़ ने जो 270 रन्स की इनिंग्स खेली थी वो सीरीज विनिंग इनिंग थी और सलीम मलिक ने यहाँ सीरीज के बचाव के लिए फॉलो ऑन के बाद डबल सेंचुरी बनाई, वो बड़ी यादगार है। यूनुस खान, फवाद आलम ने भी डबल सेंचुरी बनाई हुई हैं इस मैदान में। अब्दुल्ला शफीक की मैराथन इनिंग्स अभी जारी है और इसी आलम में कमेंट्री बॉक्स में आ रहे हैं यासिर हमीद और शाह फैसल। Thank you very much, Tariq Saeed. Good half an hour for Sindh. They've been able to pick up a couple of wickets. And that race to the bonus points is continuing because another 3.5 overs left for Central Punjab to get another 16 runs and get another bonus point. But Abdullah Shafiq has carried on. The highlight of this morning has been his stroke play. He just continued from where he left off last night. Waqas Maqsood just went through the line and earned himself a boundary, rubbing salt into the wounds of Sindh. They have toiled hard and their toil continues. Good morning, Yasir Hamid. Good morning, Faisal, and what a good shot that was. He adjusted himself on back foot and pushed it into the gap for 4, joining his partner here, Abdullah Shafiq, with a 206 not out. On the other hand, what a innings he has played. Change of angle, it's in the air but over the top. May not have enough legs to go to the fence on this occasion, but his intent is very, very clear. Yeah, Waqas has clear ideas in his mind. He'll not bog down, not lay back, play his shots. This is the only way a tail-ender plays. And that's the right way in my opinion. There's no time to waste here. Like I said, they're closing in on that bonus point. Nothing much to achieve after that. This wicket still offering plenty with the new ball if you ball in the right areas. Abdullah Shafiq, solid as a rock. Yeah, Abdullah Shafiq, I'm impressed with his strike rate as well. 247 balls and 206. Some of the highlights of his stroke play. Just lit the Pindi Stadium alight with his stroke play. This is this morning. Wasn't afraid to go over the top. And this is a classical on drive to bring up the double ton. Oh, Umar doesn't know what to do to get a wicket. He's been good this morning, but no luck. Eventually he got that length. He's trying to search. Yesterday we have seen him trying hard. But today this was a good ball. This morning they went for runs because they've been bowling this aggressive length. You have to tempt the batters into the drive to have a chance of getting a wicket.
They didn't do that yesterday, but they're learning. It looks like it. Another full delivery in the air, but in the gap. Couple more runs for Abdullah Shafiq. .393 for 8. Central Punjab is in very good position now. 393 after 97 overs, and points, as Faisal told you, they have conceded. They have took 4 points, 3 points for Sindh. These points really matter in the end of the day. Good that Mir Hamza will have the opportunity to bowl a full over at Waqas Maqsood. He can build his plans. 3 for 65. Mir Hamza has bowled pretty well. Just talking to head coach of Sindh, Ghulam Ali, in the morning, and he did agree that in the first session yesterday, they didn't pitch enough balls in the right area, and that was the time where they could have benefited, took advantage of that decision they made at the toss. Well, they didn't contest the toss. Swing and a miss. Yeah, yesterday Sindh bowled 50 deliveries in the right area. 7 out of 50 they got wicket. And this shot, it was a bit frustration and aggression from Waqas. He has clear mindset. He'll go after the bowlers. I think this is the right thing to do. Send the mid wicket back. The mid on is also hanging slightly back. Just hoping that Waqas will hit one in the air. Allowed him to rotate strike. That's clever. Waqas is an intelligent cricketer. Yeah, talking about that stats that Ghulam Ali was sharing, it was quite impressive actually that before lunch he told me that his seamers bowled 132 deliveries, and out of those 132, only 7 were inviting the drive mean length, that what they call it, and they got 2 wickets. He reckoned if they had bowled about 50 deliveries in that area, they would have captured 4 or 5 wickets. But interesting, all these players are coming out of the T20 format where your natural length is back of a length. And that sudden adjustment is not very easy at times. Another good single by Abdullah Shafiq. He moves on 209. Actually, the bowler tries to bowl in same area, but when batsman like Abdullah Shafiq plays you, and he demolished the plans of bowlers. He played some beautiful shots, some, I would say, extraordinary innings I've witnessed, and we have witnessed. And his strike rate, look at his strike rate, how good he dominated the bowling, like he was playing with them. 395, this is first session. Second day, and they are very well placed, Central Punjab. Their bowler has lot of leverage to execute their plan, which they'll make when they'll come back for bowling, maybe in an hour. See where Sarfraz took that ball, still on the rise. Enough in it for the quicks if you're prepared to bend the back. Down the line, just flat batted him. A look of disgust on the face of Mir Hamza. He didn't enjoy that. 399 for 8.
Waqas Maqsood certainly enjoying this time on the middle. And definitely he has some plans, Shah Faisal. And he can be effective with ball as well. We have seen him on these type of pitches. He's done a lot. Today, this is his chance. Bowling change from far end. Asif Mahmood replacing Umar. From media end. And he was good yesterday. His economy is a bit high, 6.06. It's really high. But 3 wickets in the column. On his debut, Abdullah Shafiq looking, he need to hurry, and that's the 400. That's the 5th batting bonus point that Central Punjab has achieved. Be interesting to see what their approach will be from here on end, because they still got 11 deliveries to get up to that 100 mark, but there are no more bonus points available to them. Be good decision for Paul Franks to make. What does he think is a good total in the first innings, and how much time he needs to bowl the opposition out twice? That'll be all the questions in his head right now. Absolutely, Faisal. And this is a very good chance for them. The ball got on awkward height, but he managed it well in the end. Waqas Maqsood enjoying himself. Plenty of cheers for Waqas after that single. I think there's slight discrepancy with the manual scoreboard, which is down at the ground. But it is confirmed now. They got all the bonus points that were available to them whilst batting. Richard Stonier, Bilal Shafat, Abid Ali. They're all in their training gear, so no chance of turning the innings over as Abdullah Shafiq continues on with his excellent stroke play. Another boundary for Abdullah Shafiq. His intent to play was to play extra cover, but it was very well mistimed shot. Went into the gap for 4. He has a good bat, Faisal. Anything he touches turns to gold. That's not a classical Abdullah Shafiq, but he earned a boundary. And he goes for it again in the air. Sweeper will get there. Are they just looking to bat just the 100 overs? I don't know. It looks like this slight urgency after that 400 mark has been achieved. Absolutely, and Abdullah Shafiq is playing innings of his life, enjoying himself in the middle as new management with some foreign coaches in the dugout. I was talking to Humayun Farhat this morning, and he told me that guys are enjoying this change. So here we are, Abdullah Shafiq with 215. Into the gap, looking for that Yorker. Waqas puts him away. The runs continue to flow for Central Punjab. At the moment, you cannot keep Waqas out of the frame. Look at this shot. A bat ball put away nicely into the gap, just like batsmen do. They're trying to trap him on that onside. 2 fielders catching, 1 behind square, 1 in front of square, and there is a sweeper as well. He split them perfectly. It's a bit lackluster, you have to say, from Asif. That first over went for 11. 99 gone. 410 for 8.
Drinks have been brought onto the field. Would there be some more instructions? What do you think, Yasir? I think they should go on. There's a lot of time left in this match, but yeah, obviously the message will be clear, loud and clear, that keep going, boys. You're doing well, especially with the arrival of Waqas Maqsood and batting. He's batting good. Abdullah Shafiq got back his confidence. He didn't lose it any moment of this game, but obviously when you lose wicket, on the other hand, you go into the shell, but it's not happening here. This partnership is building up, and there's lot to think for Sindh here. Abdullah Shafiq is the first opener to have scored a double 100 in Quaid-e-Azam Trophy at this venue, Rawalpindi Cricket Stadium. He's the gap looking for two now, just content with the one. It's not a mean feat at all. Many great openers have played on this field in Quaid-e-Azam Trophy, but he's the first opener. Yeah, this is surprising, because Pindi Stadium is a first-class venue for so many years, and I remember I played my last first-class here 6 years back or 7 years back, but the pitches always helped fast bowlers. This is for sure. So that's the reason he's the first opener in Quaid-e-Azam Trophy. But it also, Yasir, you played a lot of cricket here, and you had good success here. We saw that yesterday when your stats came up. It always allows you to play your strokes once you get in, especially the horizontal bat strokes, the cut and pull. Yeah, but if we talk about Abdullah Shafiq here particularly, he played with selective shots. He didn't go for every shot early on. Till lunch yesterday we have seen he was not playing on the up, just concentrating on cut shot, and he was leaving the ball outside the off stump. And the one he got into the slot, he put it away. And from his toes, he plays very well. He didn't miss that opportunity as well. So here we are. He's on 216 now. Yasir had almost 1,400 runs at this venue, and your highest 171, 300s as well. Good average for an opener, so it means you always love to play here. What's the average? 46. Yeah, you know, as an opener, Faisal, it's not easy to maintain this type of average. Like, you know, you have to really work hard in Pakistan first class cricket as an opener, because you know, after every 2 years the ball change. When we used to play on the grace ball. Then it comes Kokobura, then it comes SG. You know, balls change, and when the ball change, it helps fast bowlers. That's the double hundreds. Sharjeel scored in Patrons Trophy, and Rahul Dravid, of course, in the test match. So did Salim Malik. Yunus Khan in his breakthrough season. Fawad Alam, some great names on that list. But at the moment, Sindh is finding hard to dislodge Waqas Maqsood. Hamza is trying everything. And talking about Yasir, he had great success here. And yesterday we were talking about some of his feat here, but this is about the double centurions here at the Pindi Cricket Stadium. Only Abdullah Shafiq in Quaid-e-Azam Trophy. The rest international cricket or Patrons Trophy.
Hardland to end the over. End of 100th over of the inning. 411 for 8. Toil in the sun for the Sindh bowlers. Mir Hamza 24 overs, Umar 21. Debutant Asif Mahmood went for plenty in his 19. We haven't seen Zahid so far, but I think looking in the distance, he's been given the ball now. His ball is only 20 overs old. He enjoyed bowling with that new ball yesterday just before lunch because he got more purchase. It'll be interesting to say this is a second day pitch and the ball is relatively new, only 20 overs old. See what kind of purchase he gets. Yeah, he's a quality spinner, Zahid. Season campaigner, but in this match, he's been a touch expensive. Another forward defensive stroke by Abdullah Shafiq. He's dominating the proceedings at the moment and playing with authority. Let's see. Yeah, down the wicket, and that's, I think it's maximum. No, there's one bounce and over the fence. Beautifully played by Abdullah Shafiq. Look at the feet movement, Faisal. He's quick to attack Zahid. That was his plan yesterday. He never allowed him to settle. And Zahid, there's not enough pace in the wicket for him for that back of a length. And Abdullah has found it very easy. That strike rate that you were talking about, Abdullah Shafiq really catching up on that strike rate. Almost getting up to a runner ball. If he bats for another half an hour, I'm sure he's going to get there. But if he does that, Sindh won't be happy because runs have been piled on. Yeah, it's interesting now, Waqas Maqsood. What would be his ideas? There you go, but straight to the fielder. Mir Hamza couldn't do it with the ball, but he was in the right place at the right time. Gobbled Waqas Maqsood, and his little cameo has come to an end. Yeah, talking about his ideas, but his idea was straight into the hand of back foot point. Good catch taken by Hamza, Mir Hamza. He's bowling from far end, but he was quick on this occasion. 17 on 20 by Waqas. Good add-on by this fast bowler. He must be. Number 11, Muhammad Ali. Zahid Mahmood finally got a wicket. 17 matches, best of 17. Looks like a typical number 11. Starts off with a googly. Ali didn't read it, but the line wasn't right. Yeah, Zahid Mahmood wrapping up the things. This is the last wicket. Played reverse sweep, went into the hands of Mir Hamza. Oh. Ripping leg break. Zahid is having some fun.
you go. Nice, delicious flight. And that drift. And the turn. Too good for a number 11. 416 for 9. Abdullah Shafiq has an opportunity to carry his bat. And the way Ali played the last two deliveries, Abdullah won't want him back on strike anytime soon. Flowing drive, but like I said, he doesn't want Ali to face any deliveries. He's refused the single. Yeah, right thing to do at this stage, the way Abdullah Shafiq played this inning, a marathon, and I must say, innings of his life. Yasir, do you remember any other player who has carried his bat here in first-class cricket in Rawalpindi? Not really. Well, it's none other than yourself. ZTBL versus HBL, 2010, 2011, 171 not out. And Abdullah Shafiq is almost there. If Ali gets out, he would have carried his bat. Oh, that was bat carry? Okay. In the air. Is it in the gap? It's over. Scrambling over the fence. Saud Shakil. He got a hand to it. But too much power from Abdullah Shafiq. Oh boy, what a shot to play. Stand and deliver. Wow, what a shot. It's always a great shot. 6 in every cricket. Saud got there, but he was getting over the fence anyway, so can't call that a drop. Magnificent stroke. He's prepared to take a single on the third delivery of the over, so that will give Asif 3 deliveries to bowl at Ali. Yeah, it's a bit early to take a single. Let's see. Maybe, but he has to take some risk and trust his partner. He wants to join you on that list of people who carried their bat. I don't think he's thinking this. If you didn't know, I'm sure he doesn't know. But looking at Ali, looks like he's a walking wicket. Yeah, absolutely. This is a good chance for Asif Mahmood to get his 4th wicket here. Just ball in the line of the stumps. I think one slip should more be placed here. If they add 4 slip, flying slip, would not be a bad idea, but well played by Ali. Muhammad Ali I'm talking about, not Ali Yunus. Well, he's good enough to block the straight ones. Overdone, 424 for 9. Who's next? Here we go. This is a healthy batting card of Central Punjab. Abdullah Shafiq playing on 228.
And other than him, Amir Yamin got 70. These two are the prominent in this batting card. Other than those, 102 overs of toil for Sindh as players take drinks. एक विकेट बाकी रह गई है। अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो इस वक्त बैट कैरी कर रहे हैं और अगर वो नॉट आउट वापस जाते हैं तो वो इस एजाज़ के भी मालिक बन जाएंगे। 228 रन्स उनने बना लिए हैं और आज बहुत ज़्यादा रन्स बने। 12 ओवर्स का खेल हुआ। इब्तिदा आमिर यामीन की विकेट से हुई थी। मीर हमज़ा ने ये कामयाबी हासिल की। सऊद शकील ने कैच किया उसामा का और उसके बाद रिवर्स स्वीप करते हुए यहाँ आउट हुए वकास मकसूद। मीर हमज़ा ने 3 विकेटें हासिल की हैं। 3 खिलाड़ियों को कल आसिफ महमूद ने आउट किया था जिनका ये पहला मैच है। जाहिद महमूद ने भी आज अपनी पहली कामयाबी हासिल की। अच्छा शॉट खेला। वहाँ पर फील्डर खड़े किए गए हैं लेकिन वो देखते रह गए। अब्दुल्ला शफीक को इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं है कि उन्हें बैट कैरी करना चाहिए। वो इस वक्त सिर्फ टीम का सोच रहे हैं और यही होना भी चाहिए। अयाज जी बिल्कुल, निहायत ही शानदार शॉट थी। मिड विकेट के ऊपर से उठा के खेले और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाना चाहेंगे अब्दुल्ला शफीक क्योंकि आखिरी विकेट है। फील्डर डीप लिया हुआ था लेकिन फील्डर की पहुंच से काफ़ी दूर बॉल। एक और शॉट, इस बार आउट हो जाएंगे। यहाँ 7 गेंद के नीचे आ गए। अब्दुल्ला शफीक जो क्लियर करना चाहते थे बाउंड्री को, ऐसा नहीं कर सके और बहुत ही शानदार और यादगार इनिंग्स खेलने के बाद वो आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन ठहरे। 232 रन बनाए अब्दुल्ला शफीक ने और 103 ओवर्स तक उनने बैटिंग की। उनके सामने कल विकेटें बड़ी तेज़ी के साथ गिरती रहीं लेकिन उन्होंने सेंट्रल पंजाब की लाज रख ली और 428 में से 232 रन तन्हा स्कोर किए। एक ऐसी पिच पर जिस पर फास्ट बॉलर की सीम और स्विंग का चैलेंज था और स्पिनर्स को उन्होंने इस शॉट से पहले तक खासा आड़े हाथों लिया और यहाँ आउट हुए उस 7 के हाथों। बिलाशुबा ये इस दाद के हकदार हैं, इसलिए टीम के जो कोचेज़ हैं, सपोर्ट स्टाफ, वो खुद मुबारकबाद देने के लिए नीचे उतर आया है। अब्दुल्ला शफीक ने नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है कि वो जो कहा जाता है कि आपको 4 सेशन बैटिंग करने का आर्ट आना चाहिए, वो उन्होंने कर दिखाया है। और तमाम कोचिंग स्टाफ और सीनियर बल्लेबाज उनका खड़े होकर इस्तकबाल करते हुए बिलाशुबा वो इस दाद के मुस्तहिक है। निहायत ही शानदार बारी खेली और मुद्दतों याद रखी जाएगी ये उनकी डबल सेंचुरी। 19 रन जावेद अली ने स्कोर किए थे। अली जरियाब 1 डाउन खेलने के लिए आए, वो भी 19 से आगे नहीं बढ़ सके और
और आसिफ की ये पहली विकेट थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। फिर मोहम्मद साद जो टीम का कप्तान है, उनने भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। कासिम अकरम और तैयब ताहिर भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन आमिर यामीन और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान जो सेंचुरी स्टैंड था, उसने सेंट्रल पंजाब की टीम को इस खेल में आगे कर दिया। आमिर यामीन ने 70 रन्स की बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली सिर्फ 77 गेंदों में, लेकिन हीरो रहे ऑल द वे अब्दुल्ला। और बॉलिंग कार्ड निहायत ही शानदार बॉलिंग रही। मीर हमजा पहले सेशन में थोड़े अनलकी रहे, लेकिन बाद अज़ां विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। उनके साथ आसिफ महमूद ने साथ निभाया। जाहिद महमूद बिलाखिर 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। थोड़े से अनलकी रहे, उनकी बॉल्स पर काफी कैचेस भी ड्रॉप हुए। फवाद आलम कोई विकेट हासिल ना कर सके। 102.2 ओवर्स बैटिंग की सेंट्रल पंजाब ने, और उनने पहाड़ खड़ा कर दिया है इस स्कोर का अपनी पहली इनिंग्स में। ये आज के दिन का अहवाल है। पॉइंट पर चौका लगाकर खेल की इब्तिदा की थी आमिर यामीन ने, और अब्दुल्ला शफीक चार्ज करते हुए भी नजर आए बॉलर्स को, और ऐसे में आमिर यामीन विकेट कीपर को कैच दे बैठे। लेकिन दूसरी जानिब अब्दुल्ला का सफ़र जारी रहा और उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पिच पर पहुंचते ही उसामा आउट होने वाले दूसरे बैट्समैन थे, और बाद अज़ां वकास मकसूद ने भी अच्छा साथ दिया अब्दुल्ला शफीक का, और दोनों स्कोर को 400 से आगे ले जाने में कामयाब हुए। अब्दुल्ला शफीक बढ़ चढ़कर अपने वार करते रहे। रिवर्स स्वीप करना चाहा वकास ने, वो कैच दे बैठे मीर हमजा को, और दूसरी जानिब तेज़ रफ्तारी के साथ रन्स बनते रहे। 5 बैटिंग पॉइंट हासिल किए सेंट्रल पंजाब ने। 100 ओवर्स तक उन्होंने जो 400 रन्स बनाए, और फिर ये इनिंग्स तमाम हुई। साद खान ने बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ा। तो सिंध की बैटिंग अब से चंद लम्हों के बाद शुरू होने को है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन उससे पहले होगा एक वक्फा।
पंजाब बनाम सिंध। पहली इनिंग्स सेंट्रल पंजाब की तमाम हुई 428 रन पर। अब्दुल्ला शफीक ने शानदार डबल सेंचुरी बनाई, 232 रन उनने बनाए और वो आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी थे। उन्हें आउट किया जाहिद ने। ये पहली डबल सेंचुरी है अब्दुल्ला के फर्स्ट क्लास करियर की और उन्होंने देखने वालों के 2 दिन तक दिल जीते और उनको रोकना खासा मुश्किल रहा। बैकफुट पर उनके स्ट्रोक्स बड़े ही दिलकश थे, बराबर जो हैं वो गेंदों को उनके मेरिट के मुताबिक खेलते रहे और यहाँ चार्ज करते हुए नज़र आए अब्दुल्ला शफीक। यह है ख़ास तौर पर उनका ये ऑन ड्राइव है, जब जब ये खेलते हैं तो ये दुनिया और भली लगने लगती। अब्दुल्ला शफीक को ये दिन कभी भी नहीं भूलेगा। कल 189 रन पर वो नॉट आउट थे और आज बड़ी जल्दी उन्होंने अपना ये कारनामा कर दिखाया। मीर हमजा ने 3 विकेटें हासिल की। 3 खिलाड़ियों को ही आसिफ महमूद ने आउट किया। जाहिद महमूद जो कदरे बदकिस्मत थे, उनकी गेंदों पर कल कैचेस गिरे। उनने 119 रन ज़रूर दिए लेकिन 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद उमर ने भी एक शिकार किया। अब तक का शानदार ये मैच रहा अब्दुल्ला शफीक के नाम। 2 दिन निहायती कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने। ग्राउंड के चारों अतराफ तमाम बॉलर्स को बेबस करके रखा उन्होंने। कोई मौका नहीं जाने दिया। निहायती शानदार बल्लेबाजी, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दिया और जहां लूज बॉल मिला वहां उसको जोरदार स्ट्रोक से बाहर फेंक दिया बॉल को। ये कल आबिद आउट हुए, ऑन द ऑफ खेलने गए थे और अपनी बॉडी से दूर चले गए। उसके बाद अली ज़रियाब स्लिप में गए दे बैठे। खुर्रम मंजूर ने उन्हें अच्छा जा लिया। विकेट कीपर कारकर्दगी बड़ी उम्दा थी सरफराज अहमद की। विकेटों के पीछे उन्होंने 4 कैचेस दिए, अपने दाएं जानिब भी बाएं जानिब भी। और फिर कासिम अकरम जो अच्छे लग रहे थे एक मौके पर, वो गेंद को रोकते हुए एक बार फिर सरफराज अहमद को कैच दे बैठे और ये अलीशान रन आउट हुए। दूसरा रन लेना चाहते थे, सिर्फ गेंद को देख रहे थे। अब्दुल्ला शफीक पर उनकी नज़र नहीं थी, इसलिए बदकिस्मत रहे। और ये आज आमिर यामीन आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे। फिर उसामा गए, उनका भी कैच खासा आसान था। ये रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की वकास ने और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का लगाना चाहते थे लेकिन वहाँ उन्होंने फील्डर को पाया तकरीबन 7 गज अंदर। साइम अयूब अब्दुल्ला के बाद अगली नज़रें अब इन पर हैं क्योंकि ये बड़े बासलाहियत हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में इन्होंने अपना लोहा बड़ी जल्दी मनवाया है। अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर क्या ये अब्दुल्ला की तरह सेंचुरी बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा क्योंकि इनकी सलाहियतों पर किसी को शक नहीं है। आमिर यामीन जो गेंद को स्विंग करने की अहलियत रखते हैं, उनसे पाला पड़ेगा साइम और खुर्रम मंजूर दोनों का। लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा हैं सेंट्रल पंजाब के पास, इसलिए ज़्यादातर फील्डर्स अटैकिंग पोजीशंस में नज़र आएंगे। 3 स्लिप्स और गली के साथ शुरू कर रहे हैं आमिर। पहला बॉल अच्छा अंदर आया, आमिर को मदद मिल रही है विकेट की जानिब से। खुर्रम मंजूर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सिंध की जानिब से। निहायती शानदार कैरियर, 188 उनका बेस्ट है। मैचेस 11,548 रन, 30 सेंचुरियां और 54-50, 250 उनका हाईएस्ट, 37.86 की एवरेज। निहायती शानदार क्रिकेट कैरियर खुर्रम मंजूर का। गेंद को दोनों जानिब मूव कराने के अहल हैं आमिर यामीन और इस सेटअप करने की कोशिश करेंगे खुर्रम मंजूर को कि इन स्विंग पर इन पे वार किया जाए। एक फील्डर को शॉर्ट लेग पोजीशन पर भी खड़ा किया है। सेंट्रल पंजाब को अच्छी कैचिंग करना होगी। सिंध ने कोई गलतियां की थी और उनकी बड़ी कीमत
उनकी टीम ने चुकाई। अब्दुल्ला शफीक का कल सऊद शकील ने मिड विकेट पर कैच गिराया और उस वक्त तक वो 50 पे भी नहीं पहुंचे थे। एक कैच फवाद आलम ने स्लिप में गिराया था जाहिद महमूद की गेंद पर। इसलिए जो स्लिप कॉर्डन है, पिछले सीजन में सेंट्रल पंजाब ने बड़े कैचेस गिराए थे स्लिप में। इस बार ऐसी गलतियां करने से गुरेज करना होगा। ये वो इन स्विंग है जिसका भी जिक्र चल रहा था कि सेटअप करने की कोशिश करेंगे। पहले बाहर गेंद कर रहे थे और उसके बाद ये वार किया इन स्विंग के जरिए इनके पैड्स पे। अच्छा बॉल था, अंदर आया, अंदरली किनारा लेती हुई बॉल। पहले थोड़ा बाहर खिला रहे थे खुरम मंजूर को, इस बार थोड़ा सा कोशिश की आमिर यामीन ने कि वो चेस करें बॉल को और बॉल को बल्ले पे लें। खतरनाक साबित हो सकता था। साइम अयूब अपने करियर की ये पहली गेंद खेलेंगे रेड बॉल क्रिकेट में, लेकिन हालात से साइम बिल्कुल भी अजनबी नहीं है। अभी इन्होंने 3 हफ्ते पहले यहाँ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है इस पिच पर। जब नेशनल T20 कप में ये हीरो थे टूर्नामेंट के, ये बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए। इसी अच्छी यादों के साथ आए आप इस मैदान पर तो इसका इनको फायदा मिलेगा। हाल ही में इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है साइम अयूब ने, और सिंध की टीम ज्यादातर इन्हीं की बल्लेबाजी पर इन्हिसार करेगी खुरम मंजूर के बाद। ग्राउंड के चारों जानिब शॉट्स खेलने के माहिर साइम अयूब। एतमाद से खेला इस गेंद को बिल्कुल अपनी नजरों के नीचे बल्ला पैडों के करीब रखते हुए। तो पहले ओवर में एक ही रन दिया आमिर ने, कोई खिलाड़ी आउट नहीं सिंध का। वकास मकसूद उनकी नज़र अपनी 300 विकेटों पर होगी। काफ़ी तवील करियर है, 11 बार 5 या उससे ज़्यादा विकेटें ली हुई हैं। गेंद को स्विंग कर सकते हैं। ये पिच खासी हद तक इस पे काम आ सकती है इनकी बॉलिंग पंजाब के, क्योंकि इनको सही जगह पर गेंद कराना आता है। जब आबिद और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक कल खेल रहे थे पहले सेशन में, तो सिंध की टीम ने वो मौका गंवा दिया था गेंद को बल्ले के करीब गिराने का, क्योंकि ऐसी लेंथ आपको इख्तियार करना है जहां बैट्समैन ड्राइव करने पर आमादा हो और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि बॉल बल्ले के पास जाए। और वकास मकसूद वसी तजर्बा रखते हैं फर्स्ट क्लास का। इन स्विंग करने की कोशिश की। अगर ऑफिस के बाहर से यही स्विंग पाने की कोशिश करते तो खुर्रम मंजूर को ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी। ये आसान वक्त नहीं है ओपनिंग करने का, जब आप 100 से ज़्यादा ओवर्स फील्डिंग में गुजार कर आए हों और आपने अपने सामने अपने हरीफ नंबर की डबल सेंचुरी बनते हुए देखी हो, तो ओपनर्स के लिए बैटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। इतने ओवर्स तक मैदान में आपको थकावट हो जाती है, जहनी तौर पर थके होते हैं। नई गेंद खेलने के लिए तरोताज़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल तारिक, निहायती अहम सेशन होगा पहला। स्विंग थी लेकिन अच्छा शॉट खेलने में कामयाब हुए। ये पहला स्कोरिंग शॉट साइम के करियर का। पुरएतमाद नजर आए हैं अब तक। एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से खेले, बड़े पुरएतमाद तरीके से
ओपन किया बैट का फेस उन्होंने, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने बॉल को आने दिया उन्होंने और तेजी से 2 रन मुकम्मल किए। उमैद आसिफ इस वक्त कवर पोजीशन पर खड़े हुए हैं, जो कि मुतबादिल खिलाड़ी हैं सेंट्रल पंजाब के। अब्दुल्ला शफीक अभी तक फील्ड पर नहीं उतरे हैं, इसलिए ये उनके मुतबादिल का काम कर रहे हैं। ऐसा काम ही देखने को मिलता है कि फास्ट बॉलर जो है वो आए 12वां खिलाड़ी बनकर मैदान पर। और इनके रिजर्व में तीनों फास्ट बॉलर्स ही हैं और एनर्जेटिक हैं, फिटनेस लेवल इनका बहुत अप। या पहला जो हदफ है सिंध का वो 225 रन होगा। यहाँ तो 150 रन का जो फर्क है वो कम से कम 150 की बढ़तरी सेंट्रल पंजाब को दरकार होगी, क्योंकि 4 दिन का मैच है। अगर वो फॉलो ऑन करना चाहते हैं सिंध को, 2 ओवर्स के बाद 4 है स्कोर। यहाँ तो जो पहला हदफ है सिंध का, तस्सी करते चलें, वो 279 होगा। फॉलो ऑन से बचना, क्योंकि ये 5 दिन का मैच नहीं, जब टेस्ट मैच होता है तो उसमें फॉलो ऑन का जो फ़र्क है वो 200 रन का होता है। अगर एक दिन कम हो जाएगा तो फिर 150 रन के फ़र्क से फॉलो ऑन किया जा सकता है। सिंध की बैटिंग खासी लंबी है। उन्होंने क्योंकि 4 ही बॉलर्स को कल शामिल किया था। सरफराज अहमद 7वें नंबर पर आएंगे। आसिफ महमूद ऑलराउंडर हैं और वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। दोनों टीमें ने 6-6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाए और उसका सबसे बड़ा सबब जो है ये पिंडी की पिच है, जहाँ पर बॉलर्स को मदद मिलती है। टीमें खाइफ रहती हैं, ख़ास तौर पर जो आती हैं जुनूब से या साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से भी ये खौफ होता है पिंडी की पिच का, यहाँ के बाउंस और रंगत का। इसलिए 6-6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन दोनों टीमों ने शामिल किए। दोनों टीमों के जो विकेट कीपर थे वो 7वें नंबर पर खेलते हुए नजर आए। अच्छा रन लिया। थोड़ा सा बाहर निकला आमिर यामीन का ये बॉल और उसको बड़े पूरे एतमाद तरीके से खेले साइम अय्यूब अगले कदमों पर। बिल्कुल अपनी आंखों के सामने फ्रंट फुट का अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने। हेड डाउन था। निहायत ही शानदार आगाज साइम अय्यूब का। शफायत जो अच्छे कोच हैं, बिलाल शफायत, ये पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट माजी में खुद भी खेले हुए हैं और नॉटिंघमशायर काउंटी के साथ एक अरसे तक वाबस्ता रहे। और एक ज़माने में ये इंग्लैंड की टीम के एशेज़ में ही उनके 12वें खिलाड़ी भी हुआ करते थे।
कई ऐसी एशेज़ के मुकाबले थे जिसमें ये मैदान पर इंग्लैंड के लिए 12वां खिलाड़ी बनकर उतरे। खासे पुरजोश फील्डर थे। पाकिस्तान क्रिकेट से भी इनकी वाबस्तगी रही है। और ये इयन फिशर हैं, ये यॉर्कशायर से एक ज़माने में क्रिकेट खेलते रहे हैं। इयन फिशर अच्छी गेंद छोड़ना चाहते थे, थोड़ी सी देर कर दी खुर्रम ने। बॉल को लेफ्ट करना चाहते थे, बल्ला बचा रहे थे, लेकिन अच्छा आउट स्विंग था आमिर का। ना चाहते हुए भी उनके बल्ले पर बॉल आ लगा। आमिर यामीन क्योंकि बहुत ज़्यादा कदावर नहीं है, इतने तेज़ भी नहीं है, तो शायद जो स्लिप के फील्डर हैं इनको जो है ये कदरे आगे रह सकते हैं इस नई गेंद पर भी इनके लिए। यहाँ जब रफ्तार आपके पास नहीं होती तो स्विंग जो है उसको भी बैट्समैन आसानी के साथ कोप कर जाते हैं। खुर्रम ने बिल्कुल ऐसा ही किया इस आखिरी गेंद पर। 3 के बाद स्कोर है 6। ये वकास मकसूद बनाम साइम अयूब, 3 कैचर अभी भी स्लिप में मौजूद हैं। गली उसके अलावा शानदार शॉट खेला कवर्स की जानिब, फील्डर पहुंच जाएंगे। कासिम अकरम थे फील्डर, 3 रन बनाए साइम अयूब ने। अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं। इस पिच पर आप जो है वो रिवायती ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन जो चेक ड्राइव है वो आप खेल सकते हैं। यहाँ जो पिंडी के क्रिकेटर्स होते हैं जब वो खेलने के लिए आते हैं तो उनके जो होम कोचेस होते हैं, ये देखिए चेक ड्राइव था, बहुत ज़ोर से या बहुत लंबे हाथों से खेलने के लिए नहीं गए। तो जो पिंडी के कोचेस होते हैं उनकी एडवाइस यही होती है होम बैट्समैन के लिए कि आपने ड्राइव खेलने से इज्तनाब करना है। बॉल को आने दिया साइम अयूब ने अपने पास, बिल्कुल नजरों के पास। फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से खेला और शानदार बल्ले और बैट का कनेक्शन था उनका, और सिर्फ पुश किया बॉल को उन्होंने, बॉल को आने दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके यहाँ के तमाम कोचेस की यही राय होती है कि ज़्यादा ओपन नहीं करना बैट का फेस। उसी का मुजाहरा किया साइम अयूब ने। दोनों बैट्समैन नच करते हुए नजर आ रहे हैं। खुर्रम खासे खबरदार अब तक नजर आए हैं। ये अच्छा पेयर है साइम अयूब, क्योंकि बिल्कुल नौवारिद हैं। दूसरे एंड पर उनको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कई बहारें देखी हुई हूँ, ताकि उनके तजुर्बे को अपने मफाद में इस्तेमाल कर सकें। ये गुलाम अली, इनका आज आखिरी दिन है अभी इस मैच में इस टीम के साथ। कल ये पाकिस्तान जो जूनियर लीग है उसकी कोचिंग के लिए हैदराबाद हॉक्स के जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं ये उनकी तरबियत के लिए लाहौर चले जाएंगे पिंडी से, और पॉल निक्सन आ जाएंगे जो सिंध की टीम को ज्वाइन करेंगे हेड कोच के तौर पर। हैदराबाद हंटर्स। और दाएं और बाएं हाथ से खेलने वाले बल्लेबाज फील्डिंग को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं इस वक्त।
लेग स्टंप से बाहर था, फ्लिक करना चाहते थे। ये शानदार कैरियर खुरम मंजूर का, 10,000 से ज्यादा रन, 11,548, शानदार एवरेज, 30 सेंचुरीज उनके कैरियर का हिस्सा। साइम अयूब उभरते हुए नौजवान बल्लेबाज जो सामने आए हैं, हाल ही में उन्होंने बेस्ट बल्लेबाज होने का एजाज भी हासिल किया। उमैर बिन यूसुफ इनके कैंप में, सऊद शकील, फवाद आलम जैसे मंझे हुए बल्लेबाज भी मौजूद। यह मजबूत मिडल ऑर्डर है सिंध का, और उनको दो अच्छे ओपनर्स का भी साथ मैसर है। 4 ओवर्स के बाद मजमूआ 11। It's important half an hour coming up just before the lunch break. So far, so good for Sindh. This new ball could be really tricky on this pitch. We've seen that already. Amir Yamin is at his most effective with the new ball. It's an important spell for him as well. 2 slips in a gully. Once again, I've been joined in by former Pakistan opening batsman Yasir Hamid. Thank you, Faisal. Sindh started his inning and Saim Ayub is looking good. A youngster making his debut, played brilliantly in T20s. And today he's making his mark on the highest cricket in the country, highest stage, I would say. Short and wide in the air, but in the gap. Width on offer, he threw the kitchen sink. Saim Ayub looking good. Yeah, it was there. It was a bit wider delivery, but as he's playing good, and he's seeing the ball well, and didn't miss this opportunity where he can see that he can run, score runs, and good start with his boundary. He will not hold back. Definitely, he will go for his shots. But initially, he was playing well. He was just watching the ball, making his eye. Went the other way. No ball is the signal from the umpire. But that's a better length, Yasir. Slightly fuller, drawing him on the front foot. Yeah, it was no ball, came in, well bowled by Amir Yamin, and equally well left. Yeah, it was a tight call. But well done by Saim Ayub. He knows where his off stump is. This is the most important thing as an opener. Amir Yamin is creating that angle. Just angle the ball in and then straighten off the seam. A very difficult delivery to ball. But being an opener, Yasir, you made an excellent point. If you want to have a long and distinguished career as an opener, you definitely need to know where your off stump is. Yeah, definitely well played by Saim Ayub. Again, the ball was going away from him, but look at him. He knows how much ball is swinging. He is in control, and he covered the line very well.
getting hit for that boundary. It's better from Amir Yamin. On each occasion, he's drawn Saim Ayub onto that front foot. Yeah, again, good check shot by Saim Ayub. Didn't go with full intent. It shows that he knows how to play on this level, or definitely he will get some experience. And the kind of bowlers he's facing now, Amir Yamin, swinging both ways. He's bowling well. Just use the word check drive. Just listening to Tariq say just before we came on, saying that's the instruction from the coaches here. It's all the time they tell you, don't go for that drive. By that he means don't go for an expensive drive. Don't extend your arms or meet the ball way out in front. You can play from close to the body. Well left, very well left, was till the end. Saim Ayub, he's watching the ball, Faisal. He's watching the ball till the end in the gloves of wicket keeper. This is called confidence. Too wide. 16 for none. Khurram Manzoor, Saim Ayub opening the batting for Sindh. Fawad Alam is to follow Saad Khan. Mir Hamza, Umar bin Yusuf, he's a batsman. Yeah, that's not the batting order that you're looking at. Saud Shakil, Umar bin Yusuf probably will come ahead of Fawad Alam at 5. Call is for 2. Easily done. Bit too straight from Waqas Maqsood. That angle allowed Khurram Manzoor to just tuck him into the gap on the onside. Yeah, it's too easy to manage when you are playing well. Waqas Maqsood coming round the stumps, bringing the ball in. And only 2 fielders were placed previously, but now short mid-wicket has been placed. A little bit of cloud cover as well. We've seen that briefly yesterday. But it looks like it's going to stay for a little longer today. There's a build-up of cloud, all pretty high. No imminent chance of rain. But the players will appreciate it because it's been pretty hot in the afternoons. Central Punjab had their feet up for a day and a half, but it's their time to work hard. Yes, new ball is very important for Central Punjab. Beautifully clipped. Once again, 2 straight from Waqas Maqsood. And Khurram Manzoor puts him away in style. Yeah, it was very easy for Khurram Manzoor to put it away. If we see the replay, clearly Waqas went offline on his thighs and hips, I must say, and it was easy picking for him. Khurram Manzoor any day, any time. That's a better length as well. Drawing Khurram Manzoor onto that front foot. Almost defeated him with that angle and the length. I think this is his plan.
Waqas Maqsood, and right length to bowl. Pulling from wide of the crease as well. Almost lured Khurram Manzoor into that drive. That's the gap he wants to create because he's showing him that cover gap. We'll come and have a look at that gap after this ball. That's better from Khurram Manzoor. Really committing into the stroke and not expensive at all. Very tight. That's the gap I was talking about. He's bringing the ball in with the angle. So he's left that cover open for him. There's a mid-off and a fielder at point just in front of square. But Waqas would not mind the last shot Khurram played. Would love to see him go for that flashy drive. Again a tight delivery to end the over. Over number 6. 22 for no loss. Since bowlers couldn't find any rescue from Abdullah Shafiq's bat, he really plundered them. Now, good time for them to put their feet up and watch their batters do the same to Central Punjab. Lack of pace could be the issue for Central Punjab. These two medium pacers operating right now. Beautiful shot by Saim Ayub, and he'll get the boundary. Off the toes. He's so poised. Played it late. Very good shot by the youngster. Just roll of the wrist. He possesses that gift of timing. Good balance as well. Head was right on top of the ball. And once it's got onto those practice pitches, it's sped away to the fence. That's a bit expensive. Just the outside half of the bat. Not timed as well as he normally does. Another good shot, but for just for 2 runs. It wasn't, you're right, it wasn't middled quietly, but it was in the gap. And the good thing, he played along the ground. Got another more important runs for himself. He's setting up nicely here. Compact. When I saw him in T20 Faisal, I was thinking that he just played aggressively and he doesn't know like where his off stump would be, because T20 is something different. But now, today he's playing accordingly. He's playing according to situation and ball to ball. And the good thing about him is his concentration. He's not going for that rash shots. He's playing a ball on his merit. Good angle, but Saim is in control. The longer he stays in the middle, he'll get comfortable. Remember, this is his debut game in this format. And no matter how good you are and how much confidence you bring into the game
from your performances prior to that. It still takes a little while to get used to it. So far, so good for Saim Ayub. A lot of people are watching him with interest, it has to be said, because he's made a name for himself in the T20 format. Shot and wide. Picture perfect. Saim Ayub. Great shot by Saim. That shows how a good form he is in. A little wide, a width, and went to boundary. Beautiful shot. Not extravagant movement of the feet, but just transfer of weight, and the balance really allows him to throw these hands. Excellent hand-eye coordination as well. The point of contact, Yasser, we saw that in T20 as well. He plays right underneath his eyes, even if he's attempting the big hits. That's the trademark of his play that we've noticed so far. Yeah, and that's the key. That's the key of batting, and he has lot of time. And he plays his shots. Good sign, good prospect. End of over number 7, 32 for no loss. Talking about the Central Punjab bowling lineup earlier, do lack a little bit of pace. These two medium pacers, their best time to make an impact is with the new ball. Although Muhammad Ali is their fastest bowler, he's been held back. And skipper Saad is coming to bowl. He bowls little gentle medium pace, but he does have the ability to swing the ball. And one thing is for sure, because he will bowl the right length, this will pose a different challenge to these two batters. I don't understand why they're not bringing Muhammad Ali. Why Muhammad Saad? We have to see. We have to watch and see. Gentle full toss, but Khurram Manzoor failed to put it away. Yeah, he does get swing. That's Saad's strength. And like I said, he will bowl the fuller length. Yeah, it was a hint of swing. That's the length. A little bit of wobble in the air. His pace is not threatening. But last year we saw in one of the games in Quaid-e-Azam Trophy, he came on before lunch on the first day and picked up 3 wickets. Okay, and I remembered a guy who used to do this, Ali Naqvi. He was captain of his side for KRL, and every time he used to come on the first change. And he's the match referee for this game, Ali Naqvi. Yeah, exactly. He is that sort of a bowler. And with the new ball, I don't think it's a bad tactic for Saad to just try himself for a couple of overs. There you go, once again turning Khurram Manzoor inside out. The lengths are the key, and Saad will continuously do that. It's a lot of noise from the Central Punjab fielders. Yeah, that length is not going to trouble Khurram Manzoor, but it hasn't been a bad over at all. Mohammad Saad bowls a maiden.
There he is, Ali Naqvi, but he used to bowl both swings. I remember he always got that breakthrough with his smile. Obviously, this is the venue for Ali Naqvi to remember as well. He made 100 on Test debut against South Africa. And now, much awaited arrival of Muhammad Ali. He is the fastest of Central Punjab bowlers. Muhammad Ali, lot of talk about him. Let's see how he delivers here. Only 17 matches for him with 61 wickets, 4-5 wickets haul. The best is 9 for 94 with an average of 22. That best figures are for the match. And probably the reason he's been brought on just now, because he hits the deck hard. Nicely played. Saim Ayub just caressed it down the ground. Won't go to the fence. Just a couple of runs. Saim Ayub, another good shot. The good thing about him is he's playing in-swinger. Every time he's playing in-swinger, and he has lot of time. Whenever the ball is there to hit, he goes for it, even if it's swinging in or going outside. Look at his head, how still he is when he bats. Another very good defensive stroke by Saim Ayub. Let's talk about Muhammad Ali. You were talking about Muhammad Ali, Faisal. His wickets, and you've seen him bowl? He had a very good season last year. He was the leading fast bowler among the wicket takers, and the start hasn't been bad. He's getting a little bit of shape back in, trying that fuller length. Normally he's a bang in to the wicket bowler, but realizing the conditions and with this new ball, this one angling away, he's just loosening up a little bit. When he's at full tit, you'll see that short pitch ball is also a good weapon of his. Yeah, he's tall. His run-up is very smooth, easy action. Focus on his target. Most important thing. The release and delivery stride. He's just loosening up. Looks like he's just bowling well within himself at the moment. I've seen him bowl quicker than that last year. Edged and dropped. Abdullah Shafiq was leaping away to his left. Couldn't hang on to it. This one was good from Muhammad Ali. He bent his back, got the bounce and the movement. It was best of the deliveries by Muhammad Ali, and opportunity which was created was not an easy one. It was on the left side, well tried by Abdullah Shafiq. Full stretch dive, but couldn't hold of it and dropped in the end. It's a big miss, let me tell you. Yeah, the bounce was the undoing as well, along with the angle. Saim got cramped, but that ball got big on him. Looks like a catching practice. Just away from Abdullah. Let's try again, says Muhammad Ali. It was a difficult chance, no doubt, but look at this delivery. He has to play it. This is unplayable delivery, and the area of uncertainty, he pitched it in there. Nice bounce he got. As you said, he has a nice smooth action and beautiful stride.
Again, well bowled to end the over, and well played, equally well played by Saim Ayub. End of 9 overs, 34 for no loss. Opportunity created in the last over. Let's see where the slips are standing. You see, the first slip is very close to wicketkeeper. Normally, you stand on 1.5 slip and another edge, and ball is traveling toward deep third man. Long chase for Abid. He did well. 3 runs have been taken. Saad will create problems with that length. Khurram Manzoor, I think, will be happy to be on the non-strikers end, because this could well be the last over before lunch. Talking about that opportunity in the last over, as we watch this, Khurram Manzoor does that to medium pacers. Looks to advance down the pitch, just cut down on the angles, not allow the ball to swing. I think it'll be best idea. Look at those slip cordon that Yasir was talking about. The staggering is too close. They can cover more distance. Yeah, if you see the second slip, if we see in the picture, you'll see Abdullah Shafiq is very close to that first slip. He has to move away a bit, half a step, I must say, for this pace. On the up drive, aerial for a moment. Yeah, in the morning, Yasir, when we saw Central Punjab doing their fielding drills with Bilal Shafayat and Paul Franks, this is what Paul was stressing on. He was asking them to cover more distance. As we watch this, went aerial for quite some time, just away from Saad. And if these slips were staggered correctly, I think Abdullah's chance in the last over could have gone to hand. Yeah, absolutely. You have to adjust in the slips, because if you have you are standing 2 slips, you have 2 slips, they have to be, you know, a bit wider. Short, and it was bad ball. Saim missed the opportunity to get the boundary, but played it well. So this Over. is probably lunch, and Sindh is 38 for no loss after 10 overs. End of another enthralling session of first-class cricket. We saw Sindh battle really hard against the new ball, and they'll be happy going in at lunch without losing a wicket. They can consider themselves lucky, because Saim was dropped in the 9th over just before lunch. But 38 for none. Sindh chasing a mammoth target. They still trail by 390 runs on the first innings. These two are the picture, Khurram Manzoor and Saim. They are going off. Saim played well for his 23 till now, and this session conceded 108 runs with 4 wickets, 22.2 overs with a run rate of 4.86. The only disappointing thing is the over rate, just 11.1. But this game has moved on pretty quickly this morning. Central Punjab lost 4 wickets. And this is the batting card. Saim Ayub has looked good for most part. The test will continue when he'll have to come out after lunch. Different challenges. He may have to deal with spin of Osama in the afternoon session. And that one testing over from Muhammad Ali.
induced that opportunity. Amir Yamin and Waqas Maqsood with the new ball didn't create an impact, but Muhammad Ali did, and Saad's little gentle medium pacers were posing a different kind of challenge to the batters. Just the one extra in the 10 overs. Abdullah Shafiq and Amir Yamin started the day. Amir Yamin went first. Osama Mir didn't last very long. Neither did Waqas. He did play a few shots though. And Abdullah Shafiq eventually lost his wicket after completing a glorious double hundred. An absolute treat to watch. And Sindh's innings started off with flurry of boundaries from Saim Ayub. Khurram Manzoor as efficient as ever. Medium pace of Amir Yamin not troubling the two openers, but Muhammad Ali did, and the double centurion Abdullah Shafiq wasn't able to grasp onto that opportunity. Situation of the match so far, 428, play 38 for none. Plenty of cricket left to be played, and we look forward to an exciting afternoon session. At the moment, players are taking lunch. We'll take a break as well, and we'll be right back with you with live action in just about 30 minutes.
हाँ, एक बार फिर आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खुशामदीद कहते हैं, जहां पे मैच का ये दूसरा दिन सेंट्रल पंजाब का मुकाबला सिंध। सिंध अपनी बैटिंग यहां से जारी रखेंगे लंच के बाद। 38 बगैर किसी नुकसान के खुरम मंजूर और साइम अयूब दो ओपनर्स अभी क्रीज पे मौजूद हैं। खुरम मंजूर ने बनाए 14 रन, साइम अयूब ने 23 रन बनाए। 4 बॉलर्स का इस्तेमाल किया सेंट्रल पंजाब के कप्तान ने आमिर यामीन, वकास मकसूद, मोहम्मद साद और मोहम्मद अली विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। यहाँ पे भारी जिम्मेदारी होगी मोहम्मद अली के कंधों पे, क्योंकि ये ऐसे बॉलर हमें सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग लाइनअप में नजर आए जिन्होंने थोड़ी जिप से बॉलिंग की है, थोड़ा तेज बॉलिंग की है, थोड़ा पेस से बॉलिंग की है और थोड़ी मुश्किलात पैदा की हैं बैटर्स के लिए। एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की गई जब कैच ड्रॉप किया गया उस्मान साइम अयूब का, अब्दुल्ला शफीक ने रिटर्न की अपनी फेवर, और ये भारी साबित हो सकता है सेंट्रल पंजाब के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइम अयूब बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किलफुल बैटर हैं। उनके साथ खुरम मंजूर मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं याज शाह, डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक है। खुश आमदीद कहते हैं आपको याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अली यूनुस। साइम अयूब, अच्छा आगाज दिया इन्होंने आज सिंध की इनिंग का। आते ही शानदार स्ट्रोक्स खेले, डिफेंसिव, अटैकिंग, 3 चौके लगाए, एक्स्ट्रा कवर पर बड़ा अच्छा शॉट्स खेले इन्होंने। 31 बॉलों पर 74 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। मोहम्मद अली एक ओवर में 2 रन दिए थे, लेकिन सबसे जो अहम बात थी वो इनकी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई स्लिप में कैच गिरा दिया गया अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। काफ़ी भारी जिम्मेदारी है यहाँ पे मोहम्मद अली के कंधों पे। पहला बॉल करेंगे लंच के बाद। यहाँ पे यार एक बहुत जैसे साइम अयूब के लिए एक सीखने की बात ये थी कि जो अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स है, जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने टेक्निकली करेक्ट बैटिंग की, ये इन जैसे प्लेयर्स के लिए जो यंगस्टर उभरते हुए प्लेयर हैं, इनके लिए बहुत सीखने की बात है कि उनसे सीखा जाए कि टेक्निकली ऐसी पिचेस पे कैसे बैटिंग करनी है, लंबी बैटिंग कैसे करनी है, टेम्परामेंट कैसे दिखाना है, क्योंकि शॉट्स पूरी मौजूद हैं। ये हमने देखा नेशनल T20 में कि शॉट्स उनके पास काफ़ी मौजूद हैं, सिर्फ अपने आप को अप्लाई करना है, पेशेंस दिखाना है, विकेट पे ठहरे रहना है, ये चीज़ें सीखनी होंगी। जी बिल्कुल अली, सही कहा आपने। फवाद आलम जैसे मंझे हुए बल्लेबाज इनके साथ है और खुरम मंजूर का तजर्बे का भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं सरफराज अहमद, जिनके पास वसी तजर्बा इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेट का। जी, और ऑलरेडी जैसे आपने हम आगे बात कर रहे थे, ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी थी, एक कैच जो ड्रॉप किया गया अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। ये एक बार देखते हैं उस कैच को, मुश्किल था, लेकिन इस लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब्दुल्ला शफीक जैसे फील्डर हैं, इनको ये पकड़ना चाहिए, क्योंकि विकेट्स बहुत मुश्किल से हासिल हो रही हैं इस पिच पे, और आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ आपको ग्रैब करनी होगी। साइम ने काफ़ी लेट रिएक्ट किया, बॉल उनके ऊपर आ चुका था जब उन्होंने बल्ला बॉल के साथ मिलाया, और अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा लेजी हो गए, थोड़ा सा सुस्त हुए, जिसकी वजह से उल्टे हाथ पर उनका कैच गिर गया। बेहतरीन बॉलिंग है ये, और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं मोहम्मद अली से, क्योंकि पेस है, अच्छा एक्शन है, हाई आर्म एक्शन है। अगर ये अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल कंसिस्टेंटली कर पाएँ तो ये मुश्किलात पैदा कर सकते हैं सिंध के बैटर्स के लिए। और सबसे अच्छी बात जो मोहम्मद अली में नज़र आई है, बॉल को पटकने के साथ बॉल को बल्ले के करीब गिराते हैं। 2 स्लिप्स, आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, 2 मंझे हुए फील्डर इस वक्त स्लिप में मौजूद अली शान के साथ, और एक गली के साथ बॉल कर रहे हैं मोहम्मद अली। स्विंग हासिल हुआ है यहाँ पे थोड़ा, शायद यही डिसअपॉइंटमेंट नजर आई हमें मोहम्मद अली के चेहरे तासुरात से भी। देखिए थोड़ा इन स्विंग हुआ बॉल,
थोड़ा फॉल भी कर गए, थोड़ा बैलेंस भी आउट हो गया साइम अयूब की जानिब से। ऑलरेडी वैसे हम देखें तो टेक्निकली बहुत शानदार साउंड प्लेयर हैं, हेड पोजीशन बहुत स्टिल है, बैलेंस बहुत कमाल का है, ब्रेव प्लेयर हैं, शॉट्स भी मारते हैं, सिर्फ विकेट पे ठहरना सीखना होगा और उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन है। 4 डे क्रिकेट खेलें, लंबी बारी लें, अब्दुल्ला शफीक से सीखें। सिंपल एक लर्निंग, पूरा एक प्रोसेस है उस इनिंग में जो अब्दुल्ला शफीक ने इस मैच में खेली है। शानदार तरीके से ड्राइव किया लेकिन टाइमिंग ज्यादा मौजूद नहीं थी। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, यहाँ पे पैशंस और सब्र का मुजाहरा करना होगा। अभी पहला मैच है इनका और बहुत कम उम्र है, इनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अपनी मुखालिफ टीम से भी, और इनकी टीम में भी शानदार प्लेयर्स मौजूद हैं। फवाद आलम जैसे मंझे हुए फर्स्ट क्लास का वसी तजर्बा रखते हैं और ये नौजवानों के लिए इंस्पायरेशन है। जिस तरह फवाद आलम ने 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में कम बैक किया था, ये साइम अयूब के लिए बहुत बड़ी मशअल राह साबित हो सकते हैं। सरफराज अहमद से के तजर्बे से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और साइम के पास मुकम्मल शॉट्स हैं और इस वक्त एतमाद की भी कमी नहीं है क्योंकि हाल ही में वो बेहतरीन बल्लेबाज करार पाए। लंच के बाद पहला ओवर का इख्तिताम हुआ 39 बगैर किसी नुकसान के सिंध। आगाज बहुत शानदार यहाँ पे हासिल हो गया है सिंध को और इनको ये चीज़ याद रियलाइज़ करनी चाहिए कि ज़्यादा बॉलिंग में डेप्थ नहीं है सेंट्रल पंजाब की, अगर पेस की बात करें, क्योंकि मोहम्मद साद मीडियम से भी शायद स्लो मीडियम पेसर हैं, वकास मकसूद भी मीडियम पेसर कैटेगरी में आते हैं, आमिर यामीन भी जब नया बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है तो इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ अगर इनके जहन में होगी, थोड़ा वक्त गुजारेंगे तो शॉट्स वाले बॉल बहुत मिलेंगे। मोहम्मद साद ने भी यही सोचा होगा कि कहीं ना कहीं बल्लेबाज इनको इजी लें और कोई गलत शॉट खेलें जिसका ये भरपूर फ़ायदा उठाएं। शानदार कवर ड्राइव है ये, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, लेकिन इतनी शानदार हाफ स्टॉप मैं कहूंगा, 2 रन नहीं 4 रन के लिए बॉल चला जाएगा। निहायत ही शानदार कवर ड्राइव थी, फील्डर को मौका ही नहीं मिला, ड्राइव किया था काफ़ी लंबा लेकिन रोकने में नाकाम रहे। आगे पड़े हुए बॉल को हेड स्टील फ्रंट फुट अटैकिंग शॉट था, पूरा मिडल हुआ। जहाँ वो काफी लेट खेलते हैं, हेड पोजीशन स्टिल, सामने फ्रंट आर्म है वो भी परफेक्ट पोजीशन में होता है, तो टेक्निकली बहुत साउंड है। डेफिनेटली मैं तो चाहूंगा कि ये, क्योंकि जब भी एक बैटर सामने आता है, एक यंग बैटर, तो बहुत ही खुशी होती है। यूजुअली हम देखते हैं पाकिस्तान में हर सीज़न में हमें फास्ट बॉलर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था कि हुरैरा सामने आए थे 4 डे क्रिकेट में, क्या ये सीज़न साइम अयूब का हो सकता है, ये सवाल है। T20 में तो खुद को मनवा चुके हैं और ये इनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफार्म है खुद को मनवाने का और उनके चेहरे से एतमाद आया है। नौ 986 रन मोहम्मद हुरैरा ने किए थे पिछले सीजन में, जो एक डेब्यू सीजन में किसी भी बैटर के सबसे ज़्यादा रन्स हैं। साइम अयूब का भी ये कई डेब्यू सीजन है, तो हम चाहेंगे कि उतने ही रन्स करें जितने हुरैरा ने दिखाया था, अपने स्किल शो करें। शानदार कट शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, प्लेसमेंट इतनी बेहतर नहीं थी। बल्ले के नीचे लगी बॉल, काफी टॉप पर लगी, निचली किनारे पे बल्ले पे लगी। अगर मिडल होता तो काफी तेज शॉट हो सकती थी। कोई गलती नहीं की कासिम उमर है, कासिम अकरम की शानदार फील्डिंग। थोड़ा सा फंबल हुआ बॉल, फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं मोहम्मद साद, एक स्लिप निकाल कर मिड विकेट पर लाए हैं आबिद अली को। ये सब पैंतरे तो इस्तेमाल करने होंगे क्योंकि उस तरीके से कैरी बॉल कर नहीं रहा है, ड्राइव की कोशिश करवाएंगे।
लेकिन जिस तरीके की फॉर्म और जिस तरह के प्लेयर साइम अयूब हैं, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक अच्छे बैटर को ऑलरेडी एक चांस दे देते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि दूसरी दफ़ा चांस क्रिएट करना। और ये हमने देखा पहली इनिंग में साइम अब्दुल्ला शफीक के 2 कैचेस ड्रॉप किए और उन्होंने जो हाल किया उसके बाद, इसलिए आपको अपने हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। बारह ओवर्स के इख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के बढ़ता हुआ स्कोर 43। जब से मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंट नज़र आती है हमें। सेंट्रल पंजाब की पूरी फील्डिंग साइड में ही ऐसा लगता है कि हर बॉल पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। ऊज एंड आज की आवाज़ें हमें यहाँ तक आ सकती हैं और यही अयाज पेस करती है। तो जब भी आप एक तेज़ बॉलर को खिलाएंगे तो एक्साइटमेंट तो क्रिएट होगी। मुझे थोड़ी हैरानगी ज़रूर हुई थी पिच को देखते हुए कि सिर्फ वकास मकसूद और आमिर यामीन जैसे मीडियम पेसेस के साथ सेंट्रल पंजाब इस मैच में उतरा है। ऑल्दो अहमद दानियाल, हुनैन शाह, उमैद आसिफ, ये तीनों जो बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर्स, वो बाहर बैठे हुए हैं। पेस के अलावा आपके पास ऑप्शन बहुत कम है। अगर आपको नए बॉल से स्विंग नहीं मिलता है तो फिर बहुत आसान हो जाता है आपकी पेस को निगोशिएट करना बैटर्स के लिए। और जिस तरह की सिंध की बैटिंग है, 2 ओपनर्स खेल रहे हैं, उमैर बिन यूसुफ, सऊद शकील, फवाद आलम, साद खान, सरफराज अहमद को 7 नंबर पे आना है, आसिफ महमूद बहुत शानदार ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, तो बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। तो कुछ जादू करना होगा मोहम्मद अली को एक एंड पे। मोहम्मद अली ने कदरे बेहतर बॉलिंग की है। आमिर यामीन और वकास मकसूद के मुकाबले में आगे बॉल्स गिराए हैं और मौका क्रिएट भी कर दिया था मोहम्मद अली ने। शानदार तरीके से खेले हैं, ये कमाल की टाइमिंग है 4 रन के लिए। साइम अयूब को अगर आप विड देंगे तो वो बहुत ही जालिम प्लेयर है ऑफ साइड पे। बहुत पहले ही बॉल को चेक कर लिया था, पीछे बॉल था और खास तौर पर विकेटों से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर जा रहा था बॉल, उसका भरपूर फायदा उठाया। हेड स्टिल, पूरा शानदार कट, जितनी तारीफ की जाए इस कट की, पूरा मिडल हुआ और पलक झपकते ही बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। यहाँ बैट स्पीड भी बहुत शानदार रही। स्क्वायर पे जब भी ये खेलते हैं तो कई प्लेयर्स की हमें याद दिलाती हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मुझे सईद अनवर की याद डेफिनेटली दिलाते हैं। जो टच प्लेयर हैं, टाइम बहुत शानदार करते हैं, टाइम इनके पास है, बहुत अच्छा देखते हैं बॉल को, नज़र अच्छा आता है। और अब ये आर्ट अगर ये सीख लेंगे कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को छोड़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका डिफेंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर साइम अयूब इस सीजन में ये चीज़ अगर सीख लेंगे तो आई थिंक ये बहुत ही बड़े प्लेयर बनेंगे। जैसे कि आप पहले कह रहे थे कि इनको पैशंस की ज़रूरत है, इनके पास शॉट्स हैं, इनके पास एनर्जी है, यंग हैं, टैलेंटेड हैं, तो इनको सिर्फ विकेट पे ठहरने का आर्ट आना चाहिए और इसी एक चीज़ को लेकर ये बहुत लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं। कासिम अकरम नेशनल T20 में कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में मोहम्मद साद कप्तानी कर रहे हैं। इसके बाद अजहर अली टीम को ज्वाइन करेंगे, वो कप्तानी करेंगे।
अच्छी कप्तानी की थी इन्होंने नेशनल टी20 में। मुश्किल मरहलात, एक मुश्किल टाइम पे कप्तानी सौंपी गई थी और टीम ने जिस तरीके से कमबैक किया ये शानदार था। ऑफ कोर्स उसका बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो शोएब मलिक को भी जाता है, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया था टीम को, क्योंकि पिंडी लेग में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स रहे थे, लेकिन मुल्तान में जाके तो कमाल ही हो गया था। 13 ओवर्स के बाद 48 बगैर किसी नुकसान के सिंध। ये एक अच्छा तजर्बा है किसी नौजवान को डोमेस्टिक में कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देना, और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बा हो सके क्रिकेट में। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कासिम अकरम के लिए, और उन्होंने यकीनी तौर पर शोएब मलिक के तजर्बे से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। आपकी ज़िंदगी क्रिकेट से ही रही है, मैंने तो मज़ेदार बात करने के लिए कहा था आपको। डेरा गाजी खान के बारे में बताइए हमें, और बताइए कि वहाँ पे क्या मशहूर है, क्या किस तरह के खाने मशहूर हैं वहाँ पे, किस तरह के लोग हैं वहाँ पे। मेरा क्योंकि जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ है। डीजी खान के 2 इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स भी काफ़ी मशहूर हैं। अरसलान कादिर इंडिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच आ चुके हैं, और एक दौर था डीजी खान के वॉलीबॉल प्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, और इंडिया की एक दफ़ा टीम भी डीजी खान आई थी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ताल्लुक स्पोर्ट्स से रहता है। अली शान और डीजी खान की बहुत सारी ऐसी यूनिक बातें हैं जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो पंजाब का ऐसा शहर है जो चारों सूबों को मिलाता है, और एक साइड पर सिंध, एक साइड पर बलूचिस्तान और एक साइड पर केपीके, और ख़ुद वो पंजाब का आखिरी डिवीज़न। और सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी टैलेंट मौजूद है। एक दौर था 92 में, मुझे याद है, हमारे सीनियर्स के साथ यूनुस खान कराची से वहाँ से आके सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, और काफ़ी मेहनत की उन्होंने। वकार यूनुस वहाँ पर आते रहे, और तकरीबन 22 टेस्ट क्रिकेटर्स डीजी खान में आकर खेल चुके हैं। बातों ही बातों में विकेट हासिल कर ली है। खुर्रम मंजूर शायद थोड़ा लेजी हो गए, थोड़ा लूज शॉट, बहुत आसान से समझ गए थे कि बहुत आसान बॉलर है मोहम्मद साद। थिक आउटसाइड और एक अच्छा कैच भी आबिद अली की जानिब से, और एक ऐसी विकेट की तलाश थी, और किसने सोचा था कि मोहम्मद साद ब्रेक थ्रू दिलाएंगे। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि बल्लेबाज इनको ज़रा आसान हदफ लेंगे, और मोहम्मद साद ने अपने तजर्बे का भरपूर फ़ायदा उठाया। अली शान को आगे लाए, स्लिप को ऊपर लिया, और थोड़ा सा बाहर आउट स्विंग निकला, उसको थोड़ा रिलैक्स खेले। खुर्रम मंजूर जैसी बड़ी मछली हाथ आई है इस बार। 37 बॉलों पर 15, 48 पर 1 सिंध। उमर बिन यूसुफ नए आने वाले प्लेयर, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किलफुल, काफ़ी प्रॉमिसिंग है। उमर बिन यूसुफ 29 मैचेस, 1695 रन, 500 और 550 कन्वर्जन रेट बहुत शानदार है। ये 174 उनका बेहतरीन स्कोर एवरेज। जैसे जैसे क्रिकेट खेलते जाएंगे आई एम श्योर जितने स्किलफुल हैं ये बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद साद ने सरप्राइज़ किया है सबको, अपनी टाइट लाइन और लेंथ से थोड़ा सपोर्ट भी मिला उनको खुर्रम मंजूर की लेजी एफर्ट से, क्योंकि ऐसे बॉलर हमने देखा है उनके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी होती है, और ऐसा पेच जहाँ पे थोड़ा घास मौजूद हो, थोड़ा ड्राई घास हो, बॉल थोड़ा फंस भी रहा हो, वहाँ पे ये खतरात डालते हैं। इस बॉल को खेल दिया फाइनल की जानिब, 4 रन मिल जाएंगे। अंदर आया बॉल, इन स्विंग हुआ, लेकिन लाइन थोड़ी सी लेग स्टंप पर थी।
लेग बाई का 4। एक बार नजर डालते हैं विकेट पे। खुर्रम मंजूर देखिए बहुत ही लेजी एफर्ट, बहुत ही स्लो आए बॉल पे, लेट आए। ये ऐसी बॉल पे विकेट गंवाना ये आपकी बदकिस्मती है। अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं, प्लान करके सेटअप करके आउट किया गया है। कीपर को ऊपर बुलाया गया और यही ब्यूटी है जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं, आपको सेशन दर सेशन, कभी स्लो सेशंस होते हैं तो आपको डिफरेंट पैंतरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इसीलिए इसको टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है, जो 5 डे क्रिकेट होती है। ये आपका टेस्ट होता है हर चीज़ का, आपकी फिटनेस का, आपकी स्किल का, आपकी स्ट्रैटेजीज का, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी का। और अगर अली शान जैसे विकेट कीपर हों जो कि बहुत चालाक हैं तो और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है एज अ कैप्टन। एक बार फिर हम नज़र डालेंगे जिस तरीके से इन्होंने थोड़ा पहले इशारा कर दिया था। देखिए ऊपर खड़े हुए थे और उनको शायद कदमों का इस्तेमाल इससे पहले कर रहे थे खुर्रम मंजूर, तो अपने आप को ऊपर लेके आए, ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। और जिस तरीके से भागते हुए वो गए थे, लगा ऐसे ही था जैसे ये इनका ही आइडिया था। पूरा प्लान बनाया खुर्रम मंजूर को फंसाने का अली शान और साद ने, जिसमें कामयाब रहे वो। और अली शान की एनर्जी काम कर गई इस बार और मुकम्मल जान डाल दी मैच में ये विकेट हासिल करके। अच्छा दिफा है साइम अयूब का, पिछले कदमों पर खेले इस बॉल को, बैकफुट डिफेंसिव स्ट्रोक था। दिफा बड़ा मजबूत साइम अयूब का। मोहम्मद साद तजर्बे का भरपूर फायदा उठाते हुए, शानदार एक्सपीरियंस और उसका भरपूर फायदा उठाया। वकास मकसूद की जगह खुद बॉलिंग पे आए और एक विकेट हासिल की। अच्छी रनिंग है, ये चांस हो सकता है ये। ओह, और बैकअप पे भी फील्डर बहुत बाउंड्री लाइन पे है, लेकिन ओवर रन कर गए थे साइम अयूब, जिस वजह से एक्स्ट्रा रन नहीं ले सके, मारते ही भाग गए थे। ये अच्छी गेम अवेयरनेस है। तैयब ताहिर का शुमार अच्छे फील्डर में होता है, इनकी थ्रो बहुत तेज है लेकिन फिर भी चांस ले गए। सिंध अभी भी ट्रेल 375 रन के हैं। 150 रन के डेफिसिट से आपको फॉलो ऑन से बचना होगा। ये चीज़ सबसे पहले, जो पहला एम होगा यहाँ पे जहाँ से सिंध का, वो फॉलो ऑन से बचना होगा। और क्योंकि अभी इस विकेट के बाद काफ़ी पम्प्ड अप हो गए हैं सेंट्रल पंजाब के फील्डर्स भी, एक नई एनर्जी सी आ गई है इस टीम में, और विकेट्स ये करती हैं, एनर्जी लेके आती हैं। और तमाम प्लेयर्स के चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है कि एंजॉय कर रहे हैं फील्डिंग में। मौसम भी खुशगवार हो गया है, आइडियल क्रिकेटिंग मौसम। दाएं जानिब आपके मोहम्मद असगर बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, पाकिस्तान के लिए भी उम्मीदवार रह चुके हैं, लेकिन रास्ता भटक से गए, जाने क्या हो गया। आप चेहरे के तासुरात काफ़ी करीब से पढ़ते हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं इनकी फील्डिंग का फ़ैन हूँ। इनके लिए
ऊपर कैच आ जाए तो मोहम्मद असगर नीचे आ जाए, कैच नहीं छोड़ते, बड़े बड़े हाथ हैं, इनसे हाथ मिलाएं तो पूरा हाथ गुम हो जाता है। बहुत शानदार फील्डर है, गुड लुकिंग। साउथ यहाँ काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, और क्यों ना हो, नेशनल T20 चैंपियन बन के आई है सिंध की साइड इनकी कप्तानी में। एक एक्सपेरिमेंट, एक नया लुक सिंध की साइड का। गुलाम अली बहुत शानदार कोच रहे, अच्छी स्ट्रैटेजीज हमें देखने को मिली सिंध की जानिब से, और ज़्यादा मैचेस चेज करते हुए जीते हैं। ये एक टीम की स्ट्रेंथ बताती है आपको। यहाँ पे 15 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 53, 1 विकेट गवा के सिंध। खुरम मंजूर पवेलियन लौट गए जल्दी, 37 बॉलों का सामना किया 15 रन बनाकर, और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 33 रन पर खेल रहे हैं साइम अय्यूब। 48 बॉलों पर ज़्यादा अच्छी शॉट्स लगाई साइम अय्यूब ने, और बॉलें और रन उनके ज़्यादा फासले से नहीं है। रन रेट को बड़ा मेंटेन करके चल रहे हैं साइम अय्यूब। एक स्लिप, एक गली, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, ड्राइव शानदार तरीके से की है, तो रन्स को अब ड्राई करने के लिए जा रहे हैं। ये प्लान लगता है यहाँ से कि साइम अय्यूब के जो रन्स हैं उनको रोका जाए, क्योंकि ड्राइव शानदार तरीके से मारते हैं, फ्री फ्लुएंट प्लेयर हैं, और अगर ऐसे प्लेयर के जब आप रन्स ड्राई करते हैं तो वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जाता है, और यही इम्तिहान है। इसी पेशेंस की बात हम करते हैं। यहाँ पे अगर ये अब्दुल्ला शफीक की इनिंग से सीखें, बुरे बॉल का वेट करें, क्योंकि वक्त बहुत मौजूद है और लंबी इनिंग खेलनी चाहिए। बिल्कुल, अब साइम में वो पोटेंशियल मौजूद है, खेल सकते हैं, एतमाद की कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है पैशन, सब्र। इसी ड्राइव, थोड़ा लंबा हो गया बॉल, इसी के लिए फील्डर मौजूद है वहाँ पे, शॉट एक्स्ट्रा कवर पे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। आपको छोटी छोटी हर बात से सीखना होगा, अपने अपोनेंट से सीखना होगा। यहाँ पे तो साइम अय्यूब को डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक की इनिंग से सीखना होगा। मैं बार बार ये कहूँगा, क्योंकि वो एक लर्निंग है, एक टेक्स्ट बुक बैटिंग जिस तरीके से हम कहते हैं, वो अब्दुल्ला शफीक ने इस इनिंग में करके दिखाई है। टेक्निकली बात करें, स्किल की बात करें, पेशेंस की बात करें, उस इनिंग में हर चीज़ मौजूद थी। ऐसे बॉलर्स को ध्यान रखना होता है, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब आप नॉन रेगुलर बॉलर खेलते हैं तो आप थोड़ा इजी हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और उसी असना पे अपनी विकेट गंवा देते हैं। बहुत दफ़ा हमने देखा है। तो अच्छा बैटर वही होगा जो इनको और तरीके से केयरफुल होकर खेलेगा। बिल्कुल इस तरीके से अपील बहुत शानदार थी, लेकिन बल्ले से बॉल दूर था, और इसी लैक ऑफ कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल सही, आपने अभी सही निशानदेही की। इससे पहले खुरम मंजूर इसका शिकार हो चुके हैं, थोड़ा सा लेजी आए और बॉडी अवे खेल गए, बाहर निकलते हुए इस बॉल को डबल माइंडेड हो गए, गालबन नहीं खेलना चाह रहे थे, फिर जाती जाती बॉल को ड्राइव कर दिया। बॉल उनके बल्ले के बिल्कुल पास से अली शान के हाथों में। ये बेहतर है, ये बेहतर डिफेंस है। 16 ओवर्स के इख्तिताम पे 54 पर 1 सिंध। Just the one wicket for skipper Saad. His gentle medium pacers have really posed difficulty to all the three batters so far. Not enough pace,
and the right lengths. Muhammad Ali from the pavilion and 2 slips in a gully. Doesn't require a lot of width, Saim Ayub. This one was a bit tight to his body, but still went with the stroke and finds the boundary. Nice shot by Saim Ayub. It was close to him, but he went for this shot. This is his shot. We've seen him in T20. He has played this, and he couldn't hold himself to play this shot. Nicely done in the end. Change in field immediately. They've dropped the fielder at point onto the boundary. Still a couple of slips in place. That angle around the wicket. Ali is looking to cramp him up. That eludes Ali Shan. That'll be a bye. Extra effort by Ali, but on the wrong line. I think what he was doing, he wanted to pitch him short, like into his ribs. He went offline. He went offline. Yasir, now we're into the 17th over. That new ball, it didn't quite have the effect that Central Punjab must have been hoping for. Do you think, is it time for plan B? Just pull the length back a little bit, play with the patience of the batters, or just bang a few in short, just try to see how much bounce they can get or make them uncomfortable, especially Saim, who's been there for a while. 3 slips in a gully for new batter Umair. Good line by Ali. Yes, Faisal, they can make a plan of this short pitch bowling, and I think if you see how Khurram Manzoor got out, just he played nothing short in the end. He was lazy, he was tired, he was looking tired, and after this we'll see the replay. Well, ball shaped away, nicely played. You're talking about that Khurram Manzoor dismissal. Look at that. Yeah, he was lazy. He looked tired. There was no intent in this shot. Whether he was blocking the ball, he was in two minds. He should have left the ball. But my point is, they've fielded for a full day yesterday, and if bowlers bowl with a plan and check them. Nice flowing drive. Square of the wicket. Umair gets himself off the mark. And that's what fresh legs can do. He's not worried about he's fielded for whole day yesterday, but this shot was some shot. In between point and gully. Good shot. Ali won't be disappointed with that shot, Yasir, because this is what he wants Umair to play early in his innings. Out of his comfort zone, out in front of his body. That'll give him a chance if he gets the ball to move a little bit. There's 3 slips in waiting. Not at all. And this is a no ball. It clearly showing that Ali is putting effort. We are seeing him bending his back. He created a very good opportunity when Saim was dropped. Here's the no ball. Let's see where the front foot is a bit marginal, I would say. Couldn't see clearly. The line belongs to the umpire, though. But you're right, Ali is stretching himself. Beautifully played once again.
Quaid coming into the shot nicely, got on top of the bounce. Good shot again. He didn't try to hit. He just timed it. End of over. 66 for 1. Didn't try to hit too hard. This is Ghulam Ali, Sindh's coach, also known as Gullu Bhai. I've played a lot of cricket with him. And in PIA, What's your nickname, Yasir? Yasir. Badshah? Well played, Saim. Again, he invited him to drive, but he held himself. I think this is a very right tactic by Saim. He's holding himself. He's not going for every shot. He's just playing his shots. Once again out in front. This is what Saad wants him to do. He's got the protection there. I think Saad has had enough now. This is his 6th over, and clearly he looks a bit tired now. Maybe this time for bring in a regular bowler like Waqas. How does a bowler like Saad can disrupt the rhythm of a batter? He's so slow. I think for my liking, 2-3 overs are very tricky. Early on, Saad can disturb you 2-3 overs. After that, obviously batsmen get settled and there are a lot of runs offered. So one should not miss that opportunity. The one in the slot or one for the cut. Just like that. It was on the back foot. Very short pitch delivery and gets boundary. I think that is his 2nd boundary, Umar bin Yusuf. It was in the air for a little while, but it was away from the fielder. Like Yasir was saying, dropping in length. Saad, this is not his strength. Umar just flayed it in front of square. For a bowler like Saad's pace, that point fielder could easily have been in front of square where that ball went. He was behind square and went through the gap. Well left, yeah, lot of time. It was slow, and though the shot was in the air, but the fielder was away. So that's my point. If you bowl on a regular bowler, his pace will be vary. So Saad did well for his spell, I guess. Again outside the off stump, left him alone. End of over number 18, 71 for 1. Yasir was making a point in the last over about Saad's spell. It's also interesting to see when Saad will bring on Osama Mir. Because in the morning we were chatting to Zahid Mahmood, the Sindh leg spinner. He said he found a little bit more bite with the newer ball yesterday morning. And then this morning as well, he came and took a wicket when the ball was about 18, 19 overs old. Probably is it good time to try what Osama can do with this slightly newer ball? That's not a bad idea. We know him. He has zip in his ball. And Waqas Maqsood from the pavilion end now. Beautiful shot into the gap. Through mid-wicket area, 4 runs for Saim Ayub. This is his. Saim Ayub really got onto it nicely. Look at that, straight bat.
Not much use of wrist, just the follow through was straighter, and the balance is so good. He's really lining them up quite nicely. That left arm over the wicket angle really got his head into an excellent position. Just a fine tickle. Will earn him another single. And the good thing about that shot was he played with a straight bat. He didn't break his wrist. So much time that he can play with a straight bat. There we are. He lined it up beautifully. That's why he was able to bring that bat straight down towards wide of mid-wicket. That's excellent. Elegance. Nicely played by Umair bin Yusuf. These two are very good players. They know each other, they complement each other. We have seen in T20, they had some good partnerships as well. So this is a good time for Sindh. This is a time they can build a good partnership here to ease the pressure. Two slips in a gully. Ring of fielders on the offside. Cast persisting with that fuller length. But that lack of pace, that's very alarming in the central Punjab bowling lineup. We already discussed that. Amir Yameen, Waqas, they don't have that kind of pace. This wicket is not the quickest of Pindi wickets that we can sometimes have it, but that lack of pace really, especially with the older ball, will make things very, very difficult for central Punjab. He bent his back on this ball. I think central Punjab clearly missed the trick here. They could have included a pace bowler if they have in the dugout. But the idea was the pitch was green, and Waqas Maqsood has a very good track record on green pitches. But I guess this pitch is not helping him a lot. Paul Franks and Richard Stonier in the central Punjab dressing room. Full and wide, couldn't find the gap. Hits it straight to the fielder. 76 for 1. Amir Yameen brought back to the attack from media end. I think it's a good change. He's kitty. He can surprise batsmen, but let's see how he bowls. Amir Yameen have bowled 4 overs with new ball. He was stringing the ball, but couldn't get any wicket. Let's see what he does with the semi-new ball. Starts off with the no ball. They've dropped down that fielder at point for Saim Ayub. He's shown a lot of strength in that area, so there's always a single available. Closing in on that 50, Saim Ayub on debut. And in good time as well. 45 of just 58 deliveries. Amir Yameen normally likes to bring the ball into the right-hander. Persisting with 2 slips and 3 fielders in the ring on the offside. A little bit of protection on the onside as well with that mid-wicket fielder. Hitting that hard length. Amir Yameen played well. Umair bin Yusuf. You're talking about young, fresh legs. These two are always on the lookout
of quick runs. Omer, as soon as he hit the ball, he was looking for that one. On that occasion, Saim just called very loudly that he didn't want that run, but that's good intent as well. You have to keep the game moving. Talking about the moving game, moving ahead. For that, if we talk from Central Punjab point of view, they desperately need wickets. They cannot allow the partnerships. But the way these two are playing, it's getting difficult for them. This time they realized the fielder was on the back foot. It's Waqas Maqsood. Quick to pounce on that. This is really good running between the wicket, between these two. And you're talking about moving the game from Central Punjab's perspective. They need wickets. But Sindh, they're almost batting at 4 and over. That is also good progress. Absolutely. These point system really change the mentality and mindset of players while batting. This is a good sign. Players are playing with intent. They have target in their mind. Yes, it is a 4-day cricket, but you have to play with a good strike rate. This is very important. Presenting full face of the bat. Very compact defense as well. We know a lot about Saim's stroke play, but this innings has told us a lot about his solid defense as well. Yeah, he played according to situation. He's playing like a 4-day cricket. We can see deep point here. He's placed on the line. Edge, but didn't carry. Just fell short of Abdullah Shafiq. He got a knock on his finger. Abid Ali will retrieve. But just a couple of runs for Saim. That was good delivery by Amir Yamin. But the good thing was it didn't carry for Saim Ayub. And the good thing was he played it with soft hands. He didn't push the ball. That's why it didn't carry. Like escape for him, I guess. Yeah, he didn't go hard at the ball. His hands were pretty tight to the body. That meant that the ball wouldn't carry. We watched Saim Ayub, look at that. He was hardly pushing at it, just a little bit of a tiny nibble. Not with hard hands though. That's why the ball didn't carry. Little treatment for Abdullah Shafiq as well. Got a knock on the finger. Did he split the webbing? You can't see from here, but he is getting the treatment. It's the life of a fielder in slip. Yeah, he did cut the webbing. You can see blood pouring out. You'd probably have to leave the field. Yeah, this point you call it the webbing. Yeah, this is very sensitive area where ball hits. If you don't take it with good grip or loose hands, it can cost you injury. Awkward bounce just in front of him. That's never easy. It's always a very difficult bounce or area where you have to stop it. You have to stop the boundary. Sometimes it happens just like here.
Straying onto the pads, clipped away very neatly. Will it have enough legs? Just about. Just trickles over the fence. And that's 50 for Saim Ayub. Excellent batting by Saim Ayub. Very elegant, pleasing on eyes. Played according to situation. New ball he played with positive intent, and his shots were treat to watch, especially off the toes, cut shot, drive. He played all the shots. He has all the shots in the book, and Sindh dressing room must be very happy for his 50. A good prospect, Saim Ayub. Impressive in T20s, and now 50 on debut of first class cricket. It's a big achievement for him. It's a good start, and I'm sure it's the first of many from Saim Ayub. Just the 61 deliveries, another good feature. These modern day batters, even in first class cricket, they like to move the game forward. Just some glittering stroke play all around the pitch. Square of the wicket on the offside, and the flicks that Yasser was talking about. Still some movement for Waqas, but not at a quick enough pace to deceive the batters. Wide enough, but couldn't find the gap. Still managed to sneak a single. And what a fielding! It was very good shot, nicely timed, and yeah, that was difficult ball to stop. Qasim Akram that was. And he's a very good fielder, Qasim. He took some stunning catches in National T20 as well. Qasim Akram. Good all-round cricketer. He can bowl as well. That gap is open for Saim. Looking more and more comfortable. This is the good time to cash in. The afternoon session generally is good for batting. And when you're set in, you've got your eye in, the bowlers are not threatening. At this pace, definitely Waqas Maqsood is not threatening both the batters. Neither is Amir Yamin. It's a good time to score big here for these two. Well played. Right under his eyes. The good thing about Saim Ayub, that he times the ball very well, and he plays under his eyes every time. His point of contact, both of these. He's also playing well, Umair. Umair is playing his 29th first class game. He has 500s. Proactive once again, good line, good length. Just that use of wrist allow him to hit the ball into the gap and take a single. That will end the over of Waqas Maqsood, 88 for 1. Saud Shakil is the next man in. Since bowlers who toiled hard, they're putting their feet up, a well-earned rest for them. We saw Zaid Mahmood in the picture. Saim Ayub
innings really comprised of some beautiful strokes, some trademark cut off the front foot, the drives, and this one again against Muhammad Ali, the no-look shot. And this was probably the pick of the strokes, the on-drive. Absolutely. Well bowled, but no ball again. Whenever they put more effort, they bowl no ball. This has been feature of Punjab's bowling since morning. How many no balls they have been bowled? Fourth no ball of the innings, third by Amir Yamin. Not many. Just a little bit of wobble in the air from Amir Yamin, but too wide. You're talking about Umair bin Yusuf as well. This is his 29th game. He's got 5 first-class hundreds. Every time you watch him play, he looks so good. Just at times we've seen him, he loses his wicket when he gets set. Doesn't convert them all the time. Ahmed Danial is in place of Abdullah Shafiq. He's treating himself. Getting treatment for his thumb. This was a good shot again, but straight into the hands. I think Amir Yamin is getting a bit movement here. This was a good idea by him, a very good idea. Inviting him for the drive, he went for it. Yeah, Amir Yamin wouldn't mind seeing Umair bin Yusuf play a stroke like that. Just a slight movement in anything in the air. He's got plenty of fielders waiting behind square. 2 slips Senegali and a backward point. Yeah, he must be very disappointed because this is a very good pitch. And we know that he can play long, he can bat long, he has a lot of runs under his belt. But today, he was a bit tired. The grip of Amir Yamin. He's showing it to the batter all the way. An outswinger, but too wide. Amir Yamin is a good, honest cricketer, a very hard worker. But to be part of one of the main 3 bowlers on a pitch like this, it's really Central Punjab probably improved the balance of their side at the expense of one more quick bowler. Do you think it will be a fair assessment? Yeah, you're right, but on the first day morning when we've seen the pitch, there was some fresh grass on it, but the foundation is very dry and strong. They missed the trick. Should have one more fast bowler, quick one, like Ahmed Danial or Umair bin Yusuf or Hunain Shah. All of them are quick. Umair Asif and Hunain Shah. Ahmed Danial can bowl, but he generally play. Look at the wicket, like Yasir was saying, it's pretty dry. The grass is not green, so it can be deceptive. It'll be interesting to see what the heat does to this surface. Will it crumble on day 3 and 4? In the air and gone. This is the stroke that Amir Yamin was tempting Umair for.
He fell for the trap, and Qasim Akram made no mistake. Yeah, that's what we were talking about. This shot, this idea, and Qasim Akram. Having said that, he is one of the best fielder in the side. Didn't miss this. It was a difficult opportunity, I'm telling you. Not easy. The ball was high. He adjusted himself. The jump was, the timing was very good. Umar bin Yusuf gone for 13. 89 for 2. Players will take drinks. सऊद शकील मैदान में पहुंच गए हैं। दोनों अब बाएं हाथ के बैट्समैन होंगे। बाएं हाथ की इस पार्टनरशिप में साइम पहले से ही 52 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। कल सिंध के बॉलर्स के साथ मसला था कि वो T20 के बाद एडजस्ट नहीं कर सके थे रेड बॉल की लेंथ को, और आज जो बैट्समैन हैं, ये जो शॉट था इससे जाहिर होता है कि वो T20 का असर अभी बाकी है, क्योंकि उमर बिन यूसुफ जैसे मुस्तनद खिलाड़ी से आप इतने लूज शॉट की तवक्को नहीं करते। बहुत ज़्यादा अपने जिस्म से दूर खेलने के लिए चले गए। अच्छा कैच भी लिया कासिम अकरम ने। 3000 से ज़्यादा रन्स बनाए हुए हैं, 11 सेंचुरियां हैं और औसत बड़ी आला इस टीम में फवाद आलम के बाद सबसे अच्छी औसत सऊद शकील की है। शानदार फील्डर हैं कासिम अकरम, और कोई गलती नहीं की उन्होंने। निहायत ही वन ऑफ द बेस्ट फील्डर कहा जाए तो गलत ना होगा इस साइड में। कासिम अकरम आखिर तक बॉल पर नजर रखी। साहिम अयूब ने अब तक बड़ी मुतासिर कुन इनिंग्स खेली है। अपने स्ट्रोक खेलने से भी गुरेज नहीं किया, अपनी जो ताकत है उस पर समझौता नहीं किया। ये एक अच्छे खिलाड़ी की जाहिर है कि निशानी है, और इसके अलावा इनका डिफेंस अच्छा नज़र आया है, सब्र से भी काम लिया है। सेंट्रल पंजाब की इस टीम में रफ्तार ज़्यादा नहीं है, लेकिन तजुर्बा है। 2019 से जब से ये नया सिस्टम मुतारिफ हुआ, वकास मकसूद ने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं 63। जफ़र गौहर इन दिनों काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं ग्लोस्टरशायर के लिए।
दूसरे नंबर पर हैं बिलाल आसिफ, जो हैं ये सेकंड 11 में इन दिनों नजर आ रहे हैं। ये नो बॉल निकली। वकास मकसूद इनको स्विंग करने चले गए थे। ये कोई अच्छे आसार नहीं है। अब तक ये 5वीं नो बॉल है। 7 एक्स्ट्रा से सेंट्रल पंजाब की पूरी इनिंग्स में सिंध की जानिब से, और 10 एक्स्ट्रास पहले ही हो गए। अभी ये 23वां ओवर है पंजाब की बॉलिंग का। जी खासी नो बॉल्स देखने को मिली हैं। पहले 3 नो बॉल्स करा चुके हैं आमिर यामीन और ये अब वकास मकसूद। कासिम अकरम ये 3D क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और पॉइंट पर फील्डिंग करते हैं, और अपने दाएं बाएं हाथ दोनों जानिब इंतहाई मजबूत और मुअस्सर अच्छी एनर्जी लेकर आते हैं फील्ड पर दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी। लेग साइड में खेलने का इरादा जाहिर किया था। गेंद जाहिर है रुकेगी जब अब क्रॉस द लाइन जाएंगे। अभी तक कप्तानी आपको कैसी लगी है याज मोहम्मद साद की? तजर्बे का भरपूर फायदा उठाया मोहम्मद साद ने। गो के अच्छे रन्स नहीं कर पाए, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने जल्दी तब्दीलियां की हैं। पहले मोहम्मद साद ने आमिर यामीन और वकास मकसूद को जल्दी जल्दी बदला है, जिसका भरपूर फायदा उठाया उन्होंने। उम्दा शॉट, उतनी उम्दा फील्डिंग भी इसे बाउंड्री की तरफ जाने से रोका। कासिम अकरम ने रास्ता रोका इस गेंद का। काफी तेज शॉट था, बड़े क्विक आए बॉल के ऊपर कासिम अकरम। बॉल उनके सीधे हाथ को छूता हुआ। ये वो फील्ड पोजीशन है जहां पर आपको हमेशा एंटिसिपेट करना पड़ता है, और बॉलर की गेंदों पर भी आपको नज़र रखना ज़रूरी होता है। हम अक्सर बात करते हैं एंटिसिपेशन की। अच्छा ओवर वकास मकसूद का। 23 ओवर्स के बाद 91 पर 2 सिंध। खुरम मंजूर जल्दी लौट गए, थोड़ी सी जल्दी कर गए। बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ा उन्होंने और 15 रन पर उनकी इनिंग का खात्मा किया मोहम्मद साद ने। साइम अयूब मुस्तनद बल्लेबाज बनकर सामने आए हैं। पहला मैच खेल रहे हैं। डेब्यू में 50 रन की शानदार बारी खेलकर विकेट पर मौजूद हैं इस वक्त, और एक आइडियल आगाज उनको फर्स्ट क्लास का मिल गया है। उमैर बिन यूसुफ वसी तजर्बा है उनका, 5 सेंचुरियां 5 फिफ्टियों के साथ, लेकिन आज जल्दी की उन्होंने। साउथ शकील साथ हैं अब। सरफराज अहमद जो हैं, देखना है वो किस नंबर पर खेलने के लिए आते हैं। अभी हालिया कौमी T20 में 7वें नंबर पर बैटिंग कर रहे थे सरफराज इस बैटिंग ऑर्डर में। इसके बाद 2 लेफ्ट हैंडर्स मौजूद हैं, साद और ये अच्छा स्क्वायर कट। ये मुसलसल फील्डर यहाँ खड़े किए रखा है इस स्वीपर पोजीशन पर, क्योंकि स्क्वायर कट खेलने का खासा शौक है साइम अयूब को। और ऑफ स्टंप के बाहर जो सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स हैं वो इनको टेम्प्ट करते हुए भी नजर आए, विकेट खरीदने के मूड में है। और सेंट्रल पंजाब के तमाम बॉलर्स ने बल्ले के जरा नजदीक बॉल किया और कोशिश की है कि बैट्समैन उनको खेले, और इसमें किसी हद तक वो कामयाब भी रहे हैं।
या सऊ शकील जो है, इनके हाथ में भी साइम की तरह जो बल्ला है ये बहुत ज़्यादा वजनी नहीं लगता, क्योंकि ये जो ज़्यादातर हमने देखा है जो रिस्टी बैट्समैन होते हैं, साउथ भी इनका भी रिस्ट वर्क बड़ा आला है। रिस्टी बैट्समैन जो हैं ये कम वजन का बल्ला इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों ही खिलाड़ी जो हैं इस मामले में बड़े हुनरमंद हैं, अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करना जानते हैं। काफ़ी सूदमंद साबित होता है हल्के वजन का बल्ला, कलाइयों का उसमें भरपूर इस्तेमाल काम में लाते हैं। सईद अनवर काफ़ी मशहूर थे कलाइयों को इस्तेमाल करने में, और अब साइम अयूब नज़र आ रहे हैं। इस बार अच्छी डिलीवरी इंडे पर, लेकिन अपनी कलाई को इस्तेमाल में ले आए सऊ शकील। उनके पहले 2 रन्स। सईद अनवर ने जो उनका रिस्ट वर्क था वो इसकी वजह करार दिया करते थे, क्योंकि उन्होंने टेबल टेनिस जो है वो बचपन में बहुत खेली थी। जिस ज़माने में वो तेहरान में थे, क्योंकि सईद अनवर का जो बचपन था वो तेहरान में गुजरा था, ईरान के दारुल हुकूमत में, तो वहाँ टेबल टेनिस वो मुसलसल खेला करते थे। क्रिकेट उन्होंने बाद में आकर खेलना शुरू की जब वो वापस कराची आए। यहाँ जो बहुत से खिलाड़ी हैं, ख़ासतौर पर क्रिकेटर्स, वो अपनी आई साइट को सेट करने के लिए टेबल टेनिस का सहारा लेते हैं, और आप स्क्वाश भी खेल सकते हैं अपना जो रिस्ट वर्क है बैटिंग में बेहतर करने के लिए। और ये शाह फैसल को भी हमारा मशवरा है, स्क्वाश खेला करें। अभी भी कुछ कुछ होता है जब आप गुड लेंथ पर गेंद को गिराते हैं ऑफ द सीम, तो परेशानियां होती रही हैं बैट्समैन के लिए। इससे अच्छी पिच हो नहीं सकती थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इस महा मुकाबले के लिए। 2 हैवीवेट्स आमने सामने हैं, सिंध और पंजाब, और स्पोर्टिंग पिच है रावलपिंडी की। फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है, स्पिनर्स के लिए बाउंस है, और अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं अब्दुल्ला शफीक की तरह तो आप रन्स भी बना सकते हैं, डबल सेंचुरी भी। बिल्कुल, तमाम शोबों में विकेट में जान है, और तमाम प्लेयर्स के लिए मौका है, और थोड़ी सी मूवमेंट भी हर टाइम देखने को मिलती है। ये लगी है बैट पर, सवाल पूछ रहे हैं और अंपायर ने इत्तेफाक कर लिया। आमिर यामीन ने इस बार विकेट टू विकेट गेंद की, और सऊ शकील जो हैं, क्या ये गेंद बल्ले पर लगी थी, ज्यादा खुश नहीं थे अंपायर के इस फैसले पर। वापस जाते हुए सिंध के कप्तान, काफी जोरदार अपील थी, अभी तक एंगल बना रहे हैं बैट का, कैसे खेलना चाहिए था, वो थोड़ा सा अंदर आया बॉल। बहुत जोरदार अपील, आमिर यामीन की तमाम प्लेयर्स इकट्ठे हुए। यहां देखना होगा अंपायर की उंगली फिजा में खुली है, लेग स्टंप को छू रही है या कि नहीं। जोरदार अपील थी। जी हाँ, अंपायर के जहन में एक तो शुबा जो है शुरू में ये रहा होगा, देर से आउट जो दिया गया कि शायद ये गेंद निकल जाती लेग स्टंप की तरफ, क्योंकि अराउंड द विकेट जा रहे थे। लेकिन सऊ शकील चल दिए 2 पर, क्योंकि अंपायर का फैसला अटल है 94 पर 3।
सिंध की बैटिंग में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है फवाद आलम की। अजीम बैट्समैन विकेट पर पहुंचे हैं, अपने 200 मैचों के संग मील के भी करीब हैं। इस सीज़न में अगर ये सारे फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते हैं, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज़ भी इंग्लैंड के खिलाफ आ रही है, तो इनके 200 मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा रन्स हैं इस टीम में, सबसे अच्छी औसत है, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ हैं 41। मोहम्मद अली सामने वाले एंड से, पवेलियन एंड से बॉलिंग करेंगे। पिछली गेंद जो थी वो पड़कर बाहर निकली थी, इस बार ये अपनी लाइन को होल्ड कर गई और हम कह सकते हैं हक बजानिब थे अंपायर ये फैसला करने में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कद भी नहीं है सऊद शकील का। और काफी जोरदार अपील थी जिसने मजबूर कर दिया अंपायर को उंगली फिजा में बुलंद करने पर। या शायद को बड़े कद का अगर बॉलर होता आमिर यामीन की निस्बत, तो अंपायर शक का फायदा दे देते बैट्समैन को। सिंध को अभी खासी मेहनत करना होगी फॉलो ऑन बचाने के लिए। 279 रन्स उनका पहला हदफ है फॉलो ऑन से बचने के लिए। मोहम्मद अली, इनको विकेट मिल सकती थी अगर अब्दुल्ला शफीक वो मुश्किल कैच संभाल लेते दूसरी स्लिप में खाने के वक्फे से पहले। अच्छी कोशिश थी अब्दुल्ला शफीक की, थोड़ा लेट हो गए थे। फवाद आलम पहले बॉल का सामना करेंगे। साइड स्क्रीन की इस वक्त की जो हालत है उससे ज़्यादा मुतमिन नहीं है। फवाद आलम का ये ख्याल है कि उसकी पोजीशन बदली जानी चाहिए। अराउंड द विकेट मोहम्मद अली ने गेंद करने का फैसला किया था। वहाँ पर 2 साइड स्क्रीन है पवेलियन एंड के सामने, तो इशारा यही किया जा रहा है कि बॉलर अराउंड द विकेट आ रहे हैं, तो इसको ये जो आपकी टीवी की स्क्रीन है इसके बाएं तरफ इसको हटाया जाए। क्योंकि ये जो बैकग्राउंड भी आप देख रहे हैं वहाँ जो ट्रैफिक की भी आमदोरफ्त है, तो किसी वक्त जो बैट्समैन है उससे भी उसकी जो तवज्जो है वो बढ़ सकती। इनिंग्स के शुरू में आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है इन्हमाक की और सिर्फ गेंद पर नज़र रखने की। फवाद आलम का जो बैटिंग स्टांस है ये तो अब और भी ज़्यादा गैर मामूली हो गया है। ये पहले काफ़ी ओपन अप होकर खड़े होते थे शुरू में भी, लेकिन अब तो बिल्कुल जब बॉलर भागना शुरू करता है तो जो इनका रुख है वो आप कह सकते हैं ये स्क्वायर लेग अंपायर को देखना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इससे पहले चंद्रपॉल थोड़ा सा ऐसे नजर आते थे, लेकिन फवाद आलम मजीद लेग स्टंप पर होते जाते हैं जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। यह मुनफरिद अंदाज है फवाद आलम का पिच पर खड़ा होने का, लेकिन जाहिर है कि हमें पेड़ गिनने से नहीं आम खाने से गरज होनी चाहिए, और जिन टीमों में ये खेलते हैं उनको भी यही गरज रही है, क्योंकि रन्स इनको बनाना आते हैं। और ये लगी है पैड पर, ये 19-20 है। अंपायर साजिद आफरीदी ने अपील मुस्तरद कर दी। सोच विचार के बाद क्या ये स्टंप्स को मिस कर रही थी लेग साइड में।
बॉलर को बता रहे हैं कि बॉल काफी ज्यादा लेग स्टंप से ऊपर से गुजर रही है बॉल, थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है। जहां गेंद जो है वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं गिरी थी। जाहिर है कि 25 ओवर्स गेंद पुरानी भी हो चली है। तो ये 19-20 ही फैसला था, अंपायर ने शक का फायदा यहाँ फवाद आलम को दिया। तो अभी भी मोहम्मद अली को अपनी पहली विकेट की तलाश है 25 ओवर्स के बाद 95 पर 3। अच्छी रन औसत सिंध की देखने में आई है, 3.8 की। विकेटें गिरने के बावजूद बॉक डाउन नहीं हुए साइम अयूब, और जो अपना खेल है वो खेलते चले गए। तो यही सही तरीका भी है, यही आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है। क्योंकि जो बैटिंग है इस वक्त जो इंग्लैंड में हम देख रहे हैं, इस साल उनकी टेस्ट टीम ने काया पलटी है। टेस्ट क्रिकेट का एक नया अंदाज उनने दिया है। इंग्लिश कोचेज अब पाकिस्तान आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो जो इंग्लिश थ्योरी है बैटिंग से मुतालिक, वो यही है कि बैटिंग रन्स बनाने का ही नाम है। तो अगर आप विकेट पर हैं, आप रन्स बनाते चले जाइए। वही किया अब्दुल्ला शफीक ने भी, और साइम अयूब भी ऐसा ही करते हुए नजर आए। या कल जो सेंट्रल पंजाब के रन बनाने की औसत आखिरी सेशन में थी वो 5.27 थी। पहले सेशन में ये 3 से कम थी। नई गेंद पर बैट्समैन ज़रूर खबरदार थे। ये पिछले साल की कारकर्दगी है बैटिंग से मुतालिक। ये पहले 100 ओवर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें आप उसामा मीर जो हैं अभी तक मुंतज़िर हैं। 26 ओवर्स हो गए हैं। साद की जानिब बार बार उनकी भी नज़रें उठ रही हैं कि कब वो अपने इकलौते लेग स्पिनर को खेल में लाते हैं। सऊ शकील बहुत जल्दी ले आए थे बॉलिंग कराने के लिए। सिंध के लेग स्पिनर थे जाहिद महमूद, और अच्छा स्पेल भी किया था शुरू में जाहिद ने। जी बिल्कुल, बस चांस अवेल नहीं कर पाए उनके फील्डर उनकी बॉल पर। अभी तक पंजाब के बॉलर्स ने ज़्यादा आगे बॉल गिराई हैं, इस वजह से शायद ज़्यादा मौका दे रहे हैं फास्ट बॉलर्स को। मोहम्मद साद एक और अच्छी गेंद। उसामा जो हैं ये 2 साल से नहीं खेले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेकिन आमिर यामीन का ये जो स्पेल है ये बहुत ही आला रहा है। इसमें उनका रिदम बेहतर लगा है। नई गेंद पर इनको मूवमेंट ज़रूर मिल रही थी, लेकिन रफ्तार ना होने के बराबर थी, इससे परेशानियां पैदा नहीं कर सके थे ये ओपनर्स के लिए। लेकिन लेफ्ट हैंडर्स के सामने अराउंड द विकेट आकर ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, और बल्ले के बहुत करीब बॉलिंग कराई हैं, जिसका इनको भरपूर फ़ायदा हुआ है। यहाँ अराउंड द विकेट आने का ये भी इनको फ़ायदा रहा कि बैट्समैन को खेलने में मजबूर करते रहें। इतना आसान नहीं होता फिर छोड़ खेलना खिलाड़ी के लिए, जब इस एंगल से गेंद आ रही हो, और तो आपको पहले यूं ही लगता है कि
ये आपकी स्टंप्स में आकर लगेगी। ये नो बॉल। ये तो अब अच्छी खासी दर्द सरी हो गई है। ये चौथी नो बॉल है आमिर यामीन की। एक छोटे स्टार्ट के साथ काफी ज्यादा नो बॉल्स में इजाफा होते हुए आमिर यामीन के। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि जब ये अपना स्ट्राइड जो है ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं तो जो बॉलिंग क्रीज पर बॉलर है उसका कद और छोटा पड़ जाता है। तो अगर पहले ही आप तवील कामत फास्ट बॉलर नहीं हैं तो आप लंबे स्ट्राइड के साथ बॉलिंग करने का बैट्समैन बुरा नहीं बनाएंगे। शानदार फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। साइम अय्यूब का अच्छा शॉट था, पूरा मिडल हुआ। अगले कदमों पर खेले इस बॉल को। कप्तान साथ वहां पर मौजूद थे, डाइव लगाकर बॉल को रोका उन्होंने। सीधे हाथ पर उनका ये बॉल। फवाद आलम अपने मुनफरिद अंदाज में सामना कर रहे हैं आमिर यामीन का। सिंध सेंचुरी के बिल्कुल पास, 3 विकेटें गंवाकर। उमदा बॉलिंग ओपन अप किया फवाद आलम को। इस बार भी खासी मूवमेंट मिली आमिर यामीन को। 100 रन और 26 ओवर्स सिंध के मुकम्मल हुए। 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं। बाहर निकला ये बॉल आखिरी लम्हे में और बाहरली किनारा लिया। हल्का सा तंग भी हुए फवाद आलम इस बॉल पर। काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली है आमिर यामीन की और उन्होंने मजबूर किया है बल्लेबाज को। ताहिर महमूद और गुलाम अली। यहाँ ताहिर महमूद जो हैं ये असिस्टेंट कोच हैं। गुलाम अली हेड कोच हैं। सिंध ने टाइटल जीता है, बड़े अरसे के बाद बड़ा टाइटल सिंध को मिला है नेशनल T20 कप का, इसलिए खुश है ये खेमा। नए खिलाड़ियों को अब इन्होंने आजमाया 4 रोज़ा क्रिकेट में भी। कल 3 विकेटें हासिल की थी आसिफ महमूद ने। तो ये भी एक नई टीम बन के उभर रही है सिंध। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी बनाई, उन्हें खेलते हुए करीब से देखा साइम ने, और ये भी उनके अभी तक उनकी पैरवी करते हुए ही नज़र आए। बड़ा सुनहरी मौका है सेंचुरी बनाने का अपने डेब्यू पर, और ये बड़ा यादगार लम्हा होगा इनके लिए, क्योंकि जब आपका अच्छा दिन है तो फिर उसको पूरी तरह से आपको कैश कराना चाहिए। अच्छा शॉट था बगैर किसी रन के, क्योंकि ये ऐसी विकेट है जहां पर आपको आपके स्ट्रोक की पूरी कीमत मिलती। क्योंकि बुरे दिन पर अगर आप 0 पर आउट हो जाते हैं तो वो अच्छे और बुरे खिलाड़ी की तमीज़ जो है बुरे दिन पर ख़त्म हो जाती है। कोई भी जल्दी आउट हो सकता है, लेकिन आपका अगर अच्छा दिन है तो उस दिन खिलाड़ी की सही जो सलाहियत है वो सामने आती है। उस बड़े दिन पर
आप मैच विनिंग इनिंग अगर खेल जाते हैं अपने अच्छे दिन पर तो फिर जाहिर है कि आप अपने आप को साबित कर देते हैं हर लिहाज से। और ये उम्दा स्क्वायर कट, इस बार 4 रन्स, थोड़ी सी आई लाइन के बाहर गेंद मिली और साइम अयूब ने इसे चलता कर दिया। शानदार बैटिंग लेफ्ट हैंडर की। What a play he is. This is his strong area, Saim Ayub. Cut short. He never missed this. We didn't see any opportunity he missed for cut short, but at the same time, he left the good deliveries alone. Played well with straight bat. He doesn't break his wrist. He does not break his wrist. The stumps deliveries. He plays with straight bat. Another good thing. Lot of positives for this boy. Yeah, it gives me lots of pleasure watching a young batter bat with some authority, like Saim Ayub is doing, like Abdullah Shafiq did in the first inning. Such a good prospect for Pakistan cricket. Another no ball. That has been the trouble for these central bowlers. 7th of the inning, and we're just about 26 overs into this inning, and 7 no balls already. That is a crime. Absolutely. 7th no ball. Second of the over, and this one is big one. Big one. Good he didn't nick it, otherwise he has cursed himself all day long. Saim Ayub holding the key for Sindh. Another no ball. Another no ball. What are you doing? Imagine if you got a wicket on this delivery. That would have been so poor from Muhammad Ali. He's bowled well though, but these no balls is going to haunt them. And you don't want to be missing out on or any opportunity to somebody like Saim Ayub. And another clear no ball. Bending his back, maybe trying too hard. This may be the case. Muhammad Ali, usually a very good bowler though. Well, left is not attempting this shot. They are trying to trap him. They want to see. I think Ali want to see, does he play this shot or not? And they didn't place a fielder. Just want to surprise Saim, just to break his concentration. I think the boy is good. Saim playing brilliant. Nice use of the wrist. Should look to get 2. He will make it quite easily in the end. What a class act this Saim Ayub boy is. It's just been magnificent. Comparing, if Yasir Hamid is alongside me. Yasir, if you compare both the innings, first from Abdullah Shafiq, more traditional, more technically correct, more patience. But if you look at Saim Ayub, there's more flair in it. If you've seen his more shots, he's a brave player. He's never shy of expressing himself. What do you make of these two young openers? I think Pakistan opening department is in safe hands. Absolutely, and both of them has one thing in common. They took their time as well. They are very good with shot selection. They know what they are doing. This is very important. They know where their off stump is. Otherwise, shots, both have quality shots. We know that Abdullah Shafiq has proved himself beyond the limits in international cricket.
He played against Australia, he played against Bangladesh. I think he played many test matches now. He has different frame of mind, but Saim is playing his first game. And he is flourishing with confidence. I am very impressed with this. With his head position. Look at his head when he plays the shot. Qasim Akram, on the other hand, from media end, he's changed, and Qasim Akram is bowling now. Don't look at his head. That's what Yasir Hamid meant. Off spinner in action. Straight away runs. 1, 2, maybe 3. If they run well, they can get 3. They do quite easily in the end. Good running. This will definitely help the cause of Fawad Alam's runs. He always waits for his time, but you're talking about his hand, but look at his point of contact when he plays the ball. I think that's okay. His head position and his foot movement is okay, but early on he's comfortable with what he does. No one can change it. Oh, he's proved himself. With whatever stance you play, it's the runs that matters. And Fawad Alam has been such a prolific scorer, not just test match cricket, but at this level also. It's been brilliant. And it's never easy, Yasir, making a comeback in Pakistan side after 10 years, and then scoring runs, and then making your place in the side. It's not an easy thing to do. Yeah, that was bravo. That was bravo. His persistence, his concentration with the game. He never lost his interest in the game, and that's what brought him back into the team. That's another story. Absolutely. I mean, it's just commendable looking at somebody like Fawad Alam. You wait for 10 years for your turn. You score runs year on in domestic cricket. And then you get your opportunity. Then you make the most of it. I think that is just wonderful from Fawad Alam. That motivation. I'm sure it is a learning from other cricketers too. And again, he's under the pump. Now he didn't perform in last series or somewhere. And now again question mark. End of over number 28, 112 for 3. Yeah, we'll continue talking about Fawad Alam because he's such a huge case, the area of study for the young cricketers, how not to lose the hope, how to keep believing, how to have faith in your own abilities, keep on doing, keep on scoring runs every year. You get your turn, you make the most of it. And now you were talking about he's under the pump these days, but I still believe he's got cricket in him. Although the competition around him is quite tough, there are new young boys coming up. They always will. A good player always under the pump, Ali. At some stage, at every, in somewhere, he is under the pump, under his expectations. Yeah, you make a good point. Because once you're such a huge player, such a big player, all the expectations definitely come onto you. And that is probably the reason if he 1 or 2 matches, if he doesn't score, there are question marks. That is a little unfair on the player too sometimes. But that's how it is. You people are solid. You played for Pakistan cricket, Pakistan side. You're the chosen 11. You're special people with special abilities. You know what? One good thing about his comeback, he proved his point yet again by scoring those hundreds. Although he's here and there early on in his inning, but when he plays long. He killed the opposition intent. Sometimes bowler think what I'm doing, what he's doing.
So this is a very good thing about him, that he has his own plan. He has his own plan and he tried to execute it. Most of the time he gets success. Some fun. Why not? It's a lovely day. Cricket is good. Central Punjab probably leading. Quaid-e-Azam, one of the probably the best middle order batter Pakistan has produced. Not always pleasing on eyes, but very effective. He gets runs. He knows how to get runs. Look at that record, Yasir. 13,820 runs. That is fantastic. Absolutely. And 192 matches, 296 best. We'll get 2 here. Not quite timed, but again effective. 2 runs for Quaid-e-Azam. He moved on to 8. Talking about his record, I'm just wondering why this, when I saw those score column, 13,820 runs with 41 hundreds and 65 50s. So I think it should be like more than 15,000 runs. It's just amazing conversion rate. 4100s. So that shows that once he gets in, he gets us 100. That's what the record shows. 65 50s, 4100s, best of 296. Fantastic. Amazing. I've played with him. I've fielded in slip. You just amazed sometime when he gets runs, and how he managed to play all those shots, because then I realized that when he plays the ball, the point of contact, see his head position and his footwork, everything is right then. Yeah, but you make a good point, but once he was facing somebody like Cummins, Mitchell Stark, the bowlers who bowl at 145, 150 pace, then probably I just realized in the last series against Australia, he struggles a bit. He gets, doesn't have enough time to adjust. That is where I think he lacks, when there is extra pace in this stance that he has. Yeah, this is that's what we are talking about. This is amazing how he adjusts. I cannot do for one ball, but he can do it. This is his ability. And you're talking about fast bowlers struggling. Anyone can do this. Any batsman can struggle against fast bowlers like Cummins. And the point is, yeah, you create more chances to give away your wicket, but that's what opposition think, not him. His belief system is very strong. That's why he got 4100s. Whatever works. Quaid-e-Azam will always be a great batter for Pakistan. Down the track, over the head, huge. 6 runs for Saim Ayub. Brilliant shot. This is Saim Ayub for you. Down the wicket, and how quick he came down the wicket and connected it with perfection, middled it, and a huge 6. Over 90 meters, I would say. I just love your dimensions, the way you calculate them. It's just amazing, Yasir Hamid. Top man. And just the way he came out of the crease, Saim Ayub, he just gave himself a little room also. Adjustment, as you say. Adjustment was excellent. And it wasn't a half volley. He stretched himself. Look at his hands. He stretched himself.
And that's where he got that power, generate that power to hit it long. Good shot. He has definitely impressed Yasir Hamid here. Saim Ayub, quality act. And not just in this format. I know we were talking about his abilities as a T20 player also. The type of new innovation that he brings out, that no-look shot. If you've seen that where he plays towards mid-wicket, he doesn't even bother looking at the ball. That shows the skill of the boy. And the good thing, he's enjoying his batting. He's enjoying every ball he's facing. He's taking singles. Everything he's enjoying. And that's a great thing about him. He's a product. Just like you are enjoying in the commentary box. Always have a smile on his face. Just an excellent addition into our commentary team. Yasir Hamid. It's fun to be. Full toss. Punished. Not quite where he intended. Muhammad Ali will cut it off. Just a couple of runs. Look like Qasim Akram's focus is not there for the bowling. I think captain should talk to him. Giving away those full tosses to Fawad Alam, 123 for 3. Muhammad Ali, 2 slips and a gully. Well played, Saim. The good thing that play with straight bat. Every time it doesn't break his wrist on the stumps deliveries. He doesn't break his wrist. Play with straight bat. When you get runs, even you playing your first game, you have a lot of positives in you. Anyone who gets runs, he does the things right. And what Saim is doing here, doing everything right here. Cuts nicely, handsomely. That is 4. That is brilliant. That is Fawad Alam for you. Good shot. Will not miss these opportunities to get runs. 4 runs for Fawad. Yeah, it was there to cut and didn't miss it. Fawad Alam, we know. Muhammad Ali wouldn't mind this shot because he kicks the ball. Maybe he thinks that if he gets that extra kick, he can nick Fawad Alam. Let's just hope whatever he's thinking is right and he's able to execute it, because at the moment Fawad Alam is punishing him. Anything outside the off stump, that's better. If he can bowl more deliveries, be consistent in his line and length, that would be great. Just love the hospitality we get in Rawalpindi. Yasir Hamid has just been offered a samosa. That is brilliant. We had it in Multan last time we were there for National T20. They were brilliant. And samosas over here, they're always good. We should thank our producer, Adnan. He's the one, director, producer. He's taking care of us. Babar Ali is the boy you should be thanking, because he's the one who brought you here. These Thank samosas. you, Babar. Runs for Fawad Alam. Oh,
Quaid-e-Azam with his desperate dive in the end. Couldn't stop the boundary, but good effort. And that was on the pitch. These are the practice pitches. Let me tell you, it really hurts. But you have to give marks to Quaid-e-Azam for his commitment. Yeah, but ball touched the rope. Well done, Quaid. Quaid-e-Azam breathing easily now on the pitch. Nicely pulled. Uh-oh. Ahmed Daniel. We'll have a look at it again, most likely. Not a good start when you all been on the bench all day and suddenly you come and you get a effort like this. He did well in the end. Ahmed Daniel. Oh, that has to be a boundary. Probably umpire hasn't really checked with the third umpire. That should have been 4, but anyway, Daniel maybe could not understand. His leg touched the rope when the ball was in his hand. Quaid-e-Azam keeping everyone busy at the moment. 134 for 3 after 31. There is next man in, Sarfraz Ahmed. Not next man, maybe on number 7, I guess. He's playing down the order. Fawad and Sarfraz had a good big day yesterday and he had very good catches. Still his interested intent is there to play big cricket. Yeah, you've played with Sarfraz Ahmed, representing PIA, domestic cricket. Has he always been like this, chirping, talkative, smiley? Always. He played in my captaincy. His debut was in my captaincy for PIA. I was captain fortunately, and when he played his first game, he was very, happening person all the time. So Osama Mir here, 14 matches, 18 wickets, 4 for 133. Average is not that impressive, but he can bowl well. He can surprise. It was 2 years ago when he last played his domestic game, Osama Mir. So this is going to be a new challenge for him. Oh, straight away. Has he taken it? Has he taken it? Is this a brilliant catch? The big wicket, Saim Ayub on the very first delivery. Has he stuck in his tummy maybe? That is excellent. The most unluckiest way to get out. And what a catch by short leg fielder here, Ali Zaryab. He took the blinder, but boy, he can't believe it. He can't believe his luck. Just middled it. Look at that. It just came from the middle of the bat. Oh, it just got stuck in between his legs. That is the most unfortunate way to get out. And when you are playing so well, what an inning, what an debut. Saim Ayub, 71, 96 balls, 1 6 and 9 fours, and look at the strike rate. Well done, young boy. Well played. $134 for 4. Just when we got the wicket, we got something else from Babar Ali.
You're such a kind man. Thank you, Bobby. Another very talented left-hand batter. Saad Khan, 19 matches, 1155 runs, 750, 300, best of 129. Runs straight away for Saad Khan, off the mark. Azam Mir has waited 31 overs, and when he bowls his first delivery, he gets the most informed batter from Sindh. And what an unfortunate way, it just went straight to him. How unlucky. How unlucky and how lucky Osama Mir is. Just think about it. You just bowl one delivery. I cannot believe his luck. That's what happened when you are committed in the field. You give your 100%. That's how nature helps you. Bad delivery. Great stop by Qasim Akram. We know that he's a great fielder. Good fielder he is. Good energetic boy, half length. Pulled up nicely, but equally well fielded by Qasim Akram. What a time, with just about 3 minutes to tea. And Osama Mir has got this big wicket, this huge wicket of Saim Ayub, who looked really threatening. And now there's a different energy. Look at the smiles, look at the clapping. They're just right after each other, right behind each other, the central boys. This is what wickets does. Absolutely. Everyone is pumped up. What, 5 minutes left for tea? And they are hoping for one more wicket. Hoping against the hope. Central definitely on top at the moment, because Sindh still trails by 293 runs. That is a lot of runs. End of 32, it's 135 for 4. This is a scorecard for you. Saim Ayub, impressive 71. Quaid-e-Azam is playing on 20. South Shakil, he will be disappointed. He got good one from Amir Yamin. Ball came in. He was lazy. He was expecting something else, but ball got sharped on him. Nice use of the wrist, beautifully placed. Saad Khan has announced his arrival on the crease. Beautifully done. 4 runs. Another good shot. These shots fascinate me, Ali. You know what I mean? These are beautiful shots, elegance. See? Though it was from the middle and leg, a good shot. He connected. He got 4. He's on the mark. His first boundary, Saad Khan. The intent is positive. The start of the inning. Good run. Very good running. Excellent cricket. And you have to give full marks to Umayyad Asif here. He tried, he dived, he tried for run out. Like this energy in this guy. Though he's not playing, but he's very energetic, very positive, active guy. Good fast bowler. A lot is on Quaid-e-Azam from here on for Sindh.
trailing by 288 runs. It has to be him who has to play that anchor role, play till the end. You've got Saad Khan, you've got Sarfraz Ahmed who can bat, Asim Mahmood can bat, so can Mir Hamza a little. They have to make sure they go as close as to that total. Good run. Very good run again. And he has done it a lot of times in his career. Fawad Alam is known for this anchor sheet, fighting spirit. A good professional, Fawad Alam. Tap and run here. Good response by youngster. Saad Khan facing Waqas. Well played, right behind the ball. He's another prospect, good prospect, Saad Khan. Playing for Sindh, first 11. Bit a good opportunity for him to make his mark. Sindh expecting him to deliver. Youngsters are good so far, very impressive. Saim Ayub, Umair bin Asif, and now Saad Khan. 2 is the call. 2 they should get. That's it. I think that will be tea here at Rawalpindi Cricket Stadium on the second day of the first match of the season. It's Sindh taking on Central Punjab. At the moment, Sindh are 143 for 4. They've lost this big wicket of Saim Ayub just on the verge of tea. He would be such a disappointed man, Saim Ayub. Had he taken that one over, go to tea without losing his wicket, that would have done worlds of good to Sindh. And Central Punjab is definitely a happy camp at the moment. They're surely in the commanding position in this game. They bowl well. They've been lucky with those catches too. I really enjoyed this session early. It was very good cricket, especially from Saim Ayub. He played brilliantly, and then Punjab came back very good. They are back in the game and they are in driving seat, no doubt. But Saim Ayub played a brilliant inning. Loved his batting to watch. Yeah, no wonder you like this session. 105 runs coming off, 4 wickets. Run rate also good, 4.547. So it means there were runs, there were wickets. That is why the session was so good. Khurram Manzoor disappointing. So was Umair bin Yusuf. So was Shal Shakil. So was Umair bin Yusuf. But the man that stands out, the boy, Saim Ayub, 71 runs of 96 deliveries. And now it's up to these two, Fawad Alam, Saad Khan, to take that score closer to Central Punjab. Here's the bowling card. Amir Yamin, 8 over 37 runs, 2 wickets. He bowled well. Waqas Maqsood, 7 over 32 runs, no wicket. Mohammad Saad, 1 wicket for him in 14 and 6 overs. Muhammad Ali bowled well for 42 runs. He bowled 9 overs, but no wicket. Qasim Akram, 2 overs, 12 runs, no wicket. And Osama Mir, 1 over, 1 wicket. Big wicket for him. Now, a good session it was for both sides. Runs kept on coming. Saim Ayub was brilliant. Look at that shot for a cut shot. Quick arms. But this was a lazy shot by Khurram Manzoor. Gave his wicket away to Mohammad Saad, the captain of Central Punjab. Umair bin Yusuf joined Saim Ayub. Scored a few boundaries here or there. But the good part was that the boundaries, they were neat and clean. And then Saim Ayub looked brilliant. Yasir Hamid is full of praises. Absolutely, absolutely. Played with authority, and he didn't lose himself. This was the wicket of Umair bin Yusuf, and that was a big wicket. Saud Shakil, captain of Sindh. Saim Ayub again with his shots, 6 down the ground, and these cut shots. This was from Fawad Alam, and Saim Ayub got out
very unluckily. Stuck it in his legs, and then Saad Khan joined him, and that's tea. That's how the match looks like at the moment. Central Punjab batting first, 428 runs are scored. Brilliant double century by Abdullah Shafiq. In reply, Sindh are 143 for 4 at the moment. Saim Ayub 71. Fawad Alam is still there on 21. Amir Yamin taking 2. Osama Mir taking 1. But Sindh still trailing by 285 runs. We're going to take a break here. We'll see you in about 15 minutes time.
हम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हैं, जहां सेंट्रल पंजाब और सिंध के दरमियान कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच अपने दूसरे दिन में तीसरे दौर में दाखिल हो रहा है। चाय के वक्फे के बाद सिंध की टीम 143 रन 4 खिलाड़ी आउट होने पर अपनी पहली इनिंग्स फिर से शुरू करेगी। 71 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स के लिए साइम अयूब ने, लेकिन वक्फे से कुछ देर पहले वो उसामा का शिकार हुए। उससे पहले खुरम मंजूर ने 15 रन बनाए। उमैर बिन यूसुफ अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 13 रन बनाने के बाद कासिम अकरम के हाथों कैच आउट हो गए। सऊद शकील को एलबीडब्ल्यू आउट किया। आमिर यामीन ने एक इंडिपर पर फवाद आलम और साद खान पर, जो दो लेफ्ट हैंडर्स हैं, अब बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। यासिर हमीद मेरे साथ हैं बॉलिंग कार्ड के साथ। जी बिल्कुल, आमिर यामीन ने 8 ओवरों में 37 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। वकास मकसूद 7 ओवरों में 32 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। मोहम्मद साद, जिन्होंने 6 ओवर्स किए, एक सरप्राइज पैकेज थे और 1 विकेट हासिल की उन्होंने। मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग की, अगेन कोई विकेट हासिल नहीं की। कासिम अकरम अपने 2 ओवर्स के साथ 12 रन दिए उन्होंने और कोई विकेट हासिल नहीं की। उसामा मीर, उन्होंने 1 विकेट हासिल की और 1 ओवर किया और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट साइम अयूब की हासिल की। उसामा मीर को ही अपनी बॉलिंग जारी रखना है। अभी जो नेशनल T20 कप हुआ था उसमें भी ये मीडिया सेंटर एंड से ही एक्शन में नजर आए थे और इसी एंड से ज़्यादा स्पिनर्स ने बॉलिंग की है। कल पहले दिन जो सिंध के दोनों स्पिनर्स थे उनमें फवाद आलम भी शामिल थे। इसी एंड से वो गेंद करते रहे। जी, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है तारिक भाई, क्योंकि इसी एंड से हमने देखे सारे स्पिनर्स, उनकी तरफ से भी जो स्पिनर्स हुए, जायद ने भी सारी बॉलिंग यहीं से की, फिर उसामा ने भी यहीं से बॉलिंग स्टार्ट की। ये नो बॉल थी और इस बार भरपूर शॉट खेला फवाद आलम ने। स्पिनर्स जो हैं ख़राब गेंद अगर करेंगे तो फवाद कभी भी जाने नहीं देते ऐसा मौका। 3 रन का और इजाफा, गलती कोई गुंजाइश नहीं होती फवाद आलम के सामने स्पिन करते हुए। जी बिल्कुल, और ये तो ढूंढ रहे होते हैं ऐसी बॉल, ऐसी बॉल बिल्कुल मिस नहीं करते। ये 9वीं नो बॉल थी सेंट्रल पंजाब की इनिंग की। इस दफ़ा अच्छा शॉट खेले कैप में। ये लेग स्पिन थी। एक बार फिर ये खाली इलाका पा लिया। 2 रन इत्मीनान के साथ बनाए। फवाद आलम स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए तीसरे रन की उन्होंने कोशिश नहीं की। जी, उसामा मीर जो बॉलिंग कर रहे हैं तो ये बहुत इजी होता है बैट्समैन के लिए इस तरह के बॉलर्स को इस लेवल पे रन्स लेना। और फवाद आलम जैसे बैट्समैन जो खड़े हैं वो तो ढूंढ रहे थे ऐसी बॉल। मेरे ख्याल से उसामा को थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, गैदर करनी पड़ेगी अपनी सोच कि उन्होंने किस तरह बॉल करने हैं 4 डे में। हवा जो है इस स्टेडियम में ज़्यादा यही देखा गया है कि इसका रुख आमतौर पर ये शिमाल से जनूब की तरफ होता है। ये आपकी स्क्रीन के दाएं से बाएं जानिब यहाँ हवा चलती है, तो एक मुमकिन वजह ये हो सकती है लेग स्पिनर को इस एंड से इस्तेमाल करने की। जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा अगर जिस तरह हमने जाहिद को भी देखा थोड़ा तेज़ कर रहे थे और उसामा को भी हमने देखा है अभी तक जितने बॉल किए इन्होंने थोड़े तेज़ किए हैं। आप ये नहीं समझते कि थोड़ा सा अगर पेस स्लो हो स्पिनर की तो बैट्समैन को ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है? ये जो पिच है ये पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी विकटें हैं और ये ऑस्ट्रेलियन तर्ज की पिच है और ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका में जितने भी स्पिनर्स जाते हैं जिनको कामयाबी मिली है वो रफ्तार कम करके ही मिलती है इस तरह की बाउंसी पिचेस पर, क्योंकि अगर पिच तेज़ है आप वहाँ जितनी तेज़ गेंद करने की कोशिश करेंगे तो कोई मुश्किल पेश आएगी नहीं। आपको यहाँ पर फ्लाइट में ही बीट करना होता है पहले। जी बिल्कुल तारिक भाई, यही मेरा पॉइंट है। थोड़ा सा अगर पेस स्लो करें तो उसमें थोड़ा बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल सकता है, जो कि एक अनसर्टेन बाउंस जो होता है वो उस सरप्राइज कर सकता है बैट्समैन। बिल्कुल अच्छा इख्तिताम किया इस ओवर का उसामा ने निस्बतन ख़राब आगाज़ के बाद 148 पर 4।
उमर बिन यूसुफ ज़्यादा खुश नहीं होंगे आज अपने स्ट्रोक से। काफ़ी कमज़ोर शॉट था ऑफ स्टंप के बाहर, और जो जाल बिछाया हुआ था इनके लिए उसी में आ गए। लेग साइड में टर्न कर दिया साद खान ने। अच्छा स्ट्रोक खेला, विकेट की दोनों जानिब ये खासे स्ट्रॉन्ग हैं साद खान। इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स बनाने का आर्ट आता है। वो बड़ी तेज़ी से ये ओवर कर सामने आए हैं सेकंड 11 से फर्स्ट 11 तक। 150 रन्स भी मदद से इनके स्ट्रोक के मुकम्मल हुए सिंध के। ये जो समंदर पार से जो इयन फिशर आए हैं ट्रेनिंग कराने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, खासे मसरूफ़ रहते हैं ट्रेनर्स जो हैं मैच के दौरान भी। कल जो सेंट्रल पंजाब के ट्रेनर थे वो दिन भर अपने फास्ट बॉलर्स के साथ काम करते रहे। ये खिलाड़ी नहीं खेल रहे तो इनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। ये बहुत अच्छा साइन है ये, और लड़कों को बिजी रखा हुआ है। एवरीवन इज़ शोइंग हिज इंटेंट। हमने देखा है जो बाहर से फील्डर्स भी आ रहे हैं वो जान मार रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड साइन कि सारे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। क्योंकि यासर अक्सर ऐसा होता है कि जो टीम के ट्रेनर या कोचेस की जो तवज्जो है वो सिर्फ उन्हीं 11-12 खिलाड़ियों पर रहती है जो कि खेल रहे होते हैं या टीम का जो ज़रूरी जुज़ होते हैं। हालांकि जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते, जिस तरह ये अभी मैदान से बाहर इयन फिशर के साथ हमने देखा था सिंध की बेंच स्ट्रेंथ को वहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए। ये फराज जो नए खिलाड़ी हैं, इनके अलावा मोहम्मद असगर नहीं खेल रहे, तो इनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है कई बार ट्रेनर की। जी बिल्कुल, डेफिनेटली अब ये जो फर्स्ट क्लास की टीम में जितने भी लड़के सिलेक्ट होते हैं वो सारे अहलियत के हामिल होते हैं और सारे नॉक कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं डोर्स को। स्पेशली उनकी जब बारी आती है तो वो रेडी होंगे। अक्सर लड़के अगर ट्रेनिंग नहीं करते तो वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं, लेकिन ये इससे ये रहेगा कि वो इंटैक्ट रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे और उनको पता होगा, गेम में अवेयरनेस रहेगी। टीम के मोराल के लिए भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, और ये जो ऐसा पहलू है जो कई लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कई टीमें, लेकिन जो अच्छे कप्तान होते हैं वो अपने जो बेंच पे खिलाड़ी होते हैं उनको भी वो बड़ी अहमियत देते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि अक्सर जो कप्तान होते हैं जो 11 में पहली 11 में खिलाड़ी आने के वो काबिल नहीं समझते, लेकिन वो उन खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं जो टीम का माहौल अच्छा रख सकें। ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने 4-4 दिन इस तरह के मैचेस में एक दिन साथ गुजारना होते हैं। ये नो बॉल, एक और नो बॉल वकास मकसूद का। दूसरा नो बॉल किया वकास ने। जी तारिक भाई, बिल्कुल आपका जो पॉइंट है थोड़ा मार्जिनल था। जी हाँ, वो आजकल एक टर्म क्रिकेट में आई है एफएम की, फाइन मार्जिन्स की, ये भी वही था। जी बिल्कुल। बड़े आराम से खेल रहे हैं साथ, इस वक्त कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। और इख्तिताम पजीर हुआ 151 पे 4।
अब तक 6 बॉलर्स को आजमाया है ये कप्तान मोहम्मद साद ने, जिनमें 2 स्पिनर्स हैं। 2 ओवर कासिम अकरम ने किए थे चाय से पहले, और उसामा मीर को सबसे आखिर में लाया गया। यहाँ इस तरह की जो विकेट है उसमें जाहिर है कि ऑफ द विकेट आपको उतनी मदद नहीं मिलेगी। बाउंस के अलावा जो टर्न है वो ना होने के बराबर रहेगी, तो इसलिए आपने हवा में बीट करना है। जी बिल्कुल तारिक भाई, और जिस तरह फवाद अभी खेल रहे हैं स्पिनर्स को थोड़ी अच्छा खेल रहे हैं, लूज बॉल्स और उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, सिंगल्स आराम से मिल रहे हैं उन्हें। तो अगर जो पेस में अगर आप चेंज करेंगे, अगर एक बॉल तेज़ एक आहिस्ता, अगर उसमें कंट्रोल आ जाए तो फिर आप यू कैन बी डेंजरस। और एक और नो बॉल, 11वां नो बॉल। सेंट्रल पंजाब के लिए बहुत कुछ बदल गया है, इनके कोचेस, इनके ट्रेनर बदल गए हैं, लेकिन ये पिछले 2-3 बरस से ये एक ऐसा इनका मामला है जो कि नहीं बदल रहा। ये अच्छी गेंद थी और उतना ही अच्छा शॉट भी खेला मोहम्मद साद ने, बैकफुट से खेलने में कामयाब हुए। अच्छा ये हो रहा है सिंध के लिए कि ये दोनों खिलाड़ी अपने स्ट्रोक खेलते जा रहे हैं, खासतौर पर स्पिनर्स के सामने। जी बिल्कुल, साद एक और अच्छे यंगस्टर, टांग से अच्छा खेलते हैं लेकिन कट शॉट भी अच्छा खेलते हैं। अच्छा शॉट, सिर्फ गाइड किया इस बॉल को, पेस थी बॉल में, बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। और शॉट लाजवाब, साद खान को दौड़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ये गेंद जो निस्बतन ओवर पिच थी, और साद खान जो है अपने स्ट्रोक खेलने से कभी भी घबराते नहीं हैं। जी बिल्कुल, मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत कम है स्पिनर्स के लिए इस पिच में। आगे घिरा हुआ बॉल, सिर्फ टाइम किया गैप में, 4 रन हासिल किए। इससे पिछले वाला बॉल जो था वो कट खिलाया था, ये बॉल थोड़ा आगे किया और बहुत अच्छा ड्राइव किया उसको साद ने। साद शोइंग सम इंटेंट। एक और चौका बहुत बाहर थी ऑफ स्टंप के, और दूसरे न्योते की कोई ज़रूरत नहीं होती। साथ जब खेल रहे होते हैं, पिछला शॉट इन्होंने अगले कदम पर खेला और इस बार बैकफुट से खेलने में कामयाब हुए। जी थोड़ी सी जगह बनाई साद ने, अगर हम शॉट को देखें तो थोड़ा सा पीछे हट के खेला ये शॉट, और बहुत अच्छा टाइम किया। फील्डर के पास कोई मौका नहीं था बॉल रोकने का। 4 रन और हासिल किए साद ने, और स्कोर इस वक्त बढ़ता हुआ 165 हो गया है 36 ओवर्स के इख्तिताम पे। ये इस दौर के बैट्समैनों में अजहर अली के सबसे ज़्यादा 15,000 रन हैं अभी हाल ही में, जब वो वुस्टरशायर काउंटी के लिए उनने ये कारनामा अंजाम दिया है। अजहर ने कल ही, और फवाद आलम उनसे ज़्यादा पीछे नहीं है, ये अपने 14,000 रन की दहलीज पर हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं, जो इस दौर के पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। असद शफीक, खुर्रम मंसूर, उमर अमीन ने 10,000 रन अपने कल मुकम्मल किए फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में। खुद आ गए मोहम्मद साद बॉलिंग करने के लिए। एक सवाल है आपके लिए यासिर के, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास रन्स किस बैट्समैन ने बनाए? एक क्लू मैं आपको देता हूं कि वो आपके भी करीब रहे हैं बहुत। ज़हीर अब्बास, मेरे तो करीब नहीं रहे। जहाँ PIS से दोनों जी PIS से बिल्कुल। ज़हीर अब्बास लेजेंड क्रिकेटर, का मोस्ट एलिगेंट। यहाँ 100 सेंचुरियां बनाने वाले ये इकलौते एशियन थे। 34,843 रन ज़हीर अब्बास ने बनाए।
34,843 फर्स्ट क्लास रन्स। जस्ट वंडरिंग कि इतने रन्स उन्होंने, मेरे ख्याल से काउंटीज में उन्होंने 20,000 रन्स किए होंगे या 15,000। ग्लोस्टरशायर काउंटी में रन्स के अंबार लगा दिया करते थे। और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास में उनके कितने रन्स होंगे? ये बात यकीनी है कि उनके जो ज़्यादा रन्स हैं वो ग्लोस्टरशायर के लिए ही खेलते हुए हैं। फवाद आलम एक बार फिर खुश नहीं थे। सामने जो साइड स्क्रीन पर हरकत हो रही थी, क्योंकि अराउंड द विकेट जब जब भी इस पवेलियन से बॉलिंग हुई है, फवाद आलम इसकी शिकायत करते हुए नजर आए हैं साइड स्क्रीन की। जी, फवाद आलम का हमें पता है बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है इनके लिए। साइड स्क्रीन का कोई भी थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो इनको डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। ये अच्छा शॉट, आला फील्डिंग। कासिम अकरम को आप खेल से ज्यादा देर दूर नहीं रख सकते। यकीनी 4 रन उनने बचाए। अगर ये कहें कि वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छा कैच भी पकड़ा कासिम अकरम ने। और इस एफर्ट को देखें, लुक एट दिस एफर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि सेंट्रल पंजाब की यासिर जो बॉलिंग है वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, और इस तरह की बॉलिंग को ज़रूरत होती है अच्छी फील्डिंग की सपोर्ट की, जो कि मिली है अभी तक। मासिवाय उससे खाफ चांस के जो अब्दुल्ला शफीक ने स्लिप में ड्रॉप किया था। जी बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा एफर्ट था, ट्राई बहुत अच्छी की थी उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा उस फील्डर को एक स्टेप बाहर होना चाहिए था। सही कह रहे हैं आप तारिक भाई, फील्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बर वक्त कॉल किया फवाद आलम ने। लेकिन ये जो नो बॉल का इस वक्त मसला दरपेश है, इसका को हल निकालना होगा। 11 नो बॉल्स पहले ही हो चुकी हैं, क्योंकि इससे सिर्फ रन्स नहीं जाएंगे मुखालिफ टीम को, बल्कि जो ओवर रेट का मसला है वो भी इनके लिए आगे चलकर उसमें भी शिद्दत आ सकती है। 7 के लिए 169 पर 4। आने वाले खिलाड़ियों में सरफराज अहमद और आसिफ महमूद, ये 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि लंबी इनिंग्स खेलने की अहलियत रखते हैं, लेकिन मौका ज़ाया किया है। जिस तरह उमैर बिन यूसुफ फॉर्म में थे, खुरम मंजूर भी सेट होने के बाद आउट हुए, मां सिवाय सऊद शकील के बाकी तमाम ही खिलाड़ी जो हैं वो सेट हो गए थे आउट होने तक। जी, लेकिन सबसे जो अनलकी रहे उसमें साइम अयूब रहे हैं, और जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली तारिक भाई, और डेब्यू इनिंग, क्या समझते हैं आप, कैसा खेले वो? फॉर माई लाइकिंग ही प्लेड ब्रिलियंटली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग, क्योंकि नया बॉल वो खेले, उन्होंने बॉल को छोड़ा भी, और उन्होंने उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत अच्छा था, और वो बड़ा स्टिल खेलते हैं, उनका हेड पोजीशन बहुत अच्छी थी। इसमें कोई शुबा नहीं है, और ख़ास बात यह कि वाइट बॉल क्रिकेट से रेड बॉल क्रिकेट में जिस तरह से आकर उन्हें एडजस्ट किया वो कमाल था। ये शॉट भी कमाल है। पिछले ओवर में ऑफ साइड में उसामा को चौके लगा रहे थे, अब लेग साइड में ये बड़ा उम्दा स्वीप शॉट खेला, पूरी तरह इख्तियार में नजर आए साद खान, जो बड़े उम्दा स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अब तक लगे। जी बिल्कुल, साद ने भी इम्प्रेस किया, अभी तक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 27 रन पे पहुंच चुके हैं, ये सिर्फ 21 बॉलों का सामना किया, किसी भी लूज डिलीवरी को जाने नहीं दे रहे, और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये चौथी बाउंड्री उन्होंने हासिल की थी स्पिनर पे, और इस दफा फिर 2 रन हासिल किए। ये बॉलिंग जो अभी हो रही है तारिक भाई, मुझे ये लग रहा है जहां पे आमिर यामीन ने 2 विकेट्स हासिल किए थे,
वहाँ पे वो लंबा स्पेल करना चाहिए था उनको। उन्होंने एक ओवर किया और उन्होंने वो चेंज हो गए, तो वो उस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। या शायद कप्तान जो हैं ये चाह रहे थे कि फार एंड से अपने स्पिनर्स को बॉलिंग कराएं, और मुमकिन है सीज़न का पहला मैच था, वो बहुत ज़्यादा लंबा स्पेल कराना भी ना चाहते हूँ अपने तेज़ बॉलर्स से, क्योंकि हमने कल सऊद शकील जब कप्तानी कर रहे थे तो उन्होंने भी छोटे छोटे स्पेल्स में अपने पेसर को इस्तेमाल किया था, मासिवा मोहम्मद उमर के। लेकिन तारिक भाई, जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप ऊपर नीचे 2 विकेट्स लेते हैं तो वो आपका टाइम होता है, आप 5 आउट कर सकते हैं, अपनी टीम को एक मैच विनिंग पोजीशन में लेके जा सकते हैं। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 175 पे 4। आमिर यामीन ने 2 स्पेल किए हैं, 8 ओवर्स उनके क्रेडिट पर हैं, एक और नो बॉल। और शायद ये जो वायरस है ये उस वक्त ख़त्म होगा जब ये नो बॉल पर कोई इनको विकेट मिल जाएगी, फिर उसका जो मलाल है वो नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, शायद उस वक्त फिर एहसास हो पूरी तरह। ये वायरस ये कुछ इस तरह का है कि कासिम अकरम के अलावा तमाम ही बॉलर्स हैं एक एक नो बॉल तो ज़रूर की है। ये अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और बड़ी उम्दा पार्टनरशिप है। 42 गेंदों में अब 43 गेंदों में 43 रन्स की। दोनों खिलाड़ी जो हैं शाना बशाना खेल रहे हैं एक दूसरे के, और विकेटें गिरने के बाद भी इन्होंने जो रन्स बनाने की रफ्तार है उसको रखा हुआ है बरकरार। जी बिल्कुल, जो इंटेंट थी सेंट्रल पंजाब की कि फॉलो ऑन कर सकते हैं, एक टाइम पे नज़र आ रहा था। जिस टाइम पे आमिर यामीन ने 2 विकेट्स ली, फॉर माई लाइकिंग उनको 2-3 ओवर्स और करने चाहिए थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। बॉलिंग चेंज हुई तो अब जो एक डिफरेंट सिचुएशन लग रही है, क्योंकि बॉलर्स थके हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ 39वां ओवर चल रहा है इनिंग्स का, अभी कोई 50-60 ओवर्स भी नहीं हुए, अभी 39वां ओवर चल रहा है। अभी बॉल भी सेमी न्यू है, हम कह सकते हैं, बॉल भी पूरी तरह पुराना नहीं हुआ, और इतना आप इजी छोड़ रहे हैं इस तरह की सिचुएशन को, तो आई गेस ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है इस पे सेंट्रल पंजाब को। एक ख्याल ये नहीं हो सकता था कि साथ जो हैं इस वक्त खुद की बजाय ये मोहम्मद अली से एक और स्पेल कराते, जो कि पिछले सीज़न में उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली थी। गो कि आज उन्होंने रन्स दिए हैं, लेकिन वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो चांस क्रिएट कर सकते हैं सेट बैट्समैनों के सामने भी। और ये मौका है, इस बार रन आउट की अपील की है टीवी अंपायर से। इमरान जावेद पूछेंगे, डायरेक्ट थ्रो लगी थी, और दरअसल यहाँ टीवी अंपायर के बगैर खुद ही फैसला करना होता है। जो फील्ड पर अंपायर्स हैं तो उन्होंने शक का फ़ायदा दे दिया है बैट्समैन को। जी बिल्कुल, बज़ाहिर यही लग रहा था कि पहुंच गए हैं, जिस तरह उन्होंने आखिर में एफर्ट किया, लेकिन ये मामला कोई टच एंड गो वाला है नहीं, पहुंच गए थे। ये अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला। अंपायर इमरान जावेद बहुत ही अच्छी पोजीशन में भी थे, बस ज़्यादा जो है ये पिच से दूर भी नहीं खड़े हुए थे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जजमेंट। इन्होंने एक और डिसीजन भी अच्छा दिया जो कि सऊद का था, बॉल पिच विद इन द लाइन ही पिच हो के विकेट्स को हिट कर रही थी। अंपायरिंग ठीक हुई है इस मैच में, अच्छी अंपायरिंग दोनों एंड से देखी जा रही है, और बाल बच गए वैसे पिछले बॉल पे। थोड़ा सा अगर स्लो भागते, डाइव ना लगाते तो फिर आउट हो सकते थे।
एक और दिलकश स्ट्रोक, गेंद गैप में चली और 4 रन्स के लिए चली। फवाद आलम ने ज़्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की और गेंद के आने का इंतज़ार किया और यही वजह थी कि गैप ढूंढ निकाला ऑफ साइड में। जी, सिंध की एक और पार्टनरशिप हम देख रहे हैं जो कि फ्लरिश हो रही है और ये अच्छा शॉट। फवाद आलम कभी इस तरह की बॉल्स मिस नहीं करते तारिक भाई, हमेशा गैप में ही खेलते हैं। वी नो हिम, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज कभी मिस नहीं करते, इसलिए इनका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है 50 to 100। 41 सेंचुरी इनके नाम है, लंबा खेलते हैं। यहाँ कासिम अकरम ने इनका ये चौथा ओवर है, 22 रन्स इनने दे दिए हैं और इनका रोल जो है लेफ्ट हैंडर के खिलाफ इनको कहा जा रहा है कि आप अटैक कीजिए। लेकिन क्या जो सेंट्रल पंजाब की टीम है दोनों एंड से इस वक्त इनको अटैक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने अटैक करना है, स्पेशली बॉलिंग में आपने एग्रेशन शो करनी है, प्लान होना चाहिए। अगर एक एंड से स्पिनर कराना भी है तो आप उसके साथ बात करें, आप उसको बताएं क्या बॉलिंग करनी है, क्योंकि रन्स अगर आप देंगे तो आप प्रेशर रिलीज करेंगे। यहाँ और दबाव जो है वो कम हो चुका है पहले ही, क्योंकि 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई साद और फवाद के दरमियान। और स्पिन को खेलना ये हमेशा से ही ये खूबसूरती है। सिंध से आने वाले जो बैट्समैन हैं ये इनसे मंसूब रही है खूबी, ये स्पिन पर कदमों का इस्तेमाल करते हैं, फिर मजबूर करते हैं उन्हें लेंथ देने पर। हवा में खेला और गेंद गई हाथों में। ये कमेंटेटर्स कर्स, खराब शॉट खेल गए और कासिम अकरम को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था कि वो लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ब्रेक थ्रू दिलाएं, उनने कर दिखाया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बॉल ब्रेक हुआ, टर्न हुआ और इसमें उन्होंने एफर्ट लगाया और क्या अच्छा कैच लिया। आमिर यामीन को आप आज यू कैन नॉट कीप हिम आउट ऑफ द प्ले। आज आप उनको ज़्यादा देर गेम से बाहर नहीं रख सकते, यही हम कह रहे थे। आमिर यामीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, विकेट्स भी हासिल की और फील्डिंग में कैच बहुत अच्छा लिया। मोहम्मद साद खान सेट बैट्समैन 30 रन बना के आउट हुए 184 पे 5। Super Sarfaraz Ahmed is in, 184 for 5, Sindh side trailing by 244 runs. They're in trouble as far as the wickets are concerned. But these two senior men, Sarfaraz and Fawad, they'll have to do bulk of scoring now. Lots of runs required. We know they are capable of doing it. That record tells us a story. 8,223, 56 50s, 1200s, best of 213. He would like to add one more to that list though today. Much needed. Shah Faisal is alongside me. Good afternoon, Ali. Good afternoon, all. Sindh still 94 runs away of saving that follow-on. You talk about these two stalwarts for Sindh. They've been in this position many a times before, and they pulled Sindh and their respective sides out
of these kind of situations many times as well. So plenty of cricket still left, but the game has moved along quite nicely. Amir Yamin will take up the attack from the pavilion end. Yeah, he's bowled well with his limited resources. Amir Yamin is stuck to his target, and this is why Sarfraz is a loose shot, just playing away from the body. It's a simple catch for the fielder at third. Just undercut it, slice the ball. No timing whatsoever. Amir Yamin, he's been in the action. Runs with the bat, wickets, and then the catch. Yeah, it seems like Sindh are still in that zone of National T20, the victorious team. The type of shots that we have witnessed, nobody really stuck in like Abdullah Shafiq did for Central Punjab. And they're now way behind in this game. And we know that this game can move away very quickly from you. One more wicket here and you're almost into the tail. Yeah, and pretty long tail. Asif can bat. Mir Hamza can swing the willow. And then Umar and Zaid Mahmood. Genuine tail enders. Sindh camp slightly worried. Ghulam Ali. But as long as this man is in the middle, Sindh are in the game. Absolutely, I think he will have to play the type of inning that Abdullah Shafiq did. Although he is playing at number 5, he played as an opener, but still a handy inning would be very useful for Sindh at this time. Amir Yamin has bowled his heart out. 9th over, 37 runs, 2 wickets. Bowled well, bowled within his limits, within his areas. So yes, we can clearly say that at the moment, Central Punjab are in commanding position. And if you look at the point tally as well, if they get one more wicket, they would have had 2 bowling points. Since still 16 runs away from their first batting point, so that clearly tells that Central Punjab is well ahead in the game on points as well. 33 overs left in the day's play after this. Still plenty of time, so this game can really move along quite nicely. I don't know if you would call it a good thing, but the run rate has been quite impressive from both sides. Central Punjab, courtesy to that inning from Amir Yamin last evening, they were scoring at 5.53 run rate. And Sindh has done well, but they've kept on losing wickets. That has been the trouble for them. But the run rate, the intent has been really positive. Indeed, at almost 4.5 runs per over, Sindh. And Central Punjab did the same as well. That's always a good thing. Modern day cricket, batters have to keep the scoring. Last season, we felt the need that this intent needed to come into the domestic game. And I think off season there's been plenty of chat about it. We could see the evidence already in the day and a half that we've seen. 184 for 5. Two wickets for Amir Yamin. Those overs have been spread around quite nicely. Waqas Maqsood, Mohammad Saad and Ali. 8, 8 and 9 respectively for them. Now spin is in the attack. Osama Mir with his height probably will extract some bounce. So far early in his spell, he's got that lucky wicket. But he's going at 6.67. But the good thing is his team has plenty of runs to play with. That allows the leg spinner to bowl a longer spell and get into his groove. And Osama has that opportunity. Be careful with those sweep shots. We know what Super Sarfraz can do.
We saw Zahid, even on the first day, he was prepared to slow the ball up and throw it up in the air. Osama is quite quick. Let's see if he can give it a little bit of a loop. Just like that. Sarfraz had a good National T20 Cup. As far as the gloves are concerned, he was the best wicketkeeper of that tournament. He didn't really get the opportunity to bat much. Still, he did well in the few innings that he got. He's been such an excellent player, especially in those middle orders. The way he manipulates, the way he plays spin, I think that is just excellent. I haven't seen anyone play that well, that sweep shot that he plays, the use of the crease. The key will be, though, how hard he's prepared to grind it out. Because at this stage of his career, sometimes you want to go out there and have some fun, but you have to grind it out. For that, you have to concentrate for longer periods. And that will be his biggest challenge. The skill and ability, that's not a problem. 184 for 5. Good all-round cricketer. On your right, Asim Mahmood. That's his first-class season, and he has already shown a lot of promise in the T20 that we witnessed. Very strong boy. Can hit big, long sixes. Zahid Mahmood will have to come to bat at some point. They will be hoping not today, maybe tomorrow. That will be a success if they're able to do that. They've not quite been able to find these gaps. These Sindh batters, we've seen a lot of times driven straight to the fielders. That was the quality of Abdullah Shafiq when he was batting. Amir Yamin is a trier. He will give it his all every time you see his name on the team sheet, wherever he plays. No different today. Important runs towards the backhand of yesterday and this morning. Those two important wickets as well. Looking to make inroads. Fawad's scalp is a big one. Not an easy one, though. Yeah, he's playing with some purpose, Quaid-e-Azam. The pressure is on him. Made a comeback to Pakistan side. He's been doing well, but recently he's lost his form as far as the international cricket is concerned. So this is a good time. These are good conditions to bat on also. Nice gentle breeze. Things start to cool off after tea. The afternoons are very, very hot. Short and wide, no timing, no placement. Once again, Fawad would think he's missed out there a couple of times in this over. This is his preferred length at his very best. Quaid-e-Azam would put these balls away. Yeah, every time the ball is pitched short, you know, the batters have tried to hit it hard and again into the ground, but really hard. He's pushing at it. You must learn from Abdullah Shafiq the way he timed it, just milked it when he was batting. I would really say, Shah Faisal, that the inning from Abdullah Shafiq should be a case study for the young batters. The way he played yesterday, he had everything right, starting from his stance, from his shot selection, from his patience level,
from his skill. Everything was spot on. Definitely. And you compare that to someone like Umair bin Yusuf. He was looking very good. He lost his wicket for 13. The difference was that Abdullah Shafiq, on your screen talking to Rich Stone here, he was able to put that drive in the closet. He didn't bring it out. That expensive drive that Umair lost his wicket on, Abdullah never attempted that. For a day and a half, he batted along. So he knew which areas to look for when looking to score runs. Square of the wicket mostly, over back of a length deliveries. 43 gone, 184 for 5. Sama. Ever since Sarfraz has come, he's prepared to throw the ball up a little bit, throwing the challenge, staying away from that stump to stump line to avoid that sweep shot that Ali was talking about. Yeah, but I wonder how much he can control. Off the mark. It's almost certain that whenever Sarfraz is on crease, he's going to use that sweep shot. And he's so good with that. He's so quick at it that I hardly see him top edge it or play it wrong. He's got his 100% rate of that sweep shot. You know, there is a thing called commentator's curse. Do you want to jinx him? Nobody knows better than me. Paul Franks, he'd be a happy man at the moment. He would want to break this partnership as early as possible. How many runs would they prefer the lead in this first inning? The Central Punjab side. Well, as many as they can get, because they would know that as much as the importance of the runs, the importance of time as well. This wicket seems to be losing a little bit of pace, which means that dismissing batters will be getting difficult and difficult. Delicate. We'll get him a boundary, maybe. Yes, just Amir Yamin jogging it away. Ball had to stop to make Amir Yamin come to him. Good running by Fawad Alam. 3 runs, be careful. They'll settle down for 3. Yeah, we're talking about this man. Played his cricket for Nottinghamshire. Fast bowler, 524 first-class wickets. 11 times he has taken 5 wickets in an inning. He knows a bit of bowling. It would be such a huge help for these young fast bowlers. Somebody like Muhammad Ali, Hanan Shah, Daniel also in the side. $189 for 5. Ian Fisher working with Sindh team, and like Tariq was mentioning earlier, Ghulam Ali, the head coach, will be leaving tomorrow for Pakistan Junior League commitments.
And Paul Nixon will join the Sindh team from the next round. And a very, very experienced cricketer and coach. This is huge. A great initiative by Pakistan Cricket Board. Will definitely be a great learning for these young cricketers at this level. And I said it yesterday also that it's not just the cricketers that will be benefited, but the coaches also. In this young system, these new coaches coming up into the system. Somebody like Humayun Farhat, Imran Farhat also into the system. There's Azaz Chima. All these young coaches, these cricketers that have opted for this career. I think this is huge for them also. Learn these new tricks, new innovations in training. And have a look at that. Faraz Ali, this must be a huge conversation with him. Just these little things that makes the difference in cricket. Wonderful. Excellent by PCB. Yeah, this spread of knowledge, sharing of different ideas, coming from different cricketing cultures. That really is a great initiative. We've already seen in this game, the approach of Central Punjab has been completely different to what we saw last year. Again a no ball. That has been the story of their life, Central Punjab bowlers. It's probably what, 13th no ball of the day. Not good. Five for Amir Yamin as well. As we have a close look, way over. Just overstretching, looking for that extra ounce of energy. Yeah, that's something Paul Franks would have to look at it. Last year, it was Hassan Ali. In fact, the year before, he had a lot of problems bowling those no balls. He worked on it. Sweetly driven through the gap. One should look to get two, easily done. So yes, it's something that he will have to work on at this level and do it quickly. This is the first game and we've already seen a lot of no balls. You got to learn quickly. Yeah, this heat and in this weather where you have to work really, really hard for your wickets. You don't want to dismiss a batter on a no ball. That will really be heartbreaking. We were questioning Central Punjab's attack and the lack of pace they have. Despite that lack of pace, they bowled better areas more consistently when it compares to the Sindh bowlers. Probably they had a day and a half to look at the pitch and see what was working and what wasn't. And they came out more prepared. That lack of pace really hasn't hampered them as much because in compensation, they found good areas more consistently. Now you are our pitch specialist always. You've been around. You've got a keen look at these pitches. This was not that easy that we initially thought it was, this pitch yesterday. The credit has to be given to Abdullah Shafiq, the way he batted. I think if that catch had been taken when he was on 45 or something, we would have been in a different situation. And then, as you said, that length from the Sindh bowlers was on the shorter side. So probably the credit has to be given to Abdullah Shafiq for his technical skills. Because this is certainly not an easy pitch to bat on. The ball holds up a little. It's not conducive for that stroke making. So if you're making runs on a pitch like this, you're really superb. Yeah, this pitch really deceived almost everyone. I have to say that. Because that grass that gave the impression there will be plenty of help there. But we wouldn't know because the ball weren't ball in the right area, but the damage wasn't done. And then there was a thought that as the days progress, this pitch will get dry and it will gather pace.
But that hasn't happened as well. In fact, the pace has gone down a little bit. Yeah, but what were you expecting from who? Were you expecting a lot of pace? Amir Yamin is a mere medium pacer. Waqas Maqsood, another medium pacer. Muhammad Ali, yes. But he really bounces the ball more than that pace. After 45, 196 for 5 Sindh. It's the bowling card, Amir Yamin, Waqas Maqsood. That's the question, Ali, you put to me is that these bowlers, other than Ali, they don't have a lot of pace. But the expectation from a dry pitch would be when it dries up, kiss the surface bowlers, the likes of Amir Yamin and Waqas will get the nip out of the wicket and the ball will carry. But that hasn't happened. And now the only hope is to see Ali, who's hit the deck bowler, see if he can get something out of it. But he as well has found it difficult. We haven't seen a barrage of short pitch deliveries at any stage in these 45 overs. And Ali was expected to do that, but he was content with bowling length and slightly fuller length. Lack of pace is an issue with Central Punjab, yes, but I think the wicket also hasn't played to the way the teams expected it to play. He is so good at it. This pitch reports, Shah Faisal. How do you do that? It's amazing. Yep, it is first time. Sweep into play by Sarfaraz Ahmed. Will earn him a couple of runs. Maybe Quaid-e-Azam has run. He was ready for the third one though, but Sarfaraz was never interested. He was just jogging his way for his second run. Yes, Sarfaraz took a long time to get going. Didn't understand the appeal because it came off the bat. Look at Sarfaraz, he was just jogging. He knew he wanted only 2. He took it off the stumps. Dangerous stroke. Huge appeal. Huge appeal. No, says umpire. Does it come off the bat? That's the question. You have to keep an eye on umpire's signal. Yeah. He's given it runs. Yeah, otherwise it was stone dead. Hit him on the full, it looked like it. Probably off the inside edge of the bat onto the boot. Yeah, it did hit some part of the glove, I think. That's why it didn't travel very quickly. Sarfaraz flirting with danger. 200 has also been brought up in the meantime. The first batting bonus point for Sindh. He's a good umpire, I tell you. Imran Javed. He's done very well in National T20 Cup also. He didn't get one right yesterday, but that happens. So there's a change in field now as Sarfaraz had attempted a couple of sweep shots. There's a fielder at 45 now. This is what Sarfaraz does. He plays around with the bowlers. Earlier he was playing those cut shots, and now the fielder from cut shot has been placed at 45. So there is room there. He's created that gap. That is excellent. That is superb. That is why I call him Super Sarfaraz, because he plays around with the fielders and the bowler. Great mind of the game. The Champions Trophy winner captain for Pakistan T20 one-day side. Just wonderful, wonderful player. Just the passion he brings into the game. Great team man also. Always behind his team. $201 for 5.
Skipper Saad ringing the changes. Just saw the bowling card a little while earlier. He's really managed his bowlers quite well. The workload has been shared around quite nicely. He's brought in Ali for another quick burst. It's 9 overs for 42. He will always go for runs because he's the wicket taker. Regulation field, 2 slips and a gully. Should be a fiery spell. This is what I'm hoping from Mohammad Ali. Good run. It's probably going to be his last spell of the day. So you got to give your all. You got to give your best head in this spell, Mohammad Ali. He has this ability of doing it. He has that ability of bowling those wicket-taking deliveries. He's bowled 9 overs so far, so maybe 5 or 6 over spell here. But fiery with some venom, with some pace. Maybe 4 overs. To ask your strike bowler to do 5 or 6 is asking for a lot. 4 probably. That way he can just run in. Oh, misfield gone through. Almost everything that the Sindh batters have placed have gone to the fielders. That's quite shocking. They've not been able to find those gaps. Have a look at that again, driven straight to the fielder. Although he just dived over it. Just 1 run given. So that has been the concern. What do you think? Why is it happening to them? It can happen sometimes. We've seen a lot of good strokes hit straight to the fielder. Saim did it. Umar bin Yusuf did it. Quaid-e-Azam has done it as well. So this is it. A lot of players, when they're in good rhythm, they find the gaps. And if you look at the Sindh scorecard as well, everybody got a start. Khurram Manzoor, Umar bin Yusuf, Saud Shakil didn't. Saad Khan, they all looked in good nick, but they just couldn't convert. You go Khurram Manzoor 15, Umar bin Yusuf 13, Saad Khan, who's looking good, 30 of 28, just couldn't convert. Nicely pulled. No fielder there. Will run away for 4. Yes, it does. This is not probably the right length to be bowling at to Quaid-e-Azam. He will punish you all day long. The point we were making just a while ago that this wicket is losing pace. Ali dug it in quite short, but look at how slowly it came off the pitch. Gave Fawad all the time in the world. Just swivel, just roll of the wrist as well. Yeah, he had plenty of time. Will Ali try it again with a bit more zest and venom? Length delivery. That's survival, not attack. This has been the story. Yesterday it was Sindh side story, and now in this last part of this day, Central Punjab are doing it. But what a fantastic last session Central Punjab had when Amir Yamin and Abdullah Shafiq were batting. They were really brutal, they were really hard on the bowling, scored at 5.58 run rate. Something similar is expected of these two. Sarfaraz Ahmed and Fawad, they're not those big hitters, but they still know how to get runs. Well played. Just for 1 run. Sarfaraz Ahmed will take it.
साइम अयूब ने आज बड़ी आला इनिंग्स खेली। अपनी पहली ही जो उनकी एफसी इनिंग्स थी उन्होंने हर देखने वाली आंख को मुतासिर किया और बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से वो बॉलर्स का मुकाबला करते रहे। हालांकि उनके आसपास विकेटें गिरती रहीं लेकिन बड़ी उम्दा इनिंग्स थी, काबिल तारीफ। और उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप दो की हैं। फवाद आलम ने पहले साद खान के साथ 50 रन की और उसके बाद एक और 50 रन की पार्टनरशिप सरफराज अहमद के साथ। जी हाँ बिल्कुल। और अगर बॉलिंग को देखा जाए तो आमिर यामीन ने 2 विकेट्स हासिल की और मोहम्मद साद ने 1 विकेट हासिल की और एक उसामा मीर ने। उसामा मीर बॉलिंग जारी रखते हुए मीडिया एंड से बॉलिंग जारी रखते हुए उसामा मीर। अच्छा बॉल था, अच्छा खेले सरफराज, लेट खेले और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं सरफराज और फवाद। अभी भी 219 रन्स का खसारा है सिंध को और ये आखिरी बैटिंग पेयर है, इसलिए ये बड़ी अहमियत की हामिल है। ये पार्टनरशिप सरफराज और फवाद के दरमियान माजी में कई मौके पर इन्होंने मिलकर अपनी टीम की जो मुश्किलात थी वो कम की। फवाद सिर्फ एक स्ट्रोक के फासले पर हैं अपनी मिस सेंचुरी से। सरफराज अहमद भी सेट हो गए और हवा में गई और ये गेंद हाथ को लगती हुई गई थी स्लिप के फील्डर के और कैचिंग का म्यार जो है वो इतना अच्छा देखने में नहीं आया है। ख़ास तौर पर जो स्लिप कैचिंग है वो कोई इतनी असर नहीं रही और उसामा पर किस्मत भी मेहरबान नहीं रही। विकेट की ज़रूरत है, 2 साल के बाद वापस आए हैं ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बड़ा इम्पोर्टेंट बॉल था पिछला, एक चांस जो क्रिएट हुआ था। बेहतर तरीके से निगोशिएट किया सरफराज अहमद ने
जैसे फॉरवर्ड डिफेंसिव 213, 5 विकेटों के नुकसान पर। वो है नहीं कैच। उसामा जो है उन्होंने क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया और गेंद उंगलियों को लगती हुई गई आबिद अली के थर्ड मैन की जानिब। चांस क्रिएट हुआ था, थोड़ा डिफिकल्ट चांस हम कह सकते हैं, इजी नहीं था, लेकिन उसामा मीर अच्छे बॉल कर रहे हैं इस वक्त। उसामा और मोहम्मद अली अब तक महंगे ज़रूर साबित हुए हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब के जो बॉलर्स हैं दोनों एंड से हाई विकेट लेने की कोशिश करते रहे। अच्छा कट शॉट 1 रन के लिए फवाद आलम की जानिब से, और इस तरह उन्होंने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। 66वीं निस्फ सेंचुरी फवाद आलम की। उन्होंने अपनी टीम के लिए बहरान में बैटिंग की और बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेल पेश किया। जी वंस अगेन उन्होंने एक और 50 किए जो उनका खासा है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं कि नहीं ये अब देखना होगा, लेकिन वेरी गुड फाइटिंग 50 रन्स फ्रॉम फवाद आलम। एक मुश्किल वक्त में उन्होंने सिंध के लिए एक बार फिर रन्स किए जब 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और प्रेशर क्रिएट हो रहा था। ये इस तरह के जो रन्स होते हैं, जो आपने कहा कि मुश्किल वक्त में, क्रिकेटर्स की एक टर्म है कि कई रन्स ऐसे होते हैं जो आप बहुत रुक कर और बहुत ही मुश्किल में रहकर बनाते हैं। अगली रन्स की एक टर्म कहलाती है। तो अगली रन्स बनाने के बाद जो आपको खुद एक इत्मीनान महसूस होता है बैट्समैन को, ये उसका कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल रन्स होते हैं। जी बिल्कुल तारिक भाई, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। इसे कहते हैं बैट्समैन अपने कंफर्ट जोन में जब आता है, जब वो अपने कंफर्ट जोन में आता है, इत्मीनान के उस दायरे में आता है, दाखिल होता है, मुश्किल से गुजर के, तो उसको कितना वो लंबा लेके चलता है, ये बहुत मैटर करता है एक प्लेयर के करियर में। या क्योंकि कई रन्स ऐसे होते हैं जो बैटिंग पिच है और मुखालिफ टीम बॉलिंग अच्छी नहीं कर रही, सामने पार्टनरशिप्स भी लगती आ रही हैं, और हवा में रही गेंद थोड़ी देर तक, लेकिन दूसरी स्लिप के फील्डर से दूर थी और 4 रन्स मिल गए सरफराज अहमद को। किस्मत भी याबरी नहीं की, और शायद ये गेंद जो है अगर तीसरी स्लिप के फील्डर मौजूद भी होते तो ये पहुंच ना पाती। जी बिल्कुल, थोड़ा सा आगे गिरा था बॉल, लेकिन अगेन एक चांस क्रिएट हुआ, एक थोड़ी सी होप नजर आई सेंट्रल पंजाब को, लेकिन ये अगर फील्डर होता तो बिल्कुल सीधा हाथ में जा सकता था। मेरे ख्याल से 5वीं स्टंप से 5वीं स्लिप से गई है ये बॉल, अगर देखा जाए। दरअसल आज किस्मत का साथ मिला नहीं है मोहम्मद अली को। इससे पहले साइम अयूब का भी कैच निकला था और इस बार फिर उनको किनारा मिला, लेकिन गेंद हाथों में नहीं गई। सरफराज अहमद जो है ये गेंद उनके बैट से लगती हुई ये जंगले से भी आगे चली गई। आबिद अली को खुद जाना पड़ा क्योंकि तमाशाई नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो होता है, चलता है। तो ये अक्सर होता है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हो सकता है कि आपको टीवी स्क्रीन पर ये बात गैर मामूली लग रही हो, खिलाड़ियों को खुद गेंद लाना पड़ती है स्टैंड से जाकर, क्योंकि यहाँ एक तो बॉल बॉयज नहीं होते और दूसरा तमाशाई भी है, आपको स्टैंड्स में ये खाल खाल ही मिलते हैं। जी बिल्कुल, अक्सर तो एक कोई भी नहीं होता फर्स्ट क्लास में, बहुत चंद लोग होते हैं जो क्रिकेट के ऐसे क्रेजी होते हैं, वो हर जगह पहुंचते हैं तारिक भाई।
चाहे वो पिंडी में मैच हो, वहाँ पे भी कुछ लोग होंगे। जिस तरह के हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं अदनान भाई, जहाँ पे भी होगी क्रिकेट आपको नजर आएंगे। फन, थोड़ा हंसी मजाक चलते रहना चाहिए थोड़े सी, या फिर हम कह सकते हैं शाह फैसल, आजकल वही नजर आ रहे हैं हर जगह। कोई भी इवेंट हो, यू मस्ट सी शाह फैसल। और तारिक भाई तो फिर आप ना ही कहना, बात ना ही करें तो अच्छा है। खूबसूरत शॉट, आगे गिरा हुआ बॉल और बहुत खूबसूरत शॉट खेली सरफराज ने। अनलकी रहे कि फील्डर के हाथ में गई बॉल। ये एक फ़र्क रहा है सिंध और सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स के दरमियान। गो कि मोहम्मद अली महंगे रहे हैं, लेकिन अभी भी वो ड्राइविंग लेंथ पर वो गेंद करा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहीं से ही विकेट का इम्कान रहेगा। विकेट लेने का इस पिच पे तरीका यही है कि आप ड्राइव कराइए स्लिप में, या विकेट कीपर के हाथों कैच कराइए। अब तीसरी स्लिप भी खड़ी की गई है सरफराज के लिए। देखिए हर बॉलर का एक रोल होता है, तो इनका रोल एक नजर आ रहा है कि उनको खिलाया इसलिए कि आपने इनवाइट करना है बैट्समैन को 218 पे 5 49 ओवर्स के अख्ताम पे। सात बॉलर्स को आजमाया गया। वकास मकसूद और मोहम्मद अली के अलावा सभी के विकेटों कॉलम जो हैं हम देख सकते हैं। 2 खिलाड़ियों को आउट किया आमिर यामीन ने, और मोहम्मद साद ने 1 विकेट हासिल की। और अभी लेग स्पिनर्स को ही कंटिन्यू करना है, उसामा मीर को। तो यासिर, आप क्योंकि अब ज़्यादा वक्त आपका इस्लामाबाद में गुजरता है, यहाँ की जो ज़्यादातर पिचेस हैं ऐसी बाउंसी और तेज़ हैं, इस्लामाबाद, पिंडी की और मारगला की। जी बिल्कुल तारिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेरे ख्याल से वेदर का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं। अच्छा शॉट फवाद का, बैक फुट पे कट किया, 4 रन हासिल किए, उनका स्कोर बढ़ता हुआ 54। तो ये बाउंस जो है ये इस्लामाबाद की पिचेस में एक नेचुरल है। मेरे ख्याल से इसकी वजह बारिशों का ज़्यादा होना है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन बारिशें होती हैं। अगर 2 3 4 दिन बारिश नहीं होती तो 5वें दिन ज़रूर बारिश होती है और हैवी रेन होती है। यार एक वजह ये भी है क्योंकि ये बारानी ज़मीनें हैं, और क्योंकि पहाड़ों के दामन में है ये शहर जो है, मारगला के दामन में, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो जो बारानी ज़मीन है वो निस्बतन ज़्यादा सख्त होती है। मैदानी इलाकों में जो पिचेस बनती हैं हमारे यहाँ कराची में, सेंट्रल पंजाब में, ख़ासी बुलंदी पर है सतह समंदर से ये इलाका। जी बिल्कुल तारिक भाई, आपको तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होती है। मतलब आपने जिस तरह तशरीह कर दी है, बारानी ज़मीन और ये सारी चीज़ें ये बहुत मैटर करती हैं। अभी 57 रन जो हैं वो मज़ीद दरकार हैं। ये अच्छी डिलीवरी थी, इस बार तकरीबन अपने दाम में ले आए थे फवाद आलम को, गेंद को हवा दी उसामा मीर ने। हिंट ऑफ टर्न, बॉल स्पिन हुआ और बहुत आगे से हुआ। उसामा मीर के लिए अच्छा साइन नज़र आ रहा है। ये देखें, ये अब इस बॉल की जो हाइट है, जो वेरिएशन है, जो पेस है, उसामा मीर को चाहिए कि इस चीज़ को ज़रूर याद रखे कि वो किस पेस से बॉल किया था उसने। जी, और शायद जो रफ है, क्योंकि उस एंड से ज़्यादातर फास्ट बॉलर ही बॉलिंग करते रहे ओवर द विकेट, तो उसी रफ को ही यूटिलाइज करने की कोशिश की उसामा ने, जो कि अच्छी सोच है।
फवाद आलम को अब उस पर नजर रखना होगी। 222 पर 5। फवाद आलम जो हैं आज भी जिम्मेदारी का मुजस्मा बने रहे, जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ अपने शॉट्स खेले और स्पिनर्स को तो हमेशा ही उनका कंफर्ट जोन हो जाता है, फास्ट बॉलर को पुल करते हुए भी दिखाई दिए। तो ये मामूल का काम है फवाद आलम का, मुश्किल रन्स बनाना, अपनी टीम को सहारा देना। आज भी पूरी तरह कंधा दिया है उन्होंने बैटिंग को। जी बिल्कुल, बहुत आला इनिंग खेले, फिर मजबूर किया उन्होंने बॉलर्स को कि उनको बैट बॉल्स करें। ये एक अच्छे और बड़े बैट्समैन की यही अलामत होती है कि वो बॉलर को उसकी जो लाइन एंड लेंथ है उसको ख़राब करें। फोर्स्ड बॉलर्स टू बॉल इन बैड डिलीवरीज। फवाद आलम का रिकॉर्ड्स जो कि एक पूरा हैवी जिसे कहते हैं, 192 मैचेस में 13,820 रन किए। एवरेज तारिक भाई देखें 55 की एवरेज है और बेस्ट जो है वो 296। अभी 300 इन्होंने नहीं किए फर्स्ट क्लास में। काफ़ी आगे निकल गए थे, लेकिन सामने देख रहे थे फवाद आलम के रन मुमकिन नहीं है। उसामा थ्रो करने की पोजीशन में है। यहाँ तक मुझे याद पड़ता है यासिर हमीद की एक ट्रिपल सेंचुरी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। जी तारिक भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था जी। 300 किए हुए हैं आपके भाई ने। अरबाब न्याज स्टेडियम पेशावर में बलूचिस्तान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बनाम बलूचिस्तान मैच में यासिर हमीद ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। लेकिन जो सिंध की एक बड़ी रिवायत है, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी सिंध से जो अजीम बैट्समैन थे उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया था। अब्बास खान, दाऊद खान और नाउमल ज्योमल, ये गुलाम अली, ये भी बड़े आला पाए के बैट्समैन थे, ओपनिंग बैट्समैन थे PIA के, सिंध कराची के। जी भी बिल्कुल, गुलाम अली AKA गुल्लू भाई, इनके साथ मैंने ओपन भी किया है तारिक भाई, जब मैं नया नया आया था PIA की टीम में। तो ये बड़े हेल्पफुल और बड़े यंगस्टर्स के साथ बड़े हेल्पफुल थे। दैट्स व्हाई इज कोच ऑफ सिंध नाउ, क्योंकि इनका जो खुद भी बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। जहाँ ये सिर्फ 27 रन की कमी से अपने 10,000 रन मुकम्मल नहीं कर सके थे और 23 सेंचुरियाँ इन्होंने बनाई उस दौर में जब पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास टीमों के पास बड़े चोटी के बॉलर्स थे। और की बदकिस्मती ये थी कि बैन अवी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बना सके। इनका पहला ही पाला जो है वेस्ट इंडीज़ के अजीम फास्ट बॉलर्स से पड़ा था, केप टाउन की बहुत मुश्किल पिच पर। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि इनमें बड़ी सलाहियत थी और ये बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे। गुलाम अली, साजिद अली, गुलाम अली, बहुत रन्स ये बनाया करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेजेंड से। जी बिल्कुल, गुलाम अली और साजिद अली, ये दो ऐसे प्लेयर्स थे जो डोमेस्टिक में हर सीज़न में इनके रन्स होते थे और बड़े रन्स, फ्लुएंटली रन्स करते थे। कह सकते हैं नाइटमेयर थे ये। और जो बहुत ज़ोर से ये स्क्वायर कट खेला करते थे गुलाम अली। 222, 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है। एक ये ऑफ द लेग भी बहुत अच्छा खेलते थे।
ड्राइव भी थी इनके पास बड़ी अच्छी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बड़ा अच्छा, चेक शॉट्स जो होती थी। तो 22 पे 5। इस तरह के पिच पर हुनैन शाह जैसा जो बॉलर है ये सेंट्रल पंजाब के काम आ सकता था, क्योंकि आउटराइट पेसर की एक कमी लगी है सेंट्रल पंजाब के पास। हालांकि अभी ये नए हैं लेकिन रफ्तार की ज़रूरत होती है। पिछले बरस भी इनके पास कोई आउटराइट फास्ट बॉलर नहीं था सेंट्रल पंजाब के पास, तो यही सबब था कि टीम अपने टाइटल को डिफेंड न कर सकी। पहले दोनों बरस से इसने टाइटल जीता था सेंट्रल पंजाब ने, 2019 में भी और 2020 की भी ये चैंपियन टीम थी। जी बिल्कुल, हुनैन शाह ने अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग की है और यंगस्टर हैं, पहला सीज़न है इनका और अच्छी बात है, बाहर बैठ के सीख रहे हैं, अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ अ प्लेयर्स करियर कि आप बाहर बैठ के थोड़ा सा वेट करें, अपनी टर्न का वेट करें। बट वी होप अगर उनकी टर्न जब आएगी तो ही परफॉर्म वेल, और इस तरह की पिच पे उनका होना एक बड़ा एक सेंसेशन क्रिएट कर सकता है। इज अ फास्ट, क्विक। आला शॉट, ये फवाद आलम है। एक बार फिर गेंद आगे मिली और फवाद आलम को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई इसे गैप में धकेलने में। काबिल तारीफ बैटिंग। जी सिर्फ टाइम किया बॉल को, फुल टॉस था, गैप में खेले, उन्हें पता था गैप में मारूंगा तो 4 रन मिलेंगे, कोई जोर से मारने की कोशिश नहीं की, टाइम किया। उसामा मीर इस वक्त थोड़ा सा लूज करते हुए अपने आप को। एक और बॉल और एक और गुगली हम देख रहे हैं, लेफ्ट हैंडर को उसामा मीर गुगलीज कर रहे हैं। जो स्लिप लगी थी फवाद आलम की वो भी गुगली ही थी, लेकिन थोड़ी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बीच में नहीं था, थोड़ा सा बाहर था बॉल। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 226 पे 5। यार ठीक है भाई, दे दे। एक वैसे फवाद ड्रॉप। धूप अब ईमान पड़ती जा रही है, धूप की जो सख्ती है, साए बड़े होना शुरू हो गए हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। यही कल वो वक्त था जिसे कैश कराया सेंट्रल पंजाब के बैट्समैनों ने। अब्दुल्ला शफीक और आमिर यामीन बहुत ज़्यादा खुल खेलते रहे क्योंकि सिंध के फास्ट बॉलर थक चुके थे। कल आखिरी सेशन के खेल में 180 रन बने थे 34 ओवर्स में। जी कल अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और वो थोड़ा खुला खेले, अपने 100 के बाद उन्होंने अपने आर्म्स खोले और शॉट्स खेली। अगर उनके स्ट्राइक रेट भी देखें तो 75 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत रन्स कर गए सेंट्रल पंजाब। यहाँ ये एक न्योता दे रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर आप दूर से शॉट खेलिए। और स्लिप को अगर इन्होंने खेल में
वाकई लाना है। 3 फील्डर इस वक्त खड़े किए हुए हैं कॉर्डन में। ये विकेट कीपर के साथ हम देख सकते हैं आबिद हैं और उनके साथ उसामा मौजूद हैं। लेकिन जो कवर के फील्डर हैं यासिर, आप नहीं समझते ये उनको भी ये हटा सकते हैं वहाँ से ताकि दावत दें बैट्समैन जाएं कवर ड्राइव करने के लिए। सरफराज अहमद जो है शौक से खेलते हैं जो ड्राइव शॉट है। बिल्कुल इसी की आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। और जो ये गैप है इसको फिल करना चाहिए, चाहे वो कवर से फील्डर आए या ये आपस में थोड़ा से आबिद अली को एक स्टेप राइट पे जाना चाहिए और जो सेकंड स्लिप है वो भी एक स्टेप राइट पे जाए तो ये गैप कवर हो सकता है। अगर ऑफ साइड की फील्ड देखें हम तो एक पॉइंट है, कवर है और मिड ऑफ है। हाँ जी, कवर का फील्डर उसमें जा सकता है बीच में और मिड ऑफ को ओपन छोड़ें या कवर को ओपन छोड़ें, उसको इनवाइट करें कि यार ये शॉट खेलें तो मे बी चांस हो सकता है। या अगर आप कवर को हटा लेते हैं वहाँ से तो जो मिड ऑफ के फील्डर हैं उनको आप चंद कदम वाइड भी कर सकते हैं उस एरिया को कवर करने के लिए। लेकिन इस वक्त एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। सरफराज अहमद को आमादा करना चाह रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर ये जाएं, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये खामोश रहने वाले खिलाड़ी हैं नहीं सरफराज अहमद। अभी भी काफ़ी बॉल्स खेल चुके हैं ये अपनी 18 रन्स के लिए, लेकिन वो अपने आप को पूरा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन वो अपनी शॉट्स के लिए ज़रूर जाएंगे। इस तारे का आपने बात की। अच्छी बॉलिंग मोहम्मद अली की, उसी लाइन पे परसिस्ट कर रहे हैं। एब्जॉर्बिंग क्रिकेट है और बहुत ही अच्छा सेशन हम कह सकते हैं खेल के एतबार से। इसमें रन्स भी बने हैं और बाज़ मराहल ऐसे आते हैं जहाँ पर एक इम्तहान से शुरू हो जाता है। ये दरअसल ये एक सब्र का इम्तहान होता है बॉलर और बैट्समैन दोनों का, कि इसमें पहले पलक कौन झपकता है। अपनी यकतरफा लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं, एक ही तरफ फील्डिंग रख के। मोहम्मद अली जो कप्तान ने उनको सौंपा है मंसूबा। वही लाइन फिर से इख्तियार की, सरफराज को रन नहीं मिलेगा। 226 पर 5। Crucial partnership between two seasoned campaigners. 42 of 78 deliveries. Quaid-e-Azam has reached his 50. Sarfraz feeling his way. 42 deliveries, so he must be thinking that he's in now, but we've seen this in this game many times that the batters get set and get out. This will be the worst time for Sindh to lose a wicket. Quaid-e-Azam, dogged and resilient as ever. He's not going to give it away. Welcome along, Ali Yunus. Thank you very much. The only thing that is certain is a nice cup of tea at this time and some lovely cricket. Wonderful. Nice cup of tea with sugar or without sugar? Absolutely with sugar. There is no tea without sugar. Any cakes to go with it? Always. You're telling me you were on diet, Ali Yunus? Gotta hit the gym. No. If you want to eat
The cakes and the sugar in tea, you got to hit the gym. I like your motivation these days, though. You've been hitting the gym quite regularly. But the ice cream you had last night. You know who to blame for that? Just you yourself. You could have only said no, like I did. No, just leave it at that, Ali. Just leave it at that. But it's very, very absorbing contest here. Muhammad Ali and Qasim Akram, the combination of pace and spin is really making it difficult for these two experienced campaigners. 226 for 5. Yeah, you got to give the credit to these two also. The senior member of Sindh side, they've stuck to the task. And look at this, the concentration level from both sides. Although he's stuck to his line, Muhammad Ali, but look at Sarfaraz's patience and concentration level. He's not touching it. He's letting it go. Good cricket both sides. Consistent from Muhammad Ali and brilliant from Sarfaraz Ahmed. It's just a case of who will blink first. Sarfaraz had a waft on the second delivery of the over, but then probably kicked himself and told himself he needs to concentrate harder. And for the rest of the over, he was up to the task. But the contest will resume. "22 overs remaining in the day's play." Yeah, that contest once again between Ali and Sarfaraz. Ali is persistent with that back of a length, 4th, 5th stump line. He's got a couple of slips, a gully, and ring of fielders on the offside. I think he's setting him up for the drive me delivery. His bowling got short of the length at the moment, but I'm pretty sure that this is a setup against Sarfaraz. He's too experienced for that though. There's 2 slips, a gully, there's no cover. So he wants him to dive. So you won't be surprised that he gets that over pitch delivery. That's fuller. The length was up there. The line a little bit wide. Sarfaraz wasn't tempted. But you can see what Ali's trying to do. I'm just trying to have a cup of tea. Oh, you meant the other Ali. I meant Muhammad Ali. Hard work for him. I'm sure he will appreciate a cuppa and put his feet up in just about 55 minutes time. The schedule close is at 5, but we will have to do some overtime because, like I said, 21 overs remain in the day's play. Now they move that cover fielder close in catching within 15 yards of the batter. Skipping away Sarfaraz, trying to cut down on the length. But it's a good in and out field. They want to protect runs as well and attacking at the same time. Yeah, they're making it hard for these Sindh batters. You want to get runs? Do something out of the box. Do something unusual because you're not getting those freebies. Look at that Sarfaraz movement. That is because that length has been so perfect. They're not giving away those runs deliveries. So you got to make something out of it. You've got to do something different to get runs. And that will create the opportunity. Yes, and then the right-hand, left-hand combination. Ali was persisting with around the wicket. Uh-oh. Some of the players need that, don't they? Gentle head massage. 2 slips in a gully. Right arm over the wicket now. That short pitch ball hasn't had as much venom as I would have expected of Muhammad Ali, having seen him last year. Probably that fact that the pace is coming out of that wicket. It's getting slower and slower. It will become even more hard work for the bowlers. Yeah, the last scene that we saw from the Sindh camp, the manager, Sohail Naqvi Saab, is just massaging the Imtiaz Khan, who's the physio of the team,
Tells you the story that how jailed in this side is. Even the manager doesn't care. Being a masseuse for a day. Wonderful. Excellent from Ali. Sarfraz wants to run. Wow, nobody was alert to the situation. Sarfraz almost came down with the handshaking distance from Fawad before he set off. But Muhammad Ali, a wholehearted cricketer, he's giving it his all. Look at Fawad is thinking, what might have been? It was Sarfraz's call. Look at that. He just realizes that there is an opportunity. Fawad Alam was just lost everywhere. He was in the park. He didn't even know where the ball is, but he trusted the call of Sarfraz, backed him, and completed the run. That's smart cricket from Sarfraz. And Fawad, you rightly said, he trusted Sarfraz's call because he didn't know where the ball was. And if there was any hesitation, I think it would have been curtains. And that's good understanding between the two senior men. Wow, that had more venom in it, and it almost hit the helmet behind Ali Shan. That's been given as wide. But we'll see, it nearly fell on top of the helmet. Very lucky. One of the over though. Sharp one, just bending his back. Oh, lucky. You see how after it ricochets of Ali Shan's glove, slightly away from the helmet. From that front angle, it looked like it was close, but it not that close. But good quick bouncer. Pushing Fawad back in the crease. .230 for 5. It's been a good spell by Muhammad Ali. Fiery spell. Consistent spell. Ball is 5 overs. I wonder if he's going to bowl one more. Because he's just got this Sarfraz on this back foot a little. With his consistency in his line and length. Still trailing by 198 runs. Two of the senior members on crease. Fawad Alam and Sarfraz Ahmed, 59 and 20 respectively. Saim Ayub scored brilliant 71, but he was not really supported up the order. Saud Shakil flopped, Umar bin Yusuf also. Saad Khan, a lot is expected, but these 30s won't help him. Got to go big, he got to score big runs. It's 230 for 5. That's a favorite sweep shot of Sarfraz's. He hasn't got any of the middle of the bat today. But he won't stop trying. You know that. He'll do that all day long. Just knocks the ball into the gap. Slightly rushed by Tayyib Tahir. Be careful against Tayyib Tahir. He's got a very strong arm. And very accurate arm too. You got to be very careful when running with some ease against him. It's been a remarkable partnership. 47 at the moment. Have a look at this. He's just jogging his way to that non-striker end. But Tayyib Tahir, he's very clever, very shrewd. Look at this. See this? Very strong. That's clever. That's very smart. Because he pretended that he wasn't in a hurry. And even when the ball got into his hand, he was just showing it that he's taking it easy. And all of a sudden, fires in the return. Almost caught Sarfraz off guard. Slightly round armish there from Qasim Akram. Just trying to slide the ball into the left-hander. There you go. Wide of the crease and that low arm. Yeah, anything to break the concentration. All those tricks
all those strategies coming into play, because this is a very solid partnership by these two. So they got to try something different to lose that and break that concentration. 13,000 first-class runs. Quaid-e-Azam has seen everything. No, Ali. 231 for 5. Yeah, but I replied on mic. Because Next time I'm going to ask you on the mic, no? I was going to reply with something else too. Why are you doing this to me? Why are you being so rude? अच्छा वो उसका ज़ाया होता है वाइप्स इतने बड़े-बड़े. That's a good idea. वैसे मैं भी ज़ाया करने लगा. Quite a long spell for Muhammad Ali into his 6th over. I know it's cooled down a little bit. The breeze has picked up as well. Quite pleasant out there compared to the hot afternoon in the middle session. Such a workhorse he is. Remember the last time we were witnessing the game at State Bank Ground in Karachi, and he was given the opportunity, and I would just ball all day long. He's that sort of a guy. 2 slips, 2 gullies. Tempting Sarfraz. He's got Sarfraz going a little bit. Sarfraz walking at him. But that wide delivery, Sarfraz's patience is giving up. That's a good competition, I tell you. They've got that field set for that length delivery, 2 gullies in place. He wants to play that shot. He's playing around with Sarfraz's mind. And he's succeeding because Sarfraz is doing something different. He's using his feet, although we just not many overs to this day. I would want him to go not out and come back fresh again tomorrow morning. Interesting field. A regulation gully, a slight deep gully. The point that I made earlier about Sarfraz, as we'll have a look at the field that he's been set, at this stage of his career, the skill doesn't disappear. It's just the mental strength. The ability to fight different and difficult situation does give up on you at times. He's been there fighting for 50 deliveries as we have a look at the field. 2 slips, a regulation gully, a deep gully, and then a deep cover. And the regulation point. They're really tinkering and asking Sarfraz, just playing on his mind. I agree. There was nothing to argue. It's you. That's too wide. Do you agree with that? I always agree to whatever you say, my friend. You got this That's beautiful not eye true. on cricket. Yeah, just a couple of things, no. Remaining, yes, I do, as far as cricket is concerned. But yes, this is a good competition. I think this is quality bowling with some venom, playing consistently at 1 line and length and being well negotiated by Sarfraz and Farhan Nisar. It's been a long day, Ali. Just spare someone. You're at everybody's case. I'm so fresh. I just love this game of cricket, especially this format. The red ball format. It's such a beautiful format, I tell you. It just brings out the best in you, even the commentators also. Just brings out the best in us. Especially look at Sarfraz, the way he's struggling. Abid Ali also is making a comeback. So it's just beautiful. Nothing more to say about this format. It's a real red ball romance. The white kit, the red ball, the white side screens, you know, the traditional format of cricket. And they're playing on the mind of Sarfraz. They just really preying on his patience. And like I said, it's just a matter of time. Who will blink first? Sarfraz is not prepared to give it up. He's really fighting hard. Yeah, so he shouldn't. Because now he's coming into that role of mentorship for the youngsters. So you got to develop those habits of not giving up. He normally never does, but especially in a situation like this, when the bowling has been excellent, consistent, there are different plans going on for you. So you got to bring out your A game. And for somebody like Umair bin Yusuf, Saim Ayub, Saad Khan, all these youngsters coming in,
for Sindh side. I think this is where it matters to them. Sarfaraz Ahmed, fighting spirit. Excellent. Couldn't pierce the gap. Another maiden. 231 for 5. Combination of pace and spin. It's very hard to keep Ali Yunus quiet late in the day. What's wrong with you, Ali? Just loving this game. Loving the competitiveness. The game you and me are playing in the commentary box. Just trying to make sure that you don't eat much. It's a huge effort. It's a good run. You don't like it. I'm not going to talk to you about it. Tell you something, Ali. You know everyone. The nicest of fellows in this commentary box is Farhan Nisar. And you take every opportunity to annoy him. Can't understand that. Cannot understand that. Well, I know he's bored. He's just sitting there doing nothing. So you got to poke him every now and then just to see that if he's active. Just kidding. Oh, there's a chance. Oh, there's a chance. Had he collected it early. Went to Tayyip Tahir. Is one of the best fielders in our domestic circuit. Have a look at that. Just he played and run. Good cricket. He's quite deep. Excellent judge of a run is Sarfaraz and Fawad. This time to the left of the fielder, but the call was wait. Yeah, let's talk about Farhan Nisar. 3 in 1. He's our statistician. He's our fellow commentator. He's always have something to say. He's got an opinion about cricket, very good one. And no, I was kidding. He's always at work. That's the sweep shot once again. Just one more thing add to Farhan Nisar's glorious career, that he was at Pakistan Junior League draft also. It doesn't mean that he's retiring. I'm not putting it that way. It was a farewell tribute to him. He's a good man. 235 for 5. I saw the same bird yesterday. Same. In search of food. Good camera work. Good direction also. Excellent. A bit of delay in the middle as batters are having a drink. Umpire Afridi making sure that they're on time. Sindh trailing by 193 runs. Still a long way to go. They just want to go back hotels.
to their beds. Look at the faces. They've been in the field for almost more than half of the day, taken 5 wickets, 235 for 5. Much awaited break. Over rate hasn't been as good as yesterday, I have to say. These unnecessary hold-ups at times. That's Khurram Manzoor. He was the first one to go. Got fuller length. And again, good plan from Amir Yamin and good execution. And again, Umair and Saud. And this time, plumb in front. Just turned him around. Saud didn't like the decision. And that was a good catch. You may say it was lucky, but he was watching that ball at all times. And that was a bit of a soft dismissal. Yeah, if you look at all these dismissals, Shah Faisal, all have been gifted to the central batters, to the central bowlers rather. There was no real threat from the bowling side. There were some ordinary shots, some unlucky decision. That catch that took the wicket of Saim Ayub. So it's really not good cricket from Sindh side. They just thrown their wickets away, most of the batters. Some lazy shots also in that. 43 runs away from that follow-on mark. That is an extraordinarily long spell for Muhammad Ali into his 7th over. To ask your quickest bowler to run in for that long, bit surprising? Not at all, because I know this boy, Muhammad Ali. He's a very, very energetic, very brave boy, very solid also. Very athletic. He will run in all day long, bowl those long spells. Somebody like Taj Wali, he always reminds me of him, who can bowl from one end from all day long. He's that sort of a bowler, that go-to bowler. I'm just throwing this to you, Ali. I just random thought. End of the day, the batters have been concentrating very hard, some tired minds there. Would it be a good idea for Mohammad Saad to come on and bowl for a few overs and lure those batters into a sense of comfort? Yes, definitely yes. This can happen. It's a good point, just to break that concentration, because at the moment they're very high in concentration, both of these batters. And we've seen so many times these part-time bowlers coming in, getting the wickets. So yes, Shah Faisal, they can. I know there's plenty more overs left, but we may just have about 33 or 34 minutes of play left. A good 3-4 over spell just to try and break this partnership. He's very energetic, Richard Stonier. He's lapping around the ground at tea time. How many you counted? 6 rounds of the stadium. Amazing. It must be something for us to be motivated of. Especially you. For you, you mean? Stay away from this topic, Ali, at least for today now. Again, firm drive, straight to the fielder. That run rate has dropped. This partnership of 51 of 112 deliveries. At one stage, Sindh was scoring at 4.5 runs per over. They're barely at 4 now. But still, it's good. We see this change in the approach. Central Punjab batted with same intent. So our Sindh side. When was the last time in a first-class game both teams played over the run rate of 4? I think that is the change that we are looking for. That is the positivity that we are looking for. Clipped. There is no one there. This will run away for 4. That is an easy boundary. So now probably Muhammad Ali tiring a little bit. Just line and length going wrong. 7-2 field, so 2 straight wide of the crease, creating that angle. And Sarfraz just neatly clipped it away. The roll of the wrist.
Ali Shan had to give the chase. Wrong line. Ali probably is tiring. I won't blame him. Waiting is the call from Sarfraz. 2:39 for 5. The workload was shared up until tea, but look at that after tea. Muhammad Ali, 16 overs. He's ran in, pulled his heart out. Nothing to show for it though. But he'll be a skipper's delight. Anytime you want someone to run in for you for an hour, that's the man. Throw it to Muhammad Ali. His favorite place. Chance? Waqas Maqsood too slow. Again, good game awareness. Quaid-e-Azam quickly realizing that it's towards the left of Waqas Maqsood. A little far, there was single available, and he took it. Good cricket. Wow. Almost sneaked through. Sarfraz was aware. Just kicked the ball away at the last minute. There you go. It was heading to the stumps. No, don't use your hands. Oh, did it hit the stump? Good footwork. And once again, more good footwork from Sarfraz. Bringing out that favorite sweep shot of his. Little bit of drama in this over. Yeah, something is happening. One question, Ali. Last night, similar stage. Abdullah Shafiq was batting. He was set. And the bowlers were tied. And he really attacked and scored very, very quickly in the last half an hour. Do you think Sindh can do that? Because the bowlers are tired. They're just going through the motions. Well, I doubt that. The first thing that they would be looking to do is just go not out. That's all they want to do because they've lost 5 wickets. They're 186 runs behind. Maybe if they were close to that total of Central, we might have seen it. But now the first things first, you need to get over that follow-on runs and then get closer to that Central Punjab's first inning. You're talking about that last session, last night. 180 runs came in just 34 overs at 5.29, and Abdullah Shafiq and Amir Amin was at the forefront of that. But you're right, Sindh is playing it safe. It's more important for them to keep their wickets in hand for tomorrow morning. Driven. Sweepers back there. Just a single to finish off the over. 2:44 for 5. एक 84 रन्स अभी भी दोनों टीमों के दरमियान फ़र्क है. सिंध की टीम उसको ख़त्म करने के लिए कोशां है. फवाद आलम और सरफराज अहमद बड़े एतमाद के साथ बैटिंग कर रहे हैं और बड़ा जिम्मेदाराना खेल इन दो सीनियर खिलाड़ियों ने पेश किया है सिंध के लिए. क्योंकि एक मौके पर लगता था जब 184 पर 5वीं विकेट गिर गई थी कि कहीं फॉलो ऑन ना हो जाए टीम को.
लेकिन फवाद ने अपनी साख जो है उसका भरम एक बार फिर रखा। ड्रेसिंग रूम इसलिए पुरसुकून है, इस सुख का सांस ले सकते हैं इनके कोचेज़ और जो बाकी मादा खिलाड़ी हैं। अभी आज 15 ओवर्स का खेल बाकी है आज के दिन में, लेकिन क्योंकि 5:30 बजे के बाद ये खेल जारी नहीं रह सकेगा, इसलिए आज पूरे ओवर करना मुश्किल होगा। वकास मकसूद को भी लाया गया है बॉलिंग में, और कमेंट्री बॉक्स में अयाज आए। जी बिल्कुल, आखिरी सेशन में आजमाना चाह रहे हैं तमाम बॉलर्स को और जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं मोहम्मद साद कि कहीं ये अहम विकेट उनको मिल जाए, क्योंकि आखिरी जोड़ी क्रीज पर मौजूद है सिंध की। दो जानदार बल्लेबाज इस वक्त विकेट पर मौजूद, सरफराज अहमद, फवाद आलम का साथ देते हुए दोनों मंझे हुए बल्लेबाज इस वक्त सिंध की आखिरी उम्मीद। वकास मकसूद ने 2 स्पेल किए थे, 4-4 ओवर्स पर मुहित थे, क्योंकि ये अब उम्र के उस हिस्से में हैं जहां बहुत लंबे स्पेल आप नहीं करा सकेंगे वकास मकसूद से, और शायद पूरे मैचेस जो हैं वो भी आप नहीं इनको खिला सकेंगे। वक्फे वक्फे से इनको इस सीज़न में इस्तेमाल करना होगा। ये इस मैच के कप्तान है मोहम्मद साद। अगले मैच में उम्मीद यही है कि अजहर अली वापस आएंगे, बागडोर सेंट्रल पंजाब की उनके हाथ में चली जाएगी। मिस फील्डिंग, कासिम अकरम आज दिन भर रन रोकते रहे, लेकिन इस बार मुश्किल गेंदें इन्होंने रोकी, लेकिन ये आसान गेंद थी जो गंवा बैठे। कासिम अकरम जैसे फील्डर से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती। काफी मुश्किल बॉल आज उन्होंने रोके हैं, लेकिन एक आसान बॉल उनके हाथ से निकल गया। वक्कास मकसूद फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं सरफराज के लिए। शॉर्ट मिड विकेट, स्लिप निकाल ली है। ये अब्दुल्ला शफीक जो हैं ये आ गए थे पहले स्लिप में, और अब वो कवर में चले गए हैं। स्लिप में इस वक्त रह गए हैं तैयब ताहिरी। एक पहली स्लिप है, उसके बाद एक फील्डर जो हैं ये खड़े हुए हैं इस वक्त, या हम कह सकते हैं कि तीसरी स्लिप है, लेकिन इन दो स्लिपर्स के दरमियान खासा बड़ा गैप मौजूद है। उसामा और विकेट कीपर के साथ खड़े हुए तैयब ताहिर में। विकेट आज ही जो है कल की तरह ही खेली। आप समझते हैं आज बैटिंग निस्बतन आसान थी इस पिच पर। आज के दिन में 9 विकेटें गिरी, कल पहले दिन 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। आज कितने बेहतर बॉलिंग कराई सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स ने, बल्ले के पास बॉल कराई और कोशिश की कि बैट्समैन उनको चेज करे, और ज्यादा बॉलें बल्ले पे लगी आज, इस वजह से विकेटें ज्यादा हासिल करने में कामयाब रहे। सरफराज अहमद पूरी तरह जम चुके हैं इस विकेट पर, और उन्हें अंदाज़ा है सूरत हाल की नज़ाकत का भी, क्योंकि अगर ये दोनों बिछड़ जाते, सरफराज और फवाद में से एक भी खिलाड़ी आउट हो जाता, तो फिर सिंध को खासी मुश्किल हो जानी थी। या हुनैन शाह, ये दिल के किसी न किसी गोशे में साद को इनकी कमी महसूस हो रही होगी। बेहतर होता इनको खिला लिया जाता एक तेज बॉलर को। 245 पर 5।
साइम अयूब अभी तक टॉप स्कोरर हैं, 71 रन्स उनने बनाए। बड़े ही खूबसूरत इनिंग्स थी, पुरकशिश। फवाद आलम ने उसके बाद अपना अंदाज से रन्स बनाए हैं, 64 रन्स उनका साथ दिया है सरफराज अहमद ने। टीम के दो जो हैं सरकर्दा खिलाड़ी मैदान में मौजूद हैं। फवाद आलम, उनकी टीम जो थी मौजों के थपेड़ों में थी जिस वक्त ये खेलने के लिए आए थे। फवाद आलम ने फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों का जमकर डटकर मुकाबला किया इस पिंडी की ऐसी पिच पर जहां बॉलर्स के लिए मदद है आज भी। लेकिन सिंध की टीम को हमेशा की तरह आज भी सहारा दिया है उनके सबसे माने हुए खिलाड़ी ने। 64 रन पर, शानदार 64 रन पर 13,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं 104 बॉलें खेलकर। फवाद आलम सबसे शानदार बल्लेबाज सिंध की साइड के। इस मैदान से ये पूरी तरह वाकिफ हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इनकी एक डबल सेंचुरी भी है। या 2014 के सीजन में इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी। और ये बार बार जिस तरह झटक रहे हैं अपने बाएं हाथ को, इनकी कलाई में कुछ देर पहले ऐसा महसूस हुआ था कि शायद झटका आया है, इसलिए थोड़ा गैर यकीनी सी सूरत हाल है, कुछ बेचैन लग रहे हैं इस वक्त फवाद। और ये बैट किया है, क्योंकि शॉट ऑफर नहीं किया था इसलिए अपील की गई। अलबत्ता अंपायर इमरान जावेद का ख्याल है कि गेंद नहीं लगती विकेट को। आज के दिन का पहला बॉल है जो बैट किया फवाद आलम ने। हाँ, ये खतरनाक साबित हो सकता है कैसे बॉलर के खिलाफ जो ज्यादा स्पिन गेंद को ना करता हो। एक और आम बॉल, इस बार भी लेंथ की परवाह किए बगैर कट करने चले गए, क्योंकि जब आप शॉट ऑफर नहीं करते तो उसके बाद जो इम्पैक्ट है वो खा ऑफ स्टंप के बाहर हो या स्टंप्स के सामने हो, वो फिर जो है उससे सरोकार नहीं रहता अंपायर को। गेंद अगर विकेटों को हिट कर रही हो तो अंपायर आपको आउट दे देगा वहां। जी बिल्कुल, दो काफी मुश्किल बॉल थे, पिछले कदमों पर खेले। फवाद आलम पिछला बॉल कट करना चाह रहे थे और दोनों अंपायर्स जो हैं ये अच्छा मैच रहा है अंपायर आफरीदी के लिए भी और इमरान जावेद के लिए भी, क्योंकि अगर अंपायर्स जो हैं वो अननोटिस जा रहे हैं तो उसका यही मतलब लिया जाता है कि अच्छी हो रही है अंपायरिंग। 245 पर 5। मौसम कोई भी हो, ये पोठोहार की ज़मीन पे बहार ही आपको नज़र आती है। हर मौसम यहाँ ये बहार का ही होता है जब आप नीचे देखते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ की ज़मीन पे जिस तरह का सब्ज़ा और खिले हुए फूल दिखाई देते हैं जा बजा। ये बड़ा दिलकश नज़ारा पेश करती है। पाकिस्तान की बेहतरीन आउटफील्ड में से एक है। पाकिस्तान में आपको सबसे खूबसूरत मैदान कौन सा लगता है अयाज साहब? आजकल तो मुजफ्फराबाद का लगता है, लेकिन वैसे ज़्यादातर KRL का ग्राउंड भी काफ़ी खूबसूरत है। इस्लामाबाद के 2-3 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनका जो बैकग्राउंड काफ़ी दिलकश है, लेकिन आजकल ज़्यादा अट्रैक्ट एक गवादर का ग्राउंड कर रहा है और एक मुजफ्फराबाद कश्मीर का।
विकेट कीपर नहीं संभाल सके, इससे अंपायर का इशारा देखना होगा। यह बल्ले को छुए बगैर गई थी। अली शान की जानिब थकावट लग रही है, जिस तरह कासिम अकरम ने पिछले ओवर में गेंद छोड़ी, अब विकेट कीपर भी वहां तक नहीं पहुंच सके, बॉलर की भी वैसी रफ्तार नहीं रही, और आज ओवर रेट का मसला भी दरपेश है। किसी भी वक्त सेंटर पंजाब ने दोनों एंड से स्पिनर्स का इस्तेमाल नहीं किया। और पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे कप्तान हैं जिनको जो है वो एक स्पिनर के खिलाफ या एक एंड से स्पिनर पे ही कप्तानी करने में वो कंफर्टेबल रहते हूँ। मिस फील्डिंग हुई। ये हम आपको बता रहे थे कि ज्यों-ज्यों ये साए लंबे होने लगे हैं तो वो आसार नज़र आ रहे हैं फील्डर्स पर। आमिर यामीन ने आज पहले बैटिंग की, उसके बाद 3 स्पेल वो बॉलिंग करते रहे। ये दोनों फील्डर्स से मिस फील्डिंग हुई। जल्दी पकड़ना चाह रहे थे आमिर, बॉल के ऊपर से निगाह हटा ली उन्होंने और बॉल उनको क्रॉस कर गया। इससे पहले कासिम से बॉल मिस हुआ। थकावट के आसार चेहरे पर। विकेटें गिरी हैं सिंध की, लेकिन रन्स भी बनते रहे। 63 ओवर्स में तो अपने 250 रन्स के पास पहुंचे हुए हैं। 3.96 के औसत से इस मैच में अच्छी औसत पर रन्स बने। ये अंपायर जो हैं क्या ये बावर कराना चाह रहे थे विकेट के ऊपर दौड़ने से मुतालिक? ये बेहतर फील्डिंग। साद फ्रंट से खुद को दिखाना चाहते हैं कि वो टीम के लीडर हैं। कप्तान को ऐसा ही करना भी चाहिए, मिसाल बनना चाहिए दूसरों के लिए। 250 पे 5। अच्छा शॉट था सरफराज का। कासिम अकरम को स्वीप खेला, कदरे दूर से खेले सरफराज, लेकिन इनका फेवरेट शॉट है, कहीं से भी स्वीप खेल सकते हैं सरफराज अहमद। बात करते हुए कासिम से। तो कासिम अकरम एक अपनी आखिरी आज कोशिश करने के लिए आए हैं। आज अच्छा हाथ बढ़ाया है इन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स का। देखिए इस बार मजबूर किया कि ये दूर से खेलें क्योंकि डिप मौजूद थी और हमेशा ये धोखाधड़ी होती है बैट्समैन के लिए। बैट्समैन को लगता है गेंद आपके करीब पहुंच रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं। यही अच्छे स्पिनर की खासियत होती है। अच्छी दौड़ भी लगाई। दोनों खिलाड़ियों ने उसामा को पिक कर लिया था, ज्यादा फुर्तीले नहीं है और थोड़ा सा सुस्ती से भी आए उसामा। इसका भरपूर फायदा उठाया सरफराज अहमद और फवाद आलम ने। आंखों ही आंखों में तय कर लिया था कि रन हो जाएगा। आगे जो मंजरनामा है ये अगले दिनों का
ये अच्छा शॉट खेला, बड़ा आला फुटवर्क, फैसला कुन फुटवर्क सरफराज अहमद का, और उस पर सही नतीजा भी उन्हें मिला। विद द स्पिन खेलकर चौका पाया पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन ने। कदमों का इस्तेमाल किया, शानदार कदमों का इस्तेमाल किया। मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान से उठा के खेले सरफराज अहमद। थोड़े से अग्रेसिव नजर आए इस ओवर में सरफराज। इससे पहले स्वीप पर कोशिश की और इस बार मिड विकेट के दरमियान से कामयाब रहे। ये स्वीप फाइन खेल दिया है। यहाँ पर मुश्किल होगी थके हुए वकास मकसूद को झुकने में और पहुंचने में। बैक टू बैक 2 चौके लगाए सरफराज अहमद ने। वो जानते हैं कि थकावट का फायदा उन्हें उठाना चाहिए। बॉलर ऑफलाइन थे और फील्डर जो हैं वो भी सही तरह चेज नहीं कर सके। ये तरने वाला होती है गेंद हमेशा से। सरफराज अहमद, ये उनका सिग्नेचर शॉट है। 260 5 विकेट पे। इयन फिशर उम्दा कट शॉट स्वीपर की जानिब। इयन फिशर जो हैं ये यॉर्कशायर काउंटी में इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। एक ज़माने में जब माइकल वॉन यॉर्कशायर के कप्तान थे और वहाँ पर डैरन गॉफ होते थे फास्ट बॉलर। वो अच्छी टीम थी यॉर्कशायर की। सचिन तेंदुलकर भी उस ज़माने में यॉर्कशायर के लिए खेलते रहे काउंटी क्रिकेट। पहले एशियन थे जिन्होंने यॉर्कशायर की नुमाइंदगी की। ये अच्छा रोक दिखाया। विकेट कीपर हैं अली शान। एक ज़माने में एशियन जो हैं उनका खेलना तकरीबन नामुमकिन होता था यॉर्कशायर से, लेकिन सचिन के बाद वो दरवाजे खुले। अब अगले बरस पाकिस्तान के शान मसूद भी यॉर्कशायर की नुमाइंदगी करेंगे। उससे पहले यूनुस खान कुछ अरसे के लिए खेले थे। नॉर्थ की सबसे मशहूर काउंटी है। नो बॉल। इस बारे में आपका क्या कहना है अयाज? क्या मुमकिन वजह हो सकती है इतनी ज़्यादा नो बॉल करने की? और वो इस वजह से भी कि ये बहुत तेज़ बॉलर्स नहीं हैं। सेंट्रल पंजाब के पास मीडियम पेसर्स हैं, ज़्यादा स्विंगर्स हैं। तेज़ बॉलर्स हूँ तो किसी हद तक बात काबिल फ़हम होती है कि नो बॉल्स हो रही। इस कमी पे काबू पाना होगा। तेज कराने के चक्कर में काफी नो बॉल्स कराई आज सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स ने। सरफराज अहमद ने तेज रन लिया, दबाव में लिया। मोहम्मद साथ थे। पिछले ओवर में उन्होंने जरूर अच्छी फील्डिंग की थी, लेकिन यहाँ सरफराज ने उन्हें दबाव में लिया और फौरन ही भागना शुरू कर दिया। स्ट्रोक के साथ ही एक कदम पहले आगे निकल चुके थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। पहली कॉल पर ही निकल आए थे फवाद आलम। साल से जो पाकिस्तान के विकेट कीपर्स का विकेटों के दरमियान दौड़ने का जो तरीकाकार था वो भी एक ही तरह से रहा है। मोइन खान बहुत तेज़ दौड़ लगाते थे, फील्डर्स को परेशान किए रखते थे,
थकाना झकाना फील्डर्स को। अभी मोहम्मद रिजवान जो हैं उनसे फील्डर्स बहुत परेशान रहते हैं, दायरे के फील्डर और बाउंड्री राइडर्स भी। वो 1.5 को 2 में कन्वर्ट करते हैं। मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ खेलकर तो रन बनाने से उन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चला है। बिल्कुल वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान इस वक्त, और अपनी फिटनेस की वजह से बहुत ज़बरदस्त शॉट्स खेलने में भी कामयाब होते हैं, और सिंगल को 2 में और 2 को 3 में बदल देने की महारत भी रखते हैं मोहम्मद रिजवान। अच्छा मैच रहा। सरफराज अहमद ने स्टंप्स के पीछे अच्छे कैचेस लिए, दोनों जानिब डाइव करके फिर रन आउट किया। 4 कैचेस लिए थे। अली शान को उन्होंने रन आउट किया और अब अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। 41 रन पर नाकाबिल शिकस्त, 263 पे 5। खुरम मंजूर साद का शिकार हुए। प्लान किया था साद ने खुरम मंजूर के लिए आज के सबसे कामयाब बल्लेबाज साइम अयूब, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में आज का पहले मैच में 71 रन स्कोर किए, और उसके बाद फवाद आलम, सऊद शकील जल्दी लौट गए, उमैर बिन यूसुफ भी जल्दी लौट गए। सरफराज अहमद और फवाद आलम की जोड़ी इस वक्त क्रीज पर मौजूद। आमिर यामीन आए हैं। सेंट्रल पंजाब की सोच यही होगी कि आज खेल खत्म होने से पहले अगर एक विकेट उनको मिल जाती है तो कल पहले घंटे के बाद नई गेंद मिल जाएगी और फिर उस पर टेल का काम तमाम करना निस्बतन आसान होगा। अभी इस मैच में आपको जो मंजरनामा है, कल का मंजरनामा मुमकिन वो क्या हो सकता है अयाज? कोशिश करेंगे आज फवाद आलम या सरफराज अहमद में से किसी को पवेलियन की राह दिखाई जाए और कल सुबह टेल को वापस भेजकर जल्दी इनिंग का खात्मा किया जाए सिंध की। लेकिन आखिरी जोड़ी मंझी हुई क्रीज पर मौजूद सिंध की, सरफराज अहमद और फवाद आलम की सूरत में एक स्पिनर की कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई है सेंट्रल पंजाब में। आबिद अली और सरफराज अहमद के दरमियान तबादला ख्याल हो रहा है। फील्डर को फवाद के करीब लाया गया है। इस वक्त फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर थोड़ा सा डीप है। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग के एतबार से ये जो फील्डर वहां पर ला खड़े किए हैं। अच्छी बॉल थी ये, आमिर यामीन के अंदर आई थोड़ी सी, जहां पे फील्डर लिया वहीं पे बॉल किया आमिर यामीन ने। एक बहुत ही लंबा दिन आज क्रिकेट में। ये देखिए दोनों जानिब सामने फील्डर हैं। यहाँ पर ड्राइव कराने की कोशिश होगी। स्लिप में भी 2 फील्डर्स हैं इसी गरज से। अक्सर देखा गया कि जब ये जो फील्डर हैं शॉर्ट कवर पर फील्डर लिया जाता है बैट्समैन की आई लाइन में और ऑन साइड में भी, तो
बैट्समैन के जो हाथ हैं ये दूर चले जाते हैं गेंद की यानी। और ये फील्डर तवज्जो हटाने के लिए लिए हैं मोहम्मद साद और आमिर यामीन ने, थोड़ी सी गली को भी ऊपर किया है। आखिरी सेशन में चाह रहे हैं कोई कामयाबी मिल जाए उनको। इस बार हवा में खेला लेकिन फील्डर बिल्कुल भी आसपास नहीं थे। 4 रन फवाद आलम ने और हासिल किए। ये इलाका उनके लिए दिन भर बारावर रहा। अच्छा कट शॉट था। फील्डर जैसे कि ऊपर थे, उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की, थोड़ा सा उठा के खेले। फील्डर के थोड़ा सा दूर से बॉल गई, खतरनाक हो सकता था लेकिन महफूज रहे इस बार फवाद आलम। लेग साइड में टर्न करके 2 रन मजीद बनाएंगे फवाद आलम। इस ओवर में फवाद और सरफराज अहमद ने 7 रन सिंध के लिए बनाए। 268, 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है और अंपायर ने खेल खत्म करने का फैसला कर लिया है। बेल्स को हटा लिया गया और यहाँ पर लाइट मीटर भी मंगवा लिया गया था और वक्त भी हो चला था। जो इजाफी निस्फ घंटा था वो मुकर्रर वक्त पर 5:30 बजे अंपायर्स जो हैं, कल भी इसी वक्त खेल को ख़त्म किया गया था। तो सिंध ने अच्छा फाइट बैक किया है फवाद और सरफराज अहमद के ज़रिए। सेंट्रल पंजाब की टीम को 66 ओवर्स की मेहनत में 5 विकेटें मिली और इस आखिरी सेशन में सिंध की टीम खेल पर छाई रही। 125 रन उनने बनाए, सिर्फ एक नुकसान उठाना पड़ा जब साद खान वापस गए। पहले 2 सेशंस में बॉलर्स जो हैं उनका पलड़ा भारी रहा था। 8 विकेटें गिरी थी दोपहर तक। सेंट्रल पंजाब की निस्बत जो है इस वक्त सिंध ज़्यादा मुतमईन टीम लग रही है। उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं साइम अयूब के बाद फवाद आलम और सरफराज अहमद। काफ़ी मुजम्मत की उन्होंने और अपनी टीम को सहारा दिया। अभी तक क्रीज पर मौजूद जो उम्मीद कर रही थी सिंध की टीम, सरफराज अहमद और फवाद के तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने उसमें शानदार किरदार अदा किया और अपने फ़राइज़ बाखूबी सर अंजाम दिए। 9 ओवर्स का खेल आज के दिन में ज़ाया हुआ है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो इस 4 रोज़ा मैच में आधा सफ़र हमने तय कर लिया। 2 दिन में 15 विकेटें गिरी और कल के दिन 358 रन बने थे। आज जो हैं ज़्यादा विकेटें गिरी और 270 रन आज सिंध की टीम ने बनाए। उससे पहले सेंट्रल पंजाब की टीम 400 से आगे निकलने में कामयाब हुई। साइम अयूब ने आज बड़ी डट कर बैटिंग की। 71 रन उनने स्कोर किए। फवाद आलम 75 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं। आमिर यामीन ने 2 विकेटें हासिल की। एक खिलाड़ी को कासिम अकरम और उसामा मीर ने आउट किया। मोहम्मद साद ने भी बड़ी नपीतुली बॉलिंग की और एक अच्छा कैच लिया साइम अयूब का। सिली पर शानदार बारी। आज साइम अयूब की आज़ादाना शॉट्स खेले उन्होंने। इनकी यही खूबी है कि ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं, अपने शॉट्स रोकते नहीं है। बैक फुट पर स्वीप उन्होंने शानदार खेली। बैक फुट पे हट के कवर के दरमियान से बहुत ही शानदार बारी साइम अयूब की डेब्यू मैच में। और निहायत ही शानदार पुल शॉट ये फवाद आलम का। कदमों का इस्तेमाल सरफराज का और ये उसामा मीर को पीछे से हटकर कट किया। कवर के दरमियान से खेले और ये फाइन लेग पर शानदार शॉट सरफराज का। और ये कदमों का इस्तेमाल निहायत ही शानदार। आखिरी सेशन में थोड़ा सा अग्रेसिव भी नजर आए, जारहाना नजर आए। सरफराज की कोशिश थी कि आखिरी सेशन में थोड़े से रन्स बटोरे जाएं।
यहाँ तो अच्छे खासे रन्स उन्होंने बटोरे इस आखिरी सेशन में। 125, सेंट्रल पंजाब ने 428 रन्स स्कोर किए और बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा किया। 232 रन्स की यादगार बारी अब्दुल्ला शफीक ने यहाँ पर ली और आमिर यामीन ने 70 रन्स बनाए। मीर हमजा और आसिफ महमूद जो 2 पेस बॉलर हैं उन्होंने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में सिंध ने साइम अयूब और फवाद आलम की निस्फ सेंचुरी की बदौलत 270 रन बना लिए हैं। अभी भी 158 रन के खसारे का सिंध को सामना है और मैच बेहद दिलचस्प सूरत में सामने आया है। तो 2 दिन तमाम हुए, कल तीसरे दिन के खेल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तारिक सईद को पूरी कमेंट्री टीम के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज और शब खैर।